Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Abdul Latif will going to inaugurate this cricket tournament by cutting a ribbon, and two teams gathering either side of the wicket for this inaugural ceremony. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ದುಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಇವರು ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಟ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೀಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆದಂಥ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ DPL ಸೀಸನ್ 3. After the successful 2 seasons organized here in UCG Cricket Ground, and all the friends of Dubai Market are now into the 3rd season, and day and night cricket tournament will be organized here in this historical UCG Cricket Ground, Urva Cricket Ground.
So Dubai Market Friends Club Mangalore presenting DPL Season 3. Now all set now for the inaugural ceremony. So umpires for this prestigious DPL, we have very experienced umpiring panel. Shiraj of Gori Young Boys, Arshad of Young Friends Urva, and Salim, one more very experienced umpire for this cricket tournament. And of course, Tanvir will going to join this umpiring panel of this prestigious DPL Season 3. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಇವರ ಅಮೃತಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದೀಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಇವರಿಂದ ಈ ಒಂದು DPL ಸೀಸನ್ 3 ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ yes, in the different concept which is implemented for this inaugural ceremony, the colorful rain pots, ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಲಾಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಅವರ ಮೂಲಕ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ. ಕಳೆದ 2 ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ದುಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇವರು ನಡೆಸಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಪಿಚ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಚ್.
ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಮನ ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೀಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮಾಯಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಮಾಯಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದೀಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಇವರ ಅಮೃತಾಸದಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿದೆ. Whether they go into ball first or bat first. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋತ್ ದಿ ಟೀಮ್ಸ್. So Mahesh Strikers captain won the toss and they rightly elected to field first, ball first. ಇದೀಗ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಭ ನುಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. The cricket is, everybody knows, it's a gentleman game. So you need to play with the true spirit of cricket. And Abdul Latif sir will go into inaugurate with batting. Yeah. The underarm cricket is one of our
traditional game as far as the coastal Karnataka of South Kannada district and even Kasaragod district, our neighboring state. Till Kasaragod district, we are having undrawn cricket. We are enjoying undrawn cricket. Nice looking drive, bowler's back drive, beautifully driven there by Abdul Latif. Off cutter, nicely played again, uppishly but quite safely. Using his feet, nicely driven. Abdul Latif ಅವರ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯುವಕರನ್ನು ನಾಚುವಂತೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ as the cricketing stroke is concerned. And thank you very much, sir, for your lovely appearance for this wonderful DPL season 3. So thank you for your support for the success of this cricket tournament, Abdul Latif sir. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ತಲುಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ. Inaugural ceremony, we are straight away into the inaugural match. Yes. ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಇವರಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಇವರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನಗಳು. ದುಬೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ DPL ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಅದು ಕ್ರೀಡೆಯ ನಿಯಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೋತವರು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸೋಲೆನಿಸದೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು, ಗೆದ್ದವರು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗೆಲುವೊಂದು ಅಹಂಭಾವ ತೋರಿಸದೆ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಾದರಿ ಎಂದು ಕ್ರೀಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಶಿಸ್ತು, ಕ್ರೀಡಾ ನಿಯಮದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕ್ರಿಕೆಟದು ಮಂಗಳೂರದ ಕಾಶಿ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅದು ಉರುವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ಪ್ರದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲುಂಟು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 8:30 ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಯಾರಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದಾದರೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಈಗ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದವ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನೊಂದು ಮಾತಾಡೋದಂದರೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಬಾಂಧವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಂಪೈರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಔಟು ಕಾಣುವಾಗ ಆಟಗಾರನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ನಾಟ್ ಔಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ಕ್ರೀಡೆಯ ನಿಯಮವಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡೆಯ ಗೌರವವಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲ್ಲುವುದೊಂದರಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಧಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಗೆದ್ದವರಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದವರಿಗೂ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೋದೊಂದಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆ ಕಾರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ನಿಜವಾಗಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವನ್ನು ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅದು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡೋದಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಅದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಈಗಿನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ಅದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ನೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟೀಮ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಧರ್ಮ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಅದು ಇದ್ದದ್ದೇ, ಅದು ಸೋಲು ಜೀವನದ ಸೋಲಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸೋಲನ್ನು ನಾವು ಮೆಟ್ಟಲಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಇನಾಗ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Hello, check. I request the extra player of both the teams, please be reported here immediately. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಚಿನ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬದಲಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬೋದು. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಇತರ ಆಟಗಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಲು. ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ both the teams, please send your captain, please send your extra players towards our commentary box. So Mahi Strikers versus Team Sports World, the first match, the inaugural match will going to start here. And umpires are making their respective position. Umpire Salim at square leg and umpire Arshad Bajal. Umpire in the non-strikers end. So non-strikers end, umpire and strikers end, umpire Salim and Arshad Bajal, the two umpires for the first over, and the first over going to be a power play, 6 overs matches, please note. So please note the rules and regulation of this cricket tournament. 6 overs format of games, and out of that 2 overs going to be a power play, and 5 bowlers to be used, and that is what the playing condition of this cricket tournament depends. Here is the first ball of the tournament. Right above wicket, beautifully driven around the wicket in fact, but protection is given in the deep, so batter slight a bit of agitation for the second run in the negation, and at last they are settled for a single. It's confident looking start there from Nasir, and Nasir is off the mark, and the ball slight a bit of dripping down the leg side, and batsman quite beautifully driven down to deep mid-wicket region for a single, and with that single Team Sports World they open their account. The bowler is introduced from the commentary box and Shahik round the wicket delivers. This time a lovely delivery. Again they're going across the line of the delivery, just waiting for the umpire's signal. Leg by call by umpire Arshad Bajal. One more addition. So one more single added to total, then score now moves on to 2 on the board. Please note that there will be no leg before wicket for this DPL. That's why there is no appeal coming from the bowler. Even right arm around the wicket delivers. Again going for the drive, got a slight a bit of outside edge of the bat. There is a third man orthodox, and they field that one ample time. Oh, of course there is no chance at all for any run. Score remains on 2 on the board without loss of any wicket, and a good comeback here by Shahik. Drives that one, but lack of placement. Chase lands a field, a chance of run out, and batsman survives. Nasir drives the ball. Ball went quickly to that mid-wicket fielder, mid-wicket region fielder. He wanted to make the run out, but I think that time the batter managed to complete that quick single and risky single. So with that single, score moves on to 3 on the board without loss of any wicket. Shahik just changing the field set, asking that extra cover fielder to come little bit across between extra cover and the cover point. There is a backward point and shot third man. Oh, lovely shot, driven that one down to deep square leg region, but again he's not really getting that one from middle of the bat. In comes the throw from the deep, and enough time for the batter to complete that couple of runs. Razik got that couple of runs after completion of over number, little correction, no, it's one delivery remaining here, and Razak is the batter who got a couple of runs, and that ball line which is outside the line of leg stump, batsman swings that one, but not quite intended, isn't it? He wanted to play that one in the fine leg region,
but ball went between square leg and mid wicket. We are talking about UCG cricket ground. Is one of the historical cricket ground, witnessing some the biggest tournaments, produced some legends players. Ura cricket ground is a proud cricket ground for each and every players. Here is a bowler bowling Shahik last time in this over, round the wicket delivers. Oh, beautifully bowled. He's cleaned him up around the legs. He really shuffled little bit and exposing his leg stump, and ball is did the trick by defeating his bat, and ball hits the stumps. The base dislodged, so that the wicket number first, which is back into pavilion of team Sports World, have lost their first wicket, and bowler in the last delivery, Shahik, has got a wicket. So after completion of over number first, it's 6. A little correction, yes. It's 5, not 6. It's a 5 for the loss of 1 wicket. The new batter in is just number 32, is slowly walking towards the middle. I request extra player of both the team, please be reported here. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. Lovely delivery indeed. Beautiful start for the over number second. Rashid far outside the line of off stump and going to be a wide. This time, lofted that one, down the infield, but I think the ball will going to stop just inside the boundary line by the one of the fielder of the cover point region. But ample time for the batter Nasir to complete that couple of runs. It's a positive looking lofted drive, slight bit of making room to play the shot. Nasir knows that is a power play, the last over of the power play. All you can see that fielder inside the ring, and he's just going over the top of the infield and got a couple of runs there. And 8 on the board this time. Not quite getting hold of that one properly, but quite enough for Nasir to rotate the strike. One more single, and with that single scoper moves on to 9 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Rashid. To Asir. Asir off. One more single has been added to total. With that single scored, now moves on to double figure 10 now. 10 for the loss of 1 wicket. Rashid again. This time he lofted and in the vacant area. This time I think again the chase here for the fielder. Will the ball will going to win the race here? Absolutely this time the ball winning the race against that fieldsman. This time I think is much better than the previous stroke which is attempted by Nasir in this particular over. This time is up and over, but enough timing and power behind that strokes, and even the fielder chasing that ball till his last moment, but couldn't manage to stop the boundary. This is the first boundary of the DPL season 3. So 14 for the loss of 1 wicket. Again inside out to getting struck. Again he going over the top of the infield. But this time ball will go to stop by the one of the fielder. Maybe mid off fielder is just going back down to long off region. And ample time for Nasir to complete that couple of runs. This is a productive over for
Sports World, and Nasir is getting most of the runs in that over. After completion of over number 2, it's 16 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 8 runs per over. Well, second over of the power play, which belongs to Sports World. There knows that the Nasir is a recognized batter for the side of Sports World, and you know exactly he wanted to get most of that in the second and last over of the power play, and got some runs, 1 boundary, especially in the offside division. He played some excellent inside-out cricketing stroke. So Mahi strikers now into the third over. Shahik will go into ball his second and last over of his quota, and bowled very well the first over, just 4 runs in the power play. Now he's giving a lot of protection because fielding restriction is over of that power play, so that we can find so many bodies out there at the deep. On the mid wicket and long on, long off is there. There was a deep wideish long off, maybe it's extra cover, and 1 at deep backward point. The fielders are in the deep to save the boundaries. Short fine leg, short third man, short mid off, short mid wicket. The 4 fielders inside the ring. And that's a field set here for the right-hander batter. Oh, lovely shot, beautiful, imperious looking cover drive. Running hard, looking for the second. In comes the throw, but the throw is not really having that much of power, so that both the batters quite easily completed that couple of runs. So with that couple of runs, the score now moves on to 18 on the board. Asir looks very technically sound while he's playing that off drive, and the bowler is operating round the wicket and targeting that line which is almost off stump and outside the line of off stump. Again the bowler Shahik round the wicket, flicks it of his legs down to square leg region, just behind the square, and before the fielder from deep to collect that one. Ample time for the batter to complete the single. With that single score, now moves on to 19 for the loss of 1 wicket. It's good going here for Sports World in the morning of the UCG cricket. It's known as it's a difficult condition for the batter, but these 2 batters of Sports World are so far doing so good. Oh, lovely shot, but equally well fielded, chance of run out, but umpire looks like the bowler is just searching for the stumps, isn't it? Just I want to see it in the replay, what really happened here. And the cover drive which is played, and the ball went straight to the hands of that cover fielder. Good fielding, good return as well. Have a look at the bowler. Oh my goodness, it's too late. It's a little bit late to approach the stumps, and dislodging bails is, I think, it gives enough time for the batter to complete that quick single and risk single. 20 for the loss of 1 wicket. Here is again Shaikh balls, beautifully ball, perfect run, chance of run out. Oh, this time the bails dislodged before the ball hits the stump from the hands of wicketkeeper, so that no danger at all for the batter. Ashir is just survived. Little bit correction, not Ashir. It's a Nasir. Is a second time. Is so lucky. He survived from that run out. 21 for the loss of 1 wicket. A lot of talents we can see in the Dubai market. Those who are running business, their loves and passion towards the cricket is unbelievable. Plenty of talents we can find in that Dubai market. And I think the organizer did a great job to organize such a good tournament, giving perfect platform for once in a year at least. They wanted to organize this cricket tournament and organize everyone under one roof. And cricket is the only one, the game where there is no caste, no religion, but only we are enjoying the game of cricket. Here is again. Lovely delivery indeed, outside. Oh my goodness, again, this time the non-striker is survived, leg by call by umpire.
one more single has been added to total. Have a look at that one. The bowlers turns back and he can see all three stumps, isn't it? But unfortunately misses that all three stumps. Over number 3 completed. After completion of over number 3, Sports World are 22 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 7.33 runs per over. And before the next over going to start, is a time for change in commentary box as well. I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language in there. And welcome, Gopi. Good morning to you. And once again, it's the Dubai Market Club Mangalore organizing such a wonderful cricket tournament in the name of Dubai Market Premier League 2023 and providing such a wonderful opportunity for the talents of Dubai Market. बिल्कुल सतीश, सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, दुबई मार्केट प्रीमियर लीग 2023 सीज़न 3 की शानदार शुरुआत इस वक्त हो चुकी है। भव्य उद्घाटन समारोह के बाद जनाब अब्दुल लतीफ़ ने इस श्रृंखला का बेहतरीन तरीके से उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर पहला मैच जारी है और इस बार गेंद को खेल दिया। गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका। 4th ओवर स्टार्टेड जे शॉर्ट वाले को और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तो एक बेहतर प्रगति यहाँ पर करता हुआ ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा। स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। स्पोर्ट्स वर्ल्ड एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करता हुआ और माही स्ट्राइकर्स के गेंदबाज कुछ हद तक इस वक्त दिक्कतों का सामना करते हुए गेंदबाजी में और इस बीच तैयार ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछालना चाह नॉट क्वाइट मिडलिंग एट द लास्ट मोमेंट। गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर। गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और इस बार रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद वहां पर फील्ड की जा चुकी है और इस बीच वाइड का इशारा। हालांकि लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकली थी इस वक्त विकेट कीपर के पहुंच से बाहर और नॉन स्ट्राइकर माफ कीजिए शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर ने विकेट पर निशाना दागा लेकिन उनका निशाना इस वक्त चूकता हुआ और बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर वापस लौट चुके हैं और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए गेंद को। फुल टॉस के तौर पर गेंद आई थी और आखिरकार वाइड का इशारा 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल और 27 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। अपनी सही लेंथ और लाइन को प्राप्त करने के लिए गेंदबाज जो कि 27 नंबर की जर्सी इस वक्त पहने हुए काफी दिक्कतों का सामना करते हुए और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद उछाला लंगॉन पर लेकिन फील्डर काफी पीछे तैनात। आफ्टर 1 बाउंस पहले टिप्पे के बाद गेंद को जब तक फील्ड करते बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 28 रनों पर। तो लेग स्टंप से एक बार फिर से स्पेक्ट्रा वाइड अपनी सही लेंथ और लाइन को प्राप्त करने के लिए अबीब जो कि गेंदबाज है काफी दिक्कतों का यहां पर सामना करते हुए और काफी वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं और कुछ हद तक महंगे इस ओवर में साबित हो चुके हैं। अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर इस बार रनआउट का खतरा निशाना लेकिन यहां पर यह विकेट गिर चुका है। विकेट यहां पर गिर चुका है। निशाना बिल्कुल सही बढ़ता हुआ विकेट कीपर का। बिल्स ऊपर के डिस्टर्ब हुए और आखिरकार स्क्वायर लेग अंपायर अरशद जो कि थे उन्होंने अपनी उंगली यहां पर उठा दी। हालांकि जब निशाना बिखरा गया था देखिए किस तरीके से होता है। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। देखिए यहां पर बल्लेबाज का बल्ला शायद हवा में था जब निशाना यहां पर स्टंप्स को छूकर निकली थी। बिल्स जो कि ऑफ हुए थे देखिए किस तरीके से बिल्कुल बल्ला हवा में था। द बैट वाज इन द एयर व्हेन द बिल्स आर डिस्टर्ब्ड और यहां पर विकेट रनआउट के रूप में गिर चुका है। तो पहला विकेट दूसरा विकेट गिर चुका है इस वक्त और स्कोर है इस वक्त कुल मिलाकर
30 रनों पर 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतर प्रगति करता हुआ, हालांकि 2 विकेट स्पोर्ट्स वर्ल्ड जरूर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक बेहतर प्रगति यहाँ पर करता हुआ और 30 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है। न्यू बैट्समैन नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। रिनो जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अबीब गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, वाइड का इशारा एक बार फिर से, और 1+1 2 रन्स नाउ वंस अगेन एडेड टू द टोटल। निस्संदेह अपनी सही लेंथ और लाइन को प्राप्त करने में काफी दिक्कतों का सामना करते हुए यहाँ पर गेंदबाज अभी काफी लंबा ओवर यहाँ पर फेंकते हुए, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इन 2 रनों के साथ 32 रनों पर। कुल मिलाकर इस ओवर में 10 रन अब तक बन चुके हैं और 2 गेंदें अभी भी और फेंके जा रहे बाकी। और अभी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग एट द लास्ट मोमेंट। फॉलो थ्रू पर अपनी दाईं ओर जाने के बाद जब तक गेंद को फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 33 रन। 11 रन इस ओवर में बने। एक बेहतर ओवर अगर स्पोर्ट्स वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें 11 रन बने, 11 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, और 4 ओवर के बाद 2 विकेटें होने के बावजूद इस वक्त स्पोर्ट्स वर्ल्ड एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ 33 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। स्पोर्ट्स वर्ल्ड लुकिंग इन अ गुड सिचुएशन। तो 2 ओवर का खेल बाकी, 2 ओवर्स लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग, 6 ओवर्स पर साइड टू बी प्ले। दिस इज एन 6 ओवर्स मैच, और 5वां ओवर इस वक्त कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से शुरू करते हुए गेंदबाज तो 10 नंबर जर्सी पहने हुए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए, और इस बीच दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। तो ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड, और वाइड की रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 34 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। अगली गेंद एक बार फिर से वाइड का इशारा, लगातार 2 वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं। नो बॉल का इशारा, लाइन के बाहर गेंद गई थी, तो इस वजह से बिल्कुल सही तरीके से अंपायर अरशद ने यहां पर इसे नो बॉल घोषित किया। फ्री हिट गेंद बल्लेबाज के लिए, और दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद एक बार फिर से नो बॉल बरकरार, इस वक्त वाइड का इशारा और नो बॉल इस वक्त बरकरार। 1 रन का इजाफा हो चुका है, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 36 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। फ्री हिट बरकरार बल्लेबाज के लिए, और इस वक्त राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद एक बार फिर से वाइड का इशारा, नो बॉल का इशारा, इस बार लाइन के बाहर गेंद टिप्पा खाई थी, और यहाँ पर तो नो बॉल घोषित, और फ्री हिट एक बार फिर से अभी भी गेंदबाज के लिए, और यहाँ पर वहां पर गेंदबाजी से उनको हटा दिया गया है। इस वक्त कोई भी सही गेंद अब तक उन्होंने इस ओवर में नहीं फेंकी है, और 4 रन अब तक प्रदान कर चुके हैं। तो फ्री हिट इस वक्त बरकरार है, हालांकि गेंदबाज बदल दिए गए हैं, लेकिन फ्री हिट बल्लेबाज के लिए अभी भी बरकरार। तो नहीं, उसी गेंदबाज को इस वक्त वापस बुला लिया गया है, और वो इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। तो देखना यह है कि बल्लेबाज फ्री हिट पर किस तरीके का स्ट्रोक यहां पर अपनाते हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। लेग स्पिन गेंदबाज नहीं, सीधी गेंदबाजी, और ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन, लेकिन नो बॉल इस वक्त, एक बार फिर से नो बॉल। तो गार्ड इस वक्त कहा नहीं है कि किस एंड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तो यहां पर अंपायर से कहना जरूरी है जब आप गेंदबाजी करते हैं। तो यहां पर एक और रन मिलेगा नो बॉल के रूप में, और नो बॉल के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 38 रनों पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, जबकि ओवर नंबर 5वां इस वक्त प्रगति पर। कुछ बातचीत 38, तो गार्ड कहना जरूरी है इस वक्त।
तो स्कोर इस वक्त बरकरार है 38 रनों पर। रन बॉल के 1 रन के साथ तो अंपायर को इत्तिला करना जरूरी होता है जब आप एंड चेंज कर रहे हो। तो यहां पर इत्तिला उन्होंने अंपायर को कुछ बताया नहीं था कि किस छोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। तो यहां पर नो बॉल अंपायर ने घोषित किया। तो फ्री हिट गेंद अभी भी बरकरार है। तो गेंदबाज इस वक्त तैयार, फ्री हिट गेंद लेकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद उछाला, लंगॉन पर फील्डर मौजूद, वहां पर उछल कर जब तक वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 39 रनों पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर और गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर। 1 रन मिलेगा वाइड। एक बार फिर से 1 + 1 2 runs now once again added to their total 41। मेरे ख्याल से कम 18 से 20 रन अतिरिक्त के रूप में अब तक प्रदान कर चुके हैं शायद गेंदबाज। यहाँ पर माही स्ट्राइकर्स के ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग एट द लास्ट मोमेंट, इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 42 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार शफल होते हुए स्टंप से एक्सपोज करते हुए गेंद को साइड पर उछालना चाहा चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त प्राप्त करते हुए गेंदबाज और अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद उछाला लंगॉन पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 43 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है इस मेगा श्रृंखला का। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, शॉट्स को लेग पर गेंद पहुंची और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 44 रनों पर। 44 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। 1 शॉट। तो यहां पर 1 रन घटा दिए जाएंगे। तो पिच में दौड़े थे तो इसकी वजह से चेतावनी यानी वार्निंग देने के बावजूद बार बार पिच पर दौड़ने पर यह रन को यहां पर रद्द कर दिया गया है। तो इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, वाइड अगेन और अब स्कोर सही है 44। 44 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। एक लंबा ओवर यहां पर प्रगति पर गेंदबाज द्वारा अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार ड्राइव किया, हाफ स्टॉप विद हिज फुट ऑन हिज फॉलो थ्रू मेड बाय द बॉलर बट वोंट प्रिवेंट द सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका कुल मिलाकर 46 रनों पर 45 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। एक लंबा ओवर इस वक्त समाप्त हो चुका है। तो 4 ओवर की समाप्ति, 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड लुकिंग इन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पोजीशन नाउ। तो टाइम इस वक्त समाप्त हो चुका है। दे आर एक्सीडेड द टाइम लिमिट। तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। तो यहां पर अब अंतिम ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में स्पोर्ट्स वर्ल्ड के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला दुबई मार्केट प्रीमियर लीग 2023 डीपीएल सीजन 3 की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए आज सुबह भव्य उद्घाटन समारोह के बाद ये श्रृंखला यहां पर शुरू हुई और ये टूर्नामेंट ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करते हुए और अगली गेंद पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्ट्रेट लाइन। गेंद को उछालना चाहा, ठीक तरह से उछाल नहीं पाया, बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद पहुंची और वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाज से आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, एक और वाइड और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 46 रनों पर। 46 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। अगली गेंद, ये गेंद चिप किया स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड बिटवीन लॉन्ग ऑफ एंड लॉन्ग ऑन, ही हैज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 47 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 47 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर। इनफैक्ट अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। यह गेंद उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची, नॉट मोर देन अ सिंगल
और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 48 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 48 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और फिर से एक बार गेंदबाज सुल्तान गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, बेहतर स्टॉप फॉलो थ्रू में, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए। अंतिम क्षण में गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और इस छूट का फायदा उठाकर बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदलते हुए 49 रन बन चुका है, 49, 1 शॉट ऑफ 50। और सुल्तान फुल टॉस स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, गेंद को खेला इस वक्त स्ट्राइट हिट एरिया पर, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यहां पर नहीं मिलेगा और यहां पर स्ट्राइक रेट पर यह विकेट गिर चुका है रनआउट के रूप में। तो 1 रन जुड़े और इस 1 रन के साथ द 50 कम्स अप फॉर स्पोर्ट्स वर्ल्ड। 50 रन पूर्ण हो चुके हैं और विकेट गिर चुका है रनआउट के रूप में। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, आसान सा रनआउट स्ट्राइकर एंड पर होता हुआ और 1 गेंद अब कुल मिलाकर उनकी पारी में बाकी। द लास्ट बॉल इज नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। तो नए बल्लेबाज नंबर 17 की जर्सी पहने हुए इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए जुनैद, और वो इस वक्त सामना करेंगे उनकी पारी की आखिरी अंतिम गेंद का, जबकि गेंदबाज सुल्तान इस वक्त अंतिम गेंद फेंकने के लिए तैयार। एग्जैक्टली 50 द स्कोर स्टेज एट फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स with just 1 ball to go in their innings. Last ball remaining in this over. तो इस बीच अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। दाहिने हाथ इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, not quite mid wicket in fact, he's got a single for that stroke. I think he's got a bat on that, and the innings is up for Sports World. They've started well, progressed well, and finally finished well. Very well with the 51 for the loss of 2 wicket in the stipulated 5 overs, and now the huge target in front of Mahi Strikers. 52 they have to score for victory in the stipulated 5 overs with a required run rate of exactly 10.40 runs per over. 52 रन बनाने निर्धारित 5 ओवर में 10.40 रन प्रति ओवर की औसत से 10 विकेटों की मदद से, और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। फिलहाल माही स्ट्राइकर्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब माही स्ट्राइकर्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। तो अब वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का। धन्यवाद, थैंक यू।
So thank you very much, Gopi. And a signal straight away came from umpire Arshad Bajal, and there will going to be a start of the innings of my strikers. So they need to get 52 runs in 36 deliveries, and here is the first ball. And Shahik went for the big shot. Ball is in there, but ball just falling short of that field, and they are coming for a second run, and they made it quite easily in the end. Ball is in there for a while in the negation. It looks like once it's going to be a ball which is carried to the fielder at backward point, but the fielder is not moving quickly to his front, so that they missed it completely. The couple of runs has been taken there by Shahik. 2 on the board without loss of any wicket. Razak balls, and again that ball is slight a bit of dipping down the legs, and the batsman flicks it off his legs down to fine leg region for an easy single. With that single, Skobar Namozan to 3 on the board without loss of any wicket in the over. Number first is in progress. Still, it's long way to go. 52 is going to be a big total to chase down, but in cricket anything is possible. And a lovely line. This is a good line to ball for any batter who is facing his first delivery, as Samir missed it completely. This time he went for the reverse sweep straight to the answer fielder, and both the batsmen in the same end, and unfortunately the non-striker and need to go wait for the umpire signal, and just wait and see here, and absolutely the non-striker, we need to see that which batsman is out, and looks like the batter Samir is going back. Maybe he is out of the crease when his striker, non-striker is complete reaches in the striker's end. So it's very unfortunate, isn't it? The batsman went for the reverse stroke, straight away went to the hands of the fielder at back point. That's why Samir is not interested, but it's too late, seeing that his partner is already, he came into striker's end. First wicket gone, it's 3 for the loss of 1 wicket. Again, that ball just passing around the legs of the batter and well within the reach of the batter. Ali Madi. The bowler's back drive, and looks like it's going to be a chance of cotton ball, and missed out by the bowler. Razak and bowled a very tidy first over, and 3 for the loss of 1 wicket. And it's a very good over, very good start here for Sports World. Through their opening bowler, Razak did a great job to not only prevent the runs, but 1 wicket in the form of run out. But one more opportunity is a cotton ball, which is missed out by Razak. So new bowler in is 45, one more experienced campaigner for Sports World. Salim, the last edition also, he did a great job for the contribution in the bowling department. This time went for the expansive drive, not quite get hold of that one properly. Chance of run out which is created, and before that throw which is just missed the stumps, and batter completed a single. Rashid picked up a single there, and Skobar Namuzan to 4 on the board. This time lofted that one, not really getting that much of timing behind the stroke, but good enough. We come back for the second, and it's gone. Absolutely, it's a disaster end. The my strikers batsman really not having any understanding at all. But I think it's a certain couple there. There is a certain couple, but I don't know why the batsman is that much of slowing down. The wicket is back into pavilion. It's time for Rashid to back into pavilion. The Shahik is the one witnessing for that 2 wickets in the form of run out. It's 5 for the loss of 2 wicket. So just number 23 slowly walking towards the middle. Asghar is a new batter in, and last over of the power play is in progress. Salim.
Balls nicely bowled. Good line. Tidy line indeed there from Salim. Consistency in his line and length. Bowling a simple orthodox off spin ball, but it's a very, very effective. Salim again back to his bowling mark. To the new batter, went for the sweep shot, but ball just passing under the bat. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Right arm over the wicket. Swept that one just over the top of the infield and square leg fielder there in front of square. That ball just going over the head of that fielder and completed single. With that single, Skubana moves on to 7 on the board. Next match, Moby Hub versus Team Matrix. So that I request both the teams, please complete your formalities of signatures as soon as possible. ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಬಿ ಹಬ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಮೋಬಿ ಹಬ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮೋಬಿ ಹಬ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು. So 2 overs completed, chasing 52 to win this match. Still team Mahi strikers are struggling in the middle. It's 7 for the loss of 2 wickets. So Nasir, the new bowler, the all-rounder for the side of team Sports World. One who got some runs from the bat for the side. Maybe he scored 15 he scored and now is in action as a bowler. First ball outside the line of off stump. Again the batter went for the drive but missed it completely from the bat. And there is no chance at all for any run. Drives that one, off stop by the bowler Nasir on his follow through, and just he tried to stop the ball from his feet and able to stop the ball but not able to stop the single from this batter. Scored moves on to 8 for the loss of 2 wickets. That brings oh, what a shot. No need to run for that ball. Just rocketing towards the fence. Towards the deep backward point boundary for 4 runs. Such a useful stroke to play, especially in underarm cricket, in the present cricket. It's one of the cricketing stroke each and every batter loves to play. And once you got a proper connection, then it's difficult to stop because no one there in the deep in the backward point. Once it defeats the infield, it's quick foul outfield here in UCG cricket ground. And a very important welcome boundary for Mahi strikers. Mobi Hub ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ. Again driven, not quite controlled that one, but enough for Rashid to complete the single. Shahid to complete the single. Shahik. Oh, lovely delivery. There is no leg before wicket, unfortunately. The batter looks like completely missed out. No signal from umpire. That means maybe it's from the bat of the batter. One more addition. With that addition, that's Kobal moves on to 14 on the board for the loss of 2 wickets. Shaikh is on strike. Inside out cricketing stroke he is trying for, but he's driven that one firmly down. Oh, misfield there by the fielder. Unforced error there from the long off fielder, isn't it? What could be a certain single because of that misfield by the fielder. It's went into the boundary, the second boundary of that over. Have a look at that one, powerfully driven. The fielder in the long off is just, ball just passing under his
under his hand and between two legs. And maybe that is not really bended too much. It's a hand which is not coming to the ground level. And that's why the ball just passing under his hands, trying hands. So 18 for the loss of 2 wickets. So meanwhile, captain of Moby Hub won the toss and rightly elected to no decision which is pending here, whether we're going to bat or ball first. For the next match, please get ready, two teams, Team Matrix and Moby Hub. 3 overs completed. Time for Gopi to take over the microphone. Thank you. धन्यवाद सतीश। स्वेप्ट और स्वीप किया गेंद को हल्के से मिड विकेट पर एक रन बल्लेबाज को मिलेगा और ऐसा कहना पड़ेगा डिफिकल्ट टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ माही स्ट्राइकर्स। इन फैक्ट स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, 33 मोर रन्स दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 2.4 ओवर्स, दैट मींस 16 डिलीवरीज। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, स्वीप किया इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद पहुंची डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। रन्स सिंगल्स के रूप में बनते हुए चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस वक्त। रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा विकेट कीपर गेंद तक नहीं पहुंच पाए और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस गेंद पर मिलेंगे लेग बाय के रूप में 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 21 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, वाइट का इशारा अंपायर का और वाइट के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। यह गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर फील्डर के सिर के ऊपर से, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर और गेंद इस वक्त सीमा रेखा के अंदर काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद फील्ड की जाती, 3 रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, खतरा हो सकता है यहां पर, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज 3 रन प्राप्त करने में सफल। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया था, एक्स्ट्रा कवर फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद निकली थी और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज ने तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा 3 रन यहाँ पर प्राप्त कर लिए और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। नेट रन रेट अहम भूमिका निभाएगी इस श्रृंखला में, तो यहाँ पर नेट रन रेट की ओर हर टीम के खिलाड़ी को ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर 25 रन बन चुके हैं और 27 रन और चाहिए विकेट 2 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद स्वीप करना चाहा, वाइट का इशारा और वाइट के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। 26 run scored, 26 runs, still they have to score for victory in 2+ overs। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन, मच स्ट्रेट लाइन और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। ओवर नंबर 4 की समाप्ति हो चुकी है, 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 26 for the loss of 2 wicket after completion of 4 overs। 2 overs left, 26 to get from remaining 2 overs। और जहाँ तक चौके और छक्कों का सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, इस वक्त उन्हें चौके और छक्के उनके बल्लेबाजों को लगाने ही होंगे अगर यहाँ पर कम बैक करना है माई स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को। तो अंपायर इस वक्त मौजूद और खिलाड़ी जो कि इस वक्त पानी ग्रहण न करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। काफ़ी गर्मी यहाँ पर छा चुकी है, लगभग 31 से 32 डिग्री सेल्सियस मंगलूर का तापमान दाखिल हो चुका है और हालांकि बदली भरा वातावरण जरूर छा चुका है, लेकिन गर्मी की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई। सूरज बादलों की आड़ में इस वक्त छिप चुका है और जहाँ तक सवाल है माहौल का, तो क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला दुबई मार्केट प्रीमियर लीग 2023 DPL सीजन 3 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई। पहला मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ मुकाबला इस वक्त जारी है स्पोर्ट्स वर्ल्ड और माही स्ट्राइकर्स के बीच में। गेंदबाज जुनैद गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 2 ओवर में 26 रनों की दरकार, पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन्स नहीं मिलेगा। 11 गेंद 26 रन चाहिए, 26 रन टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स। हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस वक्त कम बैक करने के लिए बल्लेबाजों को।
और अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ऊपर था विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, एक रन मिलेगा। ओवर थ्रो और बैकअप होता हुआ और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, खतरा हो सकता है, लेकिन अंतिम क्षण पर बल्लेबाज 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 24 more runs now they have to score for victory in remaining 10 deliveries. That means in 10 balls. और अगले गेंद के लिए तैयार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर था विकेट, गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 29 रनों पर। 29 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और फिर से एक बार गेंदबाज की यह गेंद, इस बार ढीली गेंद थी, धीमी ऑफ कटर, गेंद को उछालना चाहा, फायदा नहीं उठा पाए और गेंद लगभग बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद बल्लेबाज के पैर पर टकराने के बाद सीधे पहुंची चंद टिप्पों बाद विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो फिर से एक बार जुनैद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 30 रनों पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 22 more runs now they have to score for victory in remaining 8 balls। और जुनैद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर था विकेट, गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद स्वीप किया इम्प्रोवाइजेशन करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेके दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, चंद टिप्पों बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया, बेहतर फील्डिंग का और इस बीच बल्लेबाज के पास समय था कि सिर्फ 1 रन यहां पर प्राप्त कर सके। तो 31 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। और अगली गेंद लेकर जुनैद इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर था विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन एंड अ फैंटास्टिक डिलीवरी टू एंड द ओवर और एक बेहतर ओवर यहां पर जुनैद का समाप्त हो चुका। 4 ओवर की समाप्ति, 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 21 रन चाहिए अंतिम ओवर में, 6 balls remaining, 21 required। नेक्स्ट मैच Moby Hub will takes over Team Matrix and in this match Moby Hub after won the toss they elected to field first and I request the both teams players of next match to please get ready for the next match। और अंतिम ओवर बाकी 21 रन चाहिए विजय के लिए, 21 needed in remaining last over। गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज जो कि 32 नंबर की जर्सी इस वक्त पहने हुए और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। तो ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त माही स्ट्राइकर्स को सिर्फ चौके या छक्के ही इस मैच में वापस ला सकते हैं। अंसार इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अंसार इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, लेग स्पिन गेंदबाजी, स्वीप किया इम्प्रोवाइजेशन करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंचे, 1 रन का इजाफा, दूसरा रन नहीं मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। मैच नंबर 1 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट, द फर्स्ट मैच of this prestigious cricket tournament is now progressing here in the name of Dubai Market Premier League 2023 और फुल टॉस बीमर गेंद और इस बीच नो बॉल का इशारा, सही तरीके से अंपायर ने नो बॉल घोषित किया। बीमर गेंद थी, लगभग कंधे के से ऊंचाई पर निकली और आखिरकार 1 रन उनके खाते में जुड़ता हुआ 33 रन बन चुके हैं। अगली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ड्राइव करना चाहा, उछालना चाहा, चूंकि डॉट गेंद और 2 गेंदे फेंके जा चुके। अब अंतिम अवकाश, लगभग नहीं, ठीक तरह से कहा जाए तो 19 रन और बनाने 4 गेंदों में। इस बार रन्स नहीं मिलेंगे। अंतिम अवकाश, नाउ द लास्ट चांस, 3 sixes रिक्वायर्ड इन द रिमेनिंग लास्ट 3 deliveries, नॉट फॉर विक्ट्री बट फॉर टाई। और यहां पर 19 रन बनाने हैं, 18 टाई, 3 छक्कों की जरूरत 3 गेंदों पर। बॉल्ड आउट, लेग स्टंप पर जाकर गेंद टकराए, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका। अब ऐसा कहना पड़ेगा यहां पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड की विजय निश्चित है अगर इन बचे हुए 2 गेंदों में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो। 19 रन बनाने हैं, सिर्फ 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ, रौफ नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए
और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के नए बल्लेबाज रऊफ जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद टॉप एज और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में विकेट गिर चुका है रऊफ का और 33 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका है। अब अंतिम गेंद बाकी, 19 रन चाहिए और क्रिकेट इतिहास के किसी भी किताब में यह दर्ज नहीं हुआ कि अंतिम गेंद पर 19 रन बने हो। तो यहां पर इंतजार है इस वक्त नए बल्लेबाज का। राजीम उनकी पारी की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नॉट कमिंग अप। टॉप एज गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर, रन इस बीच अंतिम क्षण में रन लेना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन ये जो रन लेते तो शायद उनका रन रेट के लिए काम आ सकता था, तो यहां पर रन लेना मुनासिब नहीं समझा। तो यहां पर 18 रनों से स्पोर्ट्स वर्ल्ड यहां पर इस मैच को जीत चुका है माही स्ट्राइकर्स के खिलाफ। माही स्ट्राइकर्स आर लॉस्ट द मैच बाय 18 रन्स एंड स्पोर्ट्स वर्ल्ड registered their 18 runs comprehensive victory in the Mahi Strikers in the first match, inaugural match of this prestigious cricket tournament, Dubai Market Premier League 2023 DPL Season 3 2023. And the next match is now going to start. मोबी हब का सामना होगा टीम मैट्रिक्स के साथ अगले मैच में, और मोबी हब ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का करने का निर्णय लिया है, तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया मैच जल्द से जल्द शुरू करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत यहां पर होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। धन्यवाद, थैंक यू। So man of the match of this match award goes to the batsman, the batter who batted fantastically in this match, scored 15 runs into his credit. Nasir adjudged the man of the match. I request Nasir back the man of the match award because of his fantastic batting performance of 15 runs with the bat. I request Mr. Nasir to please come on to the stage and receive the man of the match award from organizer Nasir of Sports World.
Thank you very much, Gopi. And we are into the second match of of this prestigious DPL season 3. And after winning the toss, captain of Mobi Hub elected to field first. And opening batters Nawaz and Afreed are in the middle. Aziz, one of the very good bowler for the side, will going to start the proceedings from the far end. Right arm over the wicket starts with the warm-up delivery of the morning, and which is gone outside the line of off stump too much. So that wide call by umpires, so that team Matrix there open their account with the extra one without loss of any wicket. Again Aziz. Improvisation nicely, just defeating the infield ball, running down the deep fine leg boundary. Will it going to be a boundary there? Might be. The fielder is just able to stop the boundary before the ball is going to touch the roof. Absolutely fantastic chasing here from the fielder. He just chased the ball just like a cat chasing a mouse, and at last it's the fielder is winning the race against that ball and stops that one. Have a look at that one in replay, how quickly he's running back, and absolutely good work, and stopping a couple of runs for his team, and Nawaz has got his first run as well. So 3 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Aziz again back to his bowling mark. With the run, ball is in there. Oh my goodness! I don't think it's that much of necessity is required for that catch. It was a slight bit. It looks like a simple catch, but maybe the fielder's thinking that it might be he wanted to dive in front. Have a look at that one. Oh, he wanted to dive that one. By doing that, ball hitting his farm, and the ball slipping out of his hand. It's might be a little bit early jump into front. And the batter survives from that catch, and a very good catch from the cameraman as well. Even fielder drops the catch, but I think the cameraman catches that beautiful coverage of attempt from the fielder at backward point region. So 4 on the board without loss of any wicket. Again Aziz back to his bowling mark. Right arm over the wicket delivers. Nicely bowled, right on mid and off. Good piece of batting there by the batter. Not really playing that one with power, but it just a soft end comes into play. So you can realize that there could be a single there, because all the fielder we can see that in the field, in the inside the ring, which is they're standing in the edge of the circle. So 5 on the board without loss of any wicket. Again Aziz. At one wicket. Oh, again second opportunity is missed out. So lucky, I think Nawaz today. 2 chances in 1 hour, and they're turning out for the third. Frustration for the bowler. The frustration for the bowler. Warning number 1 has been given for the batter Nawaz from umpire Sriraj, that is running in a protected zone. Danger area. You need to avoid that one. The scoreboard is 8 on the board. One more single, and 9 on the board, and first over completed. Unlucky Aziz, because what could be 2 wickets in that over, and because of 2 chances which is given to Nawaz in that particular over, and unfortunately for the bowler. So Team Matrix got a lucky start here, and after completion of first over, it's 9 on the board without loss of any wicket. So it's change in bowling. Nawaz will go into bowl the second over of the power play, last over of the power play. Those who are tuned late into YouTube channel of King Sports, myself Satish Salyan, wishing everyone, each and every cricket lovers, a very good morning. And of course, it's a weekday, it's a working day, but still, I think the opportunities for the cricket lovers to watch the competition in this DPL season 3 will going to become the champion of this prestigious cricket tournament. So Nawaz bowling right arm over the wicket to Afreed. Short run up. Lovely delivery to tossed up delivery. Good bowling action. Nicely bowled. Almost keeping the batsman quiet by
bowling that line, which is so good for the right-hander batsman. Little bit outside the line of off-stump, slight a bit of deviation, then batter completely missed out. Afrid will going to face next delivery from Nawaz. This time reverse strokes comes into play, even though he's not really controlled that strokes properly, but quite enough for him to go over the head of that infield. And before the fielder to run back to field that one, ample time for Afrid to complete that couple of runs. So with that couple of runs, Kobarna moves on to 11 on the board without loss of any wicket. It's not so easy for any batter to get any kind of big shots because the ball which is used for this particular tournament, it's a slight bit of soft in the nature. Oh, beautiful Yorker line delivery, but line which is outside the line of off-stump. Afrid just blocking the ball in the last moment, and he picked up a single for that. With that single score, moves on to 12 on the board without loss of any wicket. So very, very interesting to watch because the bowler now bowling round the wicket, and for Nawaz, long on and mid wicket are the two fielders in the deep for Nawaz. This time lofted that one handsomely. Will it go into the first sixer of the tournament? Yes, it does. So Nawaz registering his name as the first sixer of the DPL season 3, which just came from the bat of Nawaz. Took his position quickly, isn't it? Slight a bit of shuffle across the line of delivery. Have a look at that one, a replay. And ball which is travelling and landing just into the wall, down at a deep square leg behind the square. Nice looking drive. Again, he wanted to repeat that stroke, but this time he fails to make a contact with the bat, so that umpire Salim has got a little bit exercise to lift his leg to signal a leg by. With the addition of that single score, moves on to 19 on the board without loss of any wicket in the over number second is in progress. That brings Afrid into strike now. Nawaz. Bowls again outside the line of leg stump. One more delivery which is slide a bit of down the leg side. So Nawaz completes the expensive over after completion of over number 2. It's 19 on the board without loss of any wicket. 10 runs came from that first over, second over. 9 which came in the first. That means 2 over of the power play belongs to Team Matrix. They got 19 at the rate of 9.5 runs per over. I'm not really understood why Nawaz, who is changing his angle. When he bowled over the wicket, he bowled so good outside the line of off stump. And then he's changing his angle, try to come round the wicket. Then all we can see that ball which is going outside the line of leg stump. And that's why one big treatment which is came from the bat of Nawaz. So no change in bowling, and Aziz himself will going to continue from the far end, who known to be a very unlucky bowler in the first over, and 2 chances which is missed out by the fielder of Moby Hub. One at backward point and one at a short extra cover. Just I want to see the field set. Now long on is in orthodox. There is a deep wideish of without loss of any wicket. Good foundation laid by both the opening batters of Team Matrix, scoring 20 in just 13 balls. As his balls nicely played there by Afrid, by swept the ball. When the ball is along the carpet, I think it's the right way to implement that technique of sweeping the ball down to square leg. One more addition, 21 without loss of any wicket. Aziz. This time shuffled across the line of Nawaz. He is so good in that. Have a look at the reaction from Aziz. Knows that that ball is targeting midline leg stump. If the batter missed the ball, he will going to hit the stumps. But the way that Nawaz is playing the similar way, is a slight bit of initial movement. Shuffled across the line of the delivery. And very, very confident while playing that shot. 22 on the board. Bowler's back drive, very good fielding there by Aziz on his follow through. Quickly react to that one. It's not so easy for the fast bowler to react quickly when batter hitting the ball back to bowler. But Aziz is a very good fielder on his own bowling. So he stopped that one and back to his bowling mark.
Nicely driven right in the gap towards extra cover. They're running hard. They're definitely going to come back for the second, and they made it quite easily in the end. Good placement there from Nafrit. Just played the right of that extra cover fielder so that he will going to get a couple of runs easily there. Scoreboard now moves on to 24 on the board. 24 without loss of any wicket in the over number. Third is in progress. Aziz again. Right arm over the wicket bounce. Drives again. That fielder is not really quick enough. But here is the batters are quick enough to come back for the second here. And they completed 2 valuable runs. So good thinking by Afred, playing a very good placement and playing a good stroke as well. So over number 2 completed, 3 gone. It's 26 without loss of any wicket, team matrix. 3 completed very quickly, and very quickly I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. Thank you. धन्यवाद सतीश. So what a fantastic progressing here for team matrix. 26 runs they scored yet to lose any wicket after completion of 3 overs. और 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है और चौथा ओवर हमसे दूर वाले छोर से यहाँ पर शुरू होता हुआ. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद को ड्राइव करना चाहा चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 26 रनों पर बिना किसी नुकसान के. फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. यह गेंद स्वीप किया इस वक्त. गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर. रन के लिए दौड़ पड़े और इस बीच 1 रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं. 22 का इशारा और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर बिना किसी नुकसान के. एक बेहतर प्रगति यहां पर करता हुआ टीम मैट्रिक्स टॉस हारने के बाद मोबी हब के खिलाफ पहले बल्लेबाजी पर उतराता हुआ और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद इस बार ड्राइव किया. फॉलो थ्रू में इस बीच मिसफील्ड और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन प्राप्त कर लिए. बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को उछाला था इस वक्त. फॉलो थ्रू में गेंद को ठीक तरह से फील्ड करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 28 रनों पर बिना किसी नुकसान के. चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया जगह बनाते हुए मिड विकेट पर. नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर. 29 नाउ फॉर द लॉस ऑफ no wicket in the over number 4 in progress. तो 29 विदाउट लॉस और अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए यह गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर. मौका फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. ऐसा कहना पड़ेगा. नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट. द प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त उछाला था. मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं और प्लेसमेंट भी बिल्कुल कुछ खास सही नहीं और गेंद सीधे पहुंची लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका. तो 29 रनों की आरंभिक साझेदारी के बाद यह साझेदारी इस वक्त टूट चुकी है और अफरीद आउट होकर पेविलियन वापस यहां पर लौटते हुए और पहला विकेट खो चुका है टीम मैट्रिक्स. 29 पर 1. इट्स 29 for 1. रियाज नंबर 1 जर्सी पहने हुए नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद जो कि टीम के मालिक है, फ्रेंचाइजी के मालिक है टीम मैट्रिक्स के. इस वक्त सामना करने के लिए तैयार
दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त, गेंद पहुंची कवर पॉइंट पर, अगर छोड़ते तो शायद वाइड हो सकता था, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकली थी, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद पर इम्प्रोवाइजेशन करते हुए खेल दिया रिवर्स शॉट के जरिए कवर पॉइंट पर। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका, 30 रन बन चुके। बेहतरीन ओवर, पहला बेहतरीन ओवर अगर टीम मोबी हब के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका, जिसमें 4 रन बने इस ओवर में। ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಹನದ ಮಾಲಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So 4 overs completed, 30 runs on the board, just 4 runs came from the last over from Nawaz, and after 4 overs they are 30 for the loss of 1 wicket. 5th over starts in the innings, 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। सुबह से बदले भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है, हालांकि सुबह के 10:30 यहाँ पर बच चुके हैं, 10:30 यहाँ पर बच चुके हैं, और धूप मैदान से गायब हो चुकी है। सूरज आसमान के तले जो बादल है उस बादलों की आड़ में इस वक्त छुप चुका है। और ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी एंड फैंटास्टिक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स। परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट मोमेंट, ही बोल्ड अ स्लोवर डिलीवरी। गेंद को इस वक्त खेलना चाहा था और इस फ्लाइट पर चकमा खा गया और विकेट कीपर अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया। देखिए किस तरीके से हुआ था, गेंद को हल्के से खेलना चाहा, बीट हो गए और कोई मौका नहीं यहाँ पर क्रीज पर वापस लौटने का। और बेहतरीन स्टंपिंग इस वक्त विकेट कीपर ने की। दूसरा विकेट गिर हफीज का आगमन इस वक्त होता हुआ। एक वक्त स्कोर था 29 रन बिना किसी नुकसान के, अब स्कोर है 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी 1 रन के अंतराल में 29 और 30 के दरमियान 1 रन के सिर्फ 1 रन के अंतराल में 3 विकेटों को खो चुका है इस वक्त टीम मैट्रिक्स। और इस बीच गेंदबाज की गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहे, एक बार फिर से रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला हो सकता है, निशाना यहां पर टकरा चुका है और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। डायरेक्ट हिट कोस्ट द बैट्समैन बैक इनटू द पेविलियन। बेहतरीन थ्रो इस वक्त विकेट कीपर द्वारा सीधे मिडिल स्टंप को बिखेर कर ले जाता हुआ। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, तेजी के साथ विकेट कीपर गेंद पर लपके थ्रो किया और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ, मिडिल स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ गेंद टकराने के बाद। और एक और विकेट यहां पर गिर चुका, 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। So dramatical collapse happening in the innings of team Matrix now. 29 without loss at one stage, and now they are 30 for the loss of 4 wickets. That means they lost their 4 wickets in the space of just 1 run in between 29 to 30. और एक बेहतर कमबैक यहां पर कर चुका है इस वक्त टीम मोबी हब के गेंदबाज अंतिम चंद गेंदों में, और 4 अपने बहुमूल्य विकेटों को यहां पर टीम मैट्रिक्स खो चुका है। 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर, और गेंदबाज इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 31 रनों पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाया, विकेटों के पीछे वाइड का इशारा। 1 + 1 2 रन एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा, दिशाहीन गेंद और अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए गेंदबाज लगातार 2 वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं। हालांकि विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटकाए थे, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। स्कोर रुक चुका है 33 रन 4 विकेट के नुकसान, 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर 4 सही गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी है। अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है, और 2 गेंदें इस ओवर में अभी भी बाकी। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, गेंद पहुंची पैरों पर टकराने के बाद शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 35 रनों पर। 35 कुल मिलाकर 5 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं। एक बेहतर ओवर साबित हो चुका है गेंदबाज फयाज का इस ओवर में अंतिम बार।
ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया, इस बार गेंद को डीप मिड विकेट पर, ऐसा कहना पड़ेगा झाड़ पोंछ कर गेंद को इस वक्त स्कूप किया था। अंतिम क्षण में 1 रन का इजाफा हो चुका है। 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति। 5 गॉन, 836 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट with a run rate of exactly 7.20 runs per over. They scored in their first 5 overs. Last over to go in their innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी उनके पारी में। ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದಂಥ ನಾಸೀರ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಂಡದ ನಾಸೀರ್ ಇವರ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಸೀರ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಂಡದ ನಾಸೀರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಂಡದ ನಾಸೀರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರಿಂದ. तो अल्ताफ गेंदबाजी शुरू करते हुए बेहतर गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा, और जब तक गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड किया जाए बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th एंड द लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स. और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर आगे बढ़ाते हुए अल्ताफ. फुल टॉस, जस्ट गॉन फॉर अ लॉफ्ट, नॉट सक्सीडेड. इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. और रनआउट का खतरा इस बीच, और इसी के साथ यहां पर ऐसा देखना पड़ेगा, तो देखने वाली बात यह है कि कौन से बल्लेबाज यहां पर आउट है. तो स्क्वायर लेग अंपायर श्रीराज ने कहा कि यहां पर बल्लेबाज आउट है, लेकिन मुख्तार को आउट यहां पर घोषित किया गया है रनआउट के रूप में. और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर. 38 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಸೀರ್ ಇವರು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಯ ಇವರು UFC ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾಸೀರ್ ಅವರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ ಸರ್. तो यहाँ पर गेंद को ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में. 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़कर 1 रन के साथ पहुंच चुका है 39 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद फुल टॉस, गेंद को रिवर्स शॉट इस वक्त खेला इंप्रोवाइजेशन करते हुए, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर. 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा. तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े. यहाँ पर रनआउट का खतरा, स्ट्राइक, काफी वाइड थ्रो, ओवर थ्रो, और ओवर थ्रो के रूप में चौथा रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं. सो 2 + 2, 4 runs added to the total. और इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 43 रनों पर. 43 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में. और इस बीच गेंदबाज अल्ताफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. ये गेंद इस बार ये विकेट जरूर गिरेगा, और गिर चुका है यहाँ पर रनआउट के रूप में. वाइड का भी इशारा हो चुका है, तो 1 रन का इजाफा. 44 for 5, 44 for 6 in fact. Wide also called by umpire. Still a couple of balls remaining in the innings. 2 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में. मैच नंबर 2 इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट दुबई मार्केट प्रीमियर लीग 2023 DPL सीजन 3 2023 की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए. और जहां तक सवाल है इस दूसरे मैच के प्रथमार्ध का, तो यहां पर टीम मैट्रिक्स
So welcome back from some technical disturbance. और अंतिम गेंद अभी भी बाकी है. 46 for the loss of 7 wickets. और अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. At one stage they were 29 without loss and now they are 46 for 7. That means they lost their 7 wickets in the space of 17 runs in between 29 to 46. The last ball of their innings is now coming up. अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त अल्ताफ तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद lost it. This time I think it could be taken. Yes it does. Taken comfortably just inside the fence. And the innings is up. और यहाँ पर पारी के निर्धारित ओवर समाप्त हो चुके हैं. और टीम मैट्रिक्स ने बनाए 46 रन 8 विकेट के नुकसान पर. They finished with 46 for the loss of 8 wickets in the stipulated 6 overs. And now the target for team Moby Hub is 47 in 6 overs. They have to score for victory. And as far as the required run rate is concerned, 5.88 runs per over they have to score for victory. In fact, it's a 6 overs match. That means 7.88 runs per over they have to score for victory. 7.88 the required run rate for them in their stipulated 6 overs. 47 the target for them. With the help of 10 wickets they have to score for victory. And let's see can they reach the target or not. उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चैनल मोबाइल. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर टीम मोबी हब की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. So Millennium will take over Max in the next match. और उस मैच में Millennium ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है. और यहाँ पर 47 रनों का लक्ष्य 6 ओवर में उनकी पारी की शुरुआत होती इस वक्त होने वाली है. और इससे पहले कि उनकी पारी की शुरुआत हो आगे का अखोदे का हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी में मैं सतीश को अब आमंत्रित करना चाहूँगा. ये सतीश धन्यवाद. थैंक यू. So thank you very much, Gopi. 36 ball 27, which is a target for team Mobile Hub. And wait and see, Mob Hub will going to get this total or not. And of course, the previous match, which is 52, which is depended well by the team Sports World against Mahi Strikers. And wait and see how Mobile Strikers will going to depend this total 47, which is a target for team Mobi Hub. So
So opening batters, they're taking their respective position. Then the strikers and Nawaz Junior, and in the non-strikers and Nawaz Senior. So that two Nawaz to open the innings, and very young talented Mukhtar will go into start the proceedings from the far end in the power play over. In the power play, there is a long off and mid wicket, a two fielder outside the circle, 5 in the off, 4 in the on, and here is the first ball. Right arm over the wicket, starts with a beautiful delivery, outgoing delivery, absolutely perfect like a career there from Mukhtar, and the batter slightly across the line, wanted to hit the ball, misses the line completely, then wicketkeeper behind the stump did the rest. Big wide, and no ball called by umpires. Ball which is pitched outside the line of the pitch, so that umpire Shiraj has got no hesitation as far as the new rules and regulation of Maryball Cricket Council which is implemented. It's no ball which is given if the ball is pitching outside the pitch. This time he wanted to go for the big shot, chance of run out in non-strikers, and the bowler Mukhtar, slight a bit of urgency from him that he wanted to make the run out, but he couldn't manage to pick the ball on his follow through, so that batter Nawaz Junior completed his first run. Scoreboard is 2 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Right arm over, wide call by umpire, one more addition to total. Three on the board. Mukhtar bowls. This time drives it on the ground. Best chance of run out there. The fielder at a short mid on. Tried to hit the stumps in the non-strikers, and but again that ball misses the stump, and Nawaz Senior got his first run, and scoreboard now moves on to 4 without loss of any wicket. Mukhtar. Short run up. Right arm over the wicket. Oh, lovely delivery indeed. Again, batter going for the same chance of run. This time looks like umpire Salem is not interested, but everyone is appearing here. But leg by call by umpire. Maybe that ball, when ball hits the stump, the batter manages to complete, drags his bat into the line, and one more single added to total. It's a 5 on the board without loss of any wicket. So Mukhtar will go into ball from the far end. From the big banner, the advertisement banner of Abdul Latif, who are the respected member of this Mangalore City Corporation. This time he swings, but straight to the fielder. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. You can say that that was a very good connection. Have a look at it on a replay. Mukhtar balled that line, which is on the middle stump, and he just swings that one. Unfortunately, ball went straight to the hands of mid-wicket. It always going to be a frustration for the batter when you got the connection but fails to get the placement right. And wicket number 1, which is back into pavilion of Moby Hub. It's 5 for the loss of 1 wicket. And absolutely, it's a big blow. One of the very good performer from the bat. Nawaz has got a fantastic tournament in the DPL season 2. He's back into pavilion. Now all-rounder Aziz came to bat here with some responsibility. He's a busy customer, and wait and see how he'll going to contribute. And Mukhtar will go into ball from the far end. Right arm over the wicket. Lovely delivery indeed. Absolutely perfect stop there from very young talented Mukhtar. 1 over completed. Good over, excluding some wide deliveries. He bowled excellently well. And chasing 47 to win this match. Moby Hub searching for the right track. It's 5 for the loss of 1 wicket.
Change in bowling. Looks like Nawaz, who batted very well for his team, will go into ball to Nawaz. Nawaz to Nawaz. And first ball, straight to the hands of short mid-wicket, but fails to stop the single by that fielder. And Nawaz picked up a single scope and moves on to 6 on the board. Nawaz from the far end. Second over of the power play. This time again Aziz went for the big swing of the bat. Again he missed it completely by the flight and a turn from Nawaz. Ball just fractionally missing the stumps. And excellent delivery indeed from Nawaz. Again Nawaz from the far end. Balls and this time Aziz left the ball, seeing that ball just going down and further away. White call by umpire Salim. And with that extra score, moves on to 6 for the loss of 1 wicket. Aziz again not really near the line of the ball, and the line which is outside the line of off stump, but Aziz wanted to swing that on the onside region. Maybe he's targeting towards long on and mid wicket region. But I just mentioned earlier, it's an overcast condition. Ball which is not really coming to the bat. Soft in the nature as well. And a good condition for the bowler to bowl. Again, swings and missed. Wicketkeeper this time, Mukhtar misses it completely from his hand. By call by umpire. One more addition to total with the addition of that single score. Moves on to 8 on the board for the loss of 1 wicket. Latecomers, you are watching match number 3 of Dubai Market Premier League 2023. This time he lofted. He's got a proper connection. That ball went many miles for a huge one. So waiting and waiting and waiting is all over here from Nawaz. Have a look at the connection there. Absolutely sweet connection. And the ball went a long away from the boundary line. Into the road for a huge 6. 14 for the loss of 1 wicket. Nawaz from the far end. Wanted to sweep the ball. Again the line which is outside the line of off stump. He wanted to drag that one from outside the line of off stump. Missed it completely. Productive over for team of Moby Hub. After completion of over number 2. Chasing a total score of 47 to win this match. It's 14 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 7 runs per over. Now just look at the equation. The run required. 14 which is deducted from 47. That means they have to get another 33 runs to win this match in remaining 4 overs. And 24 deliveries remaining. 33 more runs required for the victory. Anything can be possible in present cricket. I don't think this difference will go into a big one, because if you get 1 or 2 good overs in favor of Moby Hub, they can back in the game. But even Team Matrix, they know that the power play which is completed, and now field will go into spread out, and it's not so easy to get the boundary. So time for Team Matrix to bowl some good overs. So altogether match is evenly poised. It's going to be anybody's game. Just have a look at the field set where we can see 4 fielders inside the ring, 1 at mid-wicket and find again third man and backward point. Long off, deep cover point, long on, mid-wicket and square leg. This time total misjudgment by Aziz. He thought it might be a wide, but ball just curving around his legs and spent into the hands of Nawaz behind the stumps. Mukhtar to continue from the far end. Right arm over the wicket delivers. Reverse strokes comes into play. Absolutely good connection. 1 bounce, 2 bounce into the fence for 4 runs. This is a quality reverse stroke came from the bat of Aziz there. Took his position so quickly and exquisite footwork and very good bat speed as well there from Aziz to get that one over the infield. And quick outfield is so quick here. Ball running down to deep backward point boundary for 4 runs. 18 for the loss of 1 wicket. So runs started to flow here for Mob Hub. So now they kept the field at the cover point to slit a bit finer. Inside out cricketing stroke there from Aziz to place the ball down to whitish
long off region. One more single been added to total, then score, but now moves on to 19 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. So that brings Nawaz into strike now. Nawaz. This time again, chip that one in there. Oh, there's a mix up. Oh, Nawaz, without seeing the fielder, he wanted to come back for the second, but his partner Ajay is quickly sending him back. Otherwise, a chance of run out there. 20 on the board for the loss of 1 wicket. Mukhtar. All right, I'm over the wicket bounce. Aziz again wanted to play the reverse stroke. Quite hardly got a connection, isn't it? Because line is not good enough for him to play such kind of cricketing stroke. But he's not really lost his confidence, where he just went on to play this unorthodox cricketing stroke. But managed to get the single there. 21 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Mukhtar. Very talented young bowler for the side, bowling right arm. Again swings and missed. Good over from Mukhtar, tidy over. The kind of over which is required for Team Matrix, and Mukhtar producing that a fantastic over. After completion of over number 3, it's 21 for the loss of 1 wicket. That means they're long way to go. 26 to get. In a remaining 3 overs. 18 ball, 26 to get. And looks like the match is evenly poised. It's going to be anybody's game. So for that remaining interesting 3 overs, I would like to call upon our interesting commentator, Mr. Gopi, to take over the microphone. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो जहां तक सवाल है इस वक्त 21 रन बनाने हैं, 21 रन बन चुके हैं, 26 रन बनाने हैं और 18 गेंदे 26 रन, 26 to get from 18 deliveries, exactly 8.33 runs per over. They have to score for victory with the help of 9 wickets they have to make, and 4th over starts in there. इस चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए अजीज। ये गेंद पहली गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, क्विकर गेंद थी, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, गेंद को इस वक्त खेला बैक टू द बॉलर की दिशा में और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था, कहना पड़ेगा गेंद टॉप एज पर टकराई, बैक टू द बॉलर की दिशा में पहुंची और फॉलो थ्रू में यहां पर गेंदबाज ने कोई गलती नहीं की और देखिए यहां पर टॉप एज पर गेंद टकराई थी, आसान से गेंद को लपक ले गया फॉलो थ्रू में गेंदबाज द्वारा। Millennium, after won the toss, they elected to field first against Max in the match number 3. That means that match is now coming up loud exclusively right after this match. तो यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा परीक्षार्थ समय, testing time continuing here for the batsmen of team Mobi Hub. Still they have a long way to go, 26 more runs now they have to score for victory और नए बल्लेबाज फारूक का आगमन यहाँ पर हो चुका है और वो इस वक्त सामना करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज असरार की ओर की अगली गेंद का। ये गेंद इस बीच बेहतर गेंद थी और जहां तक फारूक का सवाल है जो कि फ्रेंचाइजी के मालिक हैं, टीम ओनर हैं, जो कि इस वक्त बल्लेबाजी पर उतर चुके हैं टीम मोबी हब के और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। एक बार फिर से ये गेंद इस बार टॉप एज मौका, लेकिन फील्डर काफी पीछे और एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को उछालना चाहता ऑन साइड पर, लेकिन गेंद टॉप एज पर टकराने के बाद गई ऑफ साइड पर। बारिश लॉन्ग ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार असरार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इस बार दिस टाइम इज गॉट दैट वन, इट्स अ ह्यूज वन, इट्स अ बिग
Absolutely fantastic struck came from the bat of the batsman Nawaz. ऐसा कहना पड़ेगा. Have a look at this in the replay. He just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style lover long on fence for 6 runs. Much needed sixer came from the bat of Nawaz, and with that 6, this 6 keeps the hopes alive for Moby Hub now. 28 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, और रन्स अब चाहिए विजय के लिए 19, जबकि गेंदें बाकी हैं 13. 19 to get from 13 डिलीवर्स. एक और छक्का निस्संदेह पूरी तरह मोबी हब को इस मैच में वापस ला सकता है, लेकिन इस बार टॉपेज है. मौका लॉन्ग ऑन फील्डर के लिए और इस कैच को लपकने में सफल. लगातार दूसरा छक्का लगाना चाहा, लेकिन इस बार गेंद कुछ ज्यादा उछाल ली. एक्स्ट्रा बाउंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और टॉपेज पर गेंद टकराई और आखिरकार इस कैच को सफलतम लपक लिया गया लॉन्ग ऑन फील्डर के द्वारा. तो एक बेहतर पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है नवाज जूनियर की. 2 छक्के उन्होंने लगाए, 15 रन उन्होंने बनाए 2 छक्कों की मदद से, और एक बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेलने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए. और तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है. नवाज आउट फॉर 15 इंक्लूडिंग 2 sixes. He played a fantastic knock of 15 runs including 2 sixes, and after being playing a fantastic knock he is back to pavilion. तो 12 गेंदें बाकी, 19 रन चाहिए. 19 runs to get from remaining 12 balls. और चौथा ओवर, माफ कीजिए 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ. हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए. 12 गेंदें बाकी है, 19 रन चाहिए विजय के लिए. और पहली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, विकेट कीपर द्वारा अपील, लेकिन अंपायर ने कहा कि इट केम आफ्टर फर्स्ट बाउंस. तो सब कुछ सुरक्षित इस वक्त बल्लेबाज के लिए, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 28 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 28 for the loss of 3 wicket. 19 runs to get from 11 balls now. और अगली गेंद लेकर तैयार. Flighted, quick, absolutely brilliant piece of work made by विकेट कीपर behind the stumps, लेकिन बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर सुरक्षित, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए. तो निस्संदेह बेहतरीन विकेट कीपिंग यहां पर की थी विकेट कीपर ने, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, और इस वजह से उनके लिए कोई क्षति नहीं. डॉट गेंद, 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं गेंदबाज. 10 गेंदें 19 रन. सद्दाम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार बेहतर गेंद थी. एब्सोल्युटली गुड वन. दिस कुड बी अ चांस ऑफ रन आउट मिस्ड बाय विकेट कीपर. रन आउट का मौका था, लेकिन यहां पर गंवाते हुए विकेट कीपर उनका निशाना चूकता हुआ, और 1 रन लेग पाई के रूप में दोनों बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके. 9 गेंदें बाकी, 19 रन चाहिए, 18 रन चाहिए, माफ कीजिए. 18 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 9 बॉल्स. फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज, और अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. फ्लाइटेड, बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, परफेक्ट लेग स्पिन डिलीवरी, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज सद्दाम इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके. अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद फुल टॉस, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में असफल, और रन चुराने के हड़बड़ाहट में अपना विकेट यहां पर खो बैठे रन आउट के रूप में. काफी ढीली गेंद थी, लेकिन इस ढीली गेंद का फायदा उठाने में असफल. हालांकि सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था, चूके और गेंद को बिना देखे रन लेने के हड़बड़ाहट उन्होंने दिखाई. देखिए किस तरीके से हुआ था, और आखिरकार कोई मौका नहीं उन्हें वापिस लौटने का. 29 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका है. 7 गेंदें बाकी हैं. अब रन चाहिए 18. 18 runs to get from remaining 7 deliveries. और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. दिस टाइम इस बार रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला, और यहां पर विकेट गिर चुका है. विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट गेंद को फील्ड करते हुए विकेटों पर निशाना लगा, और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. बेहतरीन ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ 1 रन इस ओवर में सद्दाम ने प्रदान किए, और इस बेहतरीन ओवर के बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा टीम मैट्रिक्स का तख्ता और मजबूत हो चुका है यहां पर.
18 रन चाहिए अंतिम ओवर में, 18 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर। अब ऐसा कहना पड़ेगा जहां तक टीम मोबी हब का सवाल है, सिर्फ चौके या छक्के ही अब मोबी हब को सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और मैच निर्धारित ओवर देखते हैं कौन सा गेंदबाज इस वक्त फेंकते हैं। और 18 रन जो अंतिम ओवर में चाहिए, उन 18 रनों को बनाने के लिए टीम मोबी हब के बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं देखना पड़ेगा इस अंतिम ओवर में। और गेंदबाज के हाथों में गेंद इस वक्त सौंपी गई है। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, राउंड द विकेट कहना पड़ेगा, गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के। चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस वक्त बल्लेबाजों को। ये गेंद उछाला लंबोन पर और गेंद जी नहीं, सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है। जिस तरीके से गेंद को उछाला था, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकलते हुए, उससे पहले अंदाजा लगाया गया है कि गेंद शायद सीमा रेखा को पार करेगी, लेकिन गेंद अपनी रफ्तार को खोती हुई आखिरकार लपक ली गई लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में। देखिए किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। ही हैज हिट दैट वन हार्ड एंड हाई, बट नॉट सो पावर इन दैट स्ट्रोक टू क्लियर डिफेंस। और आखिरकार लॉन्ग के फील्डर ने एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका। तो 5 गेंदे 18 रन, लक्ष्य और भी कठिन यहां पर होता हुआ टीम मोबी हब के लिए। निजाम का आगमन यहां पर होता हुआ। निजाम, द न्यू बैट्समैन, इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। 18 रन्स टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 5 बॉल्स। और गेंदबाज आसिफ गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। फ्लाइटेड फुल टॉस, एक बार फिर से मौका हो सकता है लॉन्ग ऑन पर, और एक कैच आउट एक बार फिर से हो चुका है। फुल टॉस गेंद पर उछाला था, लेकिन गेंद हवा में डोलती हुई सीधे पहुंची लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में, और एक और विकेट गिर चुका है। 2 गेंदे 2 विकेटें, 4 गेंदे 18 रन चाहिए विजय के लिए। 18 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 4 डिलीवरीज। जाफर का आगमन होता हुआ और हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज आसिफ तैयार। ही इज ऑन अ हैट्रिक। Bowled him and he's got the hat-trick. He's got the hat-trick. 3 balls, 3 wickets and the first hat-trick of the tournament registered by Asif. 3 गेंदों पर 3 लगातार विकेट प्राप्त करने में सफल, और इस श्रृंखला का पहला हैट्रिक यहां पर प्राप्त कर चुके हैं आसिफ। और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा अब टीम मोबी हब की पारी लड़खड़ाती हुई, अंतिम अवकाश उनके सामने। द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ मोबी हब। 3 sixes रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग लास्ट 3 डिलीवरीज। 3 छक्कों की जरूरत बचे हुए अंतिम 3 गेंदों में। 18 रन चाहिए। अंतिम 9 गेंद में सिर्फ 1 रन प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज टीम मैट्रिक्स के, बेहतरीन कमबैक करने में सफल गेंदबाजी के जरिए। ये गेंद ऑफ द टोस गेंद को खेला, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। 30 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 2 balls still left in their innings. 2 गेंदे अभी भी बाकी, 17 रन चाहिए। 17 runs to get from remaining 2 balls। अगर इन बचे हुए 2 गेंदों में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो यहां पर टीम मैट्रिक्स की विजय निश्चित है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए। क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, और देखते हैं यहां पर अंतिम 2 गेंदों में क्या होता है। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाज तैयार। ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा। 1 + 1 2 runs now added to the total। 32 now for the loss of 8 wickets। 15 runs to get from remaining 2 balls। 2 गेंदे 15 रन चाहिए विजय के लिए। और गेंदबाज आसिफ फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, फ्लाइटेड डाउन साइड पर, गेंद को स्विंग किया, मिड विकेट पर मौका और बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कैच टेकन बाय द डीप मिड विकेट फील्डर।
जैसे ही उन्होंने कैच को लपका अपना संतुलन खो बैठे, गिरने ही वाले थे कि अंतिम क्षण में खुद अपने आप को संभाला और इस बेहतरीन कैच की बदौलत एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। 32 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था और जैसे ही गेंद जमीन पर टिप्पा खाए अपने आगे की ओर दौड़ कर आते हुए, जी तोड़ कोशिश करते हुए बेहतरीन तरीके से इस कैच को लपका। हालांकि अपना संतुलन जरूर खो बैठे लेकिन अंतिम क्षण में शरीर पर संतुलन बरकरार रखते हुए उन्होंने अपने आप को संभाला और बाखूबी इस कैच को कंप्लीट किया। 32 for 9. Last batsman is now comes out to the middle to facing a last delivery of their innings. अंतिम बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, होता हुआ अंतिम गेंद का सामना करने के लिए उनकी पारी का। सिद्दीक का अंतिम बल्लेबाज और अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। आसिफ डिफेंसिवली प्लेड। दैट्स इट। 14 runs comprehensive victory for Team Matrix against Team Mobi Hub, and with that 14 runs comprehensive victory they back the complete points and open their points account table. So match number 2 of this tournament is now comes to an end. दूसरा मैच यहां पर समाप्त हो चुका है। अगला मैच खेला जाएगा यहाँ पर मिलेनियम और मैक्स के बीच और मिलेनियम ने इस मैच में टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो के लिया है। तो एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे अंग्रेजी में मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ जब मैच नंबर 3 की शुरुआत होगी इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಗೇಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಾ
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಅದರ ಮಾಲಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಹನದ ಮಾಲಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So man of the match of this match award goes to none other than the bowler who took a hat-trick in the last over of the match. Asif adjudged the man of the match because of his fantastic bowling performance. He captured 4 wickets. He grabbed 4 wickets in his 1 over quota, including a hat-trick. And because of that, he is adjudged the man of the match. I request Asif for Team Metrics, please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizer. Asif of Team Metrics, please receive the man of the match award. Thank you. So thank you very much, Gopi. So we are into the third match of the day, and Max Challengers takes on Millennium Strikers. After winning the toss, Millennium Strikers selected to field first. Here is the first ball. Starts with the warm-up delivery of the morning, and wicketkeeper misses it, and both the batters grabs the opportunity to complete the single, and 2 wides to start with, 2 without loss of any wicket. Team Max Challengers. Millennium Strikers captain won the toss, field first. There is a fielder in the mid-wicket and long on, the 2 fielders outside the circle. Saif is on strike, left arm round the wicket, wanted to sub the ball, not getting that one from the middle of the bat. So wicketkeeper behind the stump, quickly moving towards his direction and denying the single from this to batter. Yashir tried to give the good start in his first over. Power play is always going to be a very key for a batting team to get some runs at the power play. So that need to be have some good kind of good bowler to bowl that power play. So Yasir trying for that. After that, first ball he bowled a wide, second is a very wide one. This time inside out cricketing stroke is trying for, but not there. Coming back for the second, but end which is choose to throw the ball, which is not right, I think so, because there will be always suitable for you to when you are try to return the ball towards your nearest end, that is the non-striker's end. But that fielder choosing a non-striker's end, so that the batter Saif picked up a couple of valuable runs. 4 without loss of any wicket. Left arm. Round the wicket, drives that one down to long on region. But ball defeating the infield. I think there is a fielder in the deep long on, but there is no long on, I think so. This is a really, I don't really understood that strategy from the captain of team Millennium Strikers not to keep that long on, and no one there in the deep long on region, but mid wicket is there, but it is he's just a spectator watching the ball going into the fence. Mid wicket and long off, in fact, the fielders in the deep previous delivery. 8 on the board. This time he went for the reverse sweep, but again the ball line is far outside the line of off stump, so that wide call by umpire. With the addition of that wide, Skobat Namuzan to 9 without loss of any wicket in the over. Number first is in progress. Next ball, the batsman nicely reverse sweeping that one. Will it going to be a boundary? No, one fielder behind that ball and manages. Oh, goodness, opportunity of run out. Direct hit, certainly going to be a run out. Looks like it's an improvising cricketing stroke which is played right in the third man region by Sahif. One more addition, 2 more to the total. Scored Namuzan to 11 on the board without loss of any wicket. Yasir again, left arm. Round the wicket, again making room to play the shot. Good piece of fielding there by the fielder, but not good enough to return the ball. It's after 1 bounce. And now it's a presentation of Man of the Match award for Nasir Asif for his outstanding bowling spell of 4 wickets in an 1 hour of Team Matrix. Again, the placement is so good. They wanted a second, but Saif
Doesn't look like he's much interested for the first over completed. Expensive over which is comes in, and after completion of a first over, total score which is 13 of team Max Challengers. 13 came from the first over. After that overcast condition, it's a bright sunny afternoon or morning, and time exactly 11 past 20, and looks like it's going to be a typical condition for the cricket. The month of December always in Mangalore, it's known for winter season, but no, we are not having that much of cold in this month of December, but we are feeling a lot of hot, and the condition of this cricket tournament is also becoming very hot match after match. Each and every team wants to be in the knockout stage. This time, a beautifully balled, perfect start for the over number second. First delivery itself, the bowler right on the money. Taru bowls a beautiful incoming delivery. The batsman left gap between right and gap between bat and pad. Of course, there's a misreading the turn of the delivery, isn't it? The action of the bowler looks like he's a bowling leg spin ball, but ball which is a different one, wrong one. He bowled the wrong one. The batsman completely misreading that turn and left the gap between bat and pad, and ball hits the stump. Good start there from the bowler Taru. It's 13 for the loss of 1 wicket. So new batter in is slowly walking towards the middle with just number 29. Akram to ball, round the wicket, going for the sweep shot, misses the line completely. Wicketkeeper did the rest, back to bowler. Again Taru is in operation, round the wicket. Again nicely placed. Down to backward point. They're coming back for the second. Again, the slight bit of a misfield there by the fielder. They're grabbing the opportunity very well to come back for the second. Now, umpire asking Saif, not Saif, his partner, Akram, not to run between the not to run in the middle of the pitch. 2 warning has been given, so run will not be given afterwards if he continues the same mistake. It's 15 for the loss of 1 wicket. Swings is hard, and he got the distance. That ball is went out of the park. You can't do the mistake by bowling that line, isn't it? Short and outside the line of leg stump. Have a look at that one. Short pitch outside the line of leg stump. All the time in the world for the big hitter Akram to swing that one into the deep square leg boundary for a huge 6. And scoreboard jumps into 21 now for the loss of 1 wicket in the over numbers. Second is in progress. Again he swings. This time it's going to be a 1 more 6. This time is a faster and quicker one, and is a flatter one. Unbelievable struck here from Akram. Just a flick of the wrist which comes into play. Have a look at the stroke. Have a look at that one. Absolutely unbelievable. The roll of the wrist, and ball went into the fence in a flatter version. 2 sixes in a row. 27 already on the board for the loss of 1 wicket. Taru, after he got a good start from the bowling, but finished badly. 1 more full toss delivery, and he's driven that one to mid-wicket region, coming back for the second before the fielder returns the ball. Couple of runs has been taken there. Expensive second over again completed. 2 gone. It's 29 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 4.5 runs per over. And Akram, the batter, who hits 2 sixes in that over. Now slight a bit of frustration for the the captain of Millennium.
So next match, match number 4 will be played between Team Sports World versus Mobi Hub. So that I request both the teams player complete the formalities of the signatures as soon as possible and complete signatures as well and complete tossing ceremony as well. Third over will going to start and bowler Nazir will going to start. Nasir. Nazir to ball a third over to Shaif. And across the line, wanted to swing that one, Shaif. That is a good line to ball to the right-handed batsman, just leaving from the good land spot, away going delivery. And he missed it completely, Saif. Nazir, team owner as well of Millennium Strikers. Again, that ball which is almost around the off stamp. Shaif again now drags that one from outside the line of off stamp and couldn't manage to get the placement. Mid-wicket fielder fields the ball back to bowler. Nazir again back to his bowling mark. Runs in, bowls again, nicely bowled. 3 consecutive dotted deliveries. The good start from the team owner is not only the team owner, is a very good performer from the bowling, leading from the front. You know exactly need to restrict the runs of their opposition after that 2 expensive over. This is turning out to be a quiet over so far. Again, looking for the mighty stroke, but not quite getting a connection proper. Shaif mistimed, just a single there. With a single first run of this over, and scoreboard now moves on to 30. So 2 balls remaining in this over, but now we need to ball to Akram, one who got already 2 sixes under his name, especially in the previous over. Can he able to continue that aggressive batting in this over? Nazir will going to continue. Nicely bowled, very good line to ball. He knows that what is the potential of Akram. Is a very good striker of the ball in the onside region. So it's no run because 2 warning which is already given to Akram. He continuing the same, so that umpire saying that no run which is given because of continuation of that mistake. Again they wanted a single. Oh my goodness, Saif sacrificing his wicket. What a fantastic over from Nazir. Being the owner of the team, he just doing the right job. The wicket of Shaif is back into pavilion. It's 30 for the loss of 2 wickets after completion of over number 3, and before the over number 4 will go into start here. I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you. धन्यवाद सतीश. So Max Challengers looking in a good situation. It's 30 for the loss of 2 wickets after completion of halfway. 3 overs completed, 30 on the board, 2 wickets lost and 3 overs to go in the innings. 3 ओवर का खेल बाकी और लेकिन बेहतर स्थिति में इस वक्त मैक्स चैलेंजर्स नजर आता हुआ और मुश्ताक नए बल्लेबाज का आगमन जो कि यहाँ पर हो चुका है और गेंदबाज अब्बू इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए. धूप अब मैदान पर प्रकट हो चुकी है. सुबह से बदली भरा वातावरण छा चुका था, लेकिन अब सूरज जब बादलों के आड़ से निकलकर अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और धूप की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ते हुए, तो
इस बीच फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात, कोई डीप कवर पॉइंट मौजूद नहीं, कोई डीप बैकवर्ड थर्ड मैन मौजूद नहीं। ऑफ साइड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए पहली गेंद फुल टॉस, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में असफल। नो बॉल का इशारा अंपायर का इस बीच, और नो बॉल के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, लेकिन इस गेंद पर फायदा उठाने में असफल रहे और गेंद सीधे पहुंची बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करने के बाद विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। और फिर से एक बार गेंदबाज अब्बू गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, बेहतर गेंद थी, लगभग जमीन के सहारे गेंद टर्न लेती हुई आई थी, अंतिम क्षण में गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी, ड्राइव किया गेंद को इस वक्त, नॉट क्वाइट मिटिगेटेड द लास्ट मोमेंट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार अब्बू फील्डिंग का मुआयना यहां पर करते हुए और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक फील्डर को इस वक्त तैनात तक किया जा रहा है। डीप मिड विकेट मौजूद, लॉन्ग ऑन काफी वाइडर, डीप थर्ड मैन ठीक सीमा रेखा के पास तैनात दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और अब्बू एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, जबकि डीप थर्ड मैन फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है शॉर्ट थर्ड मैन पर। और अब्बू अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर, गेंदबाज खुद जब तक वहां तक जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर मौजूद और फील्डिंग में जमावट एक बार फिर से फील्डर यहां पर करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं मुश्ताक और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अब्बू की गेंदों का। दाहिने हाथ राउंड द विकेट अब्बू की गेंद, यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे, रनआउट का खतरा इस बीच, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे विकेट कीपर द्वारा गेंदबाज के हाथ में, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 34 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर, लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज अब्बू गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फिर से एक बार फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर करते हुए और अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया, लेकिन ओ मिसफील्ड इस वक्त और गेंद सीधे उनके टांगों के बीच से निकलकर सीमा रेखा को पर टकरा चुकी है। हालांकि लगभग गेंद काफी तेज रफ्तार के साथ उनकी ओर आई थी। देखिए रिप्ले पर कैसा हुआ था, गेंद को इस वक्त देखिए किस तरीके से स्विंग किया था, इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ा था और गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची, लेकिन गेंद में इतनी ज्यादा रफ्तार थी कि गेंद उनके हाथों को वंचित करते उनके पैरों के बीच से निकल गए और इस बार मिड विकेट पर और कैच को लपकने में सफल। फुल टॉस गेंद पर गेंद को पुल तो जरूर किया था, लेकिन डीप मिड विकेट पर जो फील्डर मौजूद थे उन्होंने अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका और इसी के साथ ये तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका। तो 4 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है, 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 8 रन पिछले ओवर में बने अब्बू के और 4 ओवर के बाद 3 विकेट होने के बावजूद इस वक्त एक सुस्थिति में नजर आता हुआ यहां पर मैक्स चैलेंजर्स 38 रन जोड़ चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ अल्फाज नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के गेंदबाज जो कि नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए 77 नंबर की जर्सी यहां पर पहने हुए गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई, धूप की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहां पर बढ़ती नजर आती हुई। सुबह के 11:35 यहां पर बज चुके हैं और
इस भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए, जो कि गिने चुने मात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं। और एक अगली गेंद, पहली गेंद, ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद फुल टॉस, टॉप एज, मौका हो सकता है मिड विकेट फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल, एक बेहतर जजमेंट के साथ। ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता लेकिन गेंद टॉप एज पर टकराई, काफी ऊंची उछली और आखिरकार डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर के दरमियान जो फील्डर मौजूद थे उन्हें कुछ ज्यादा मेहनत मुशक्कत यहां पर करनी नहीं पड़ी इस कैच को लपकने में। और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है, एक बेहतर जजमेंट के साथ फील्डर ने इस कैच को लपका। 38 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका। 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। तो मैक्स चैलेंजर्स के नए बल्लेबाज, नंबर 6 बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतरते हुए और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए और गेंदबाज इस वक्त तैयार। नजीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है रमीज, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और नजीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 39 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और नजीर फिर से एक बार यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद स्विंग किया मिड विकेट पर, मिस जजमेंट और गेंद को रोका गया इस वक्त टीम मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर। पहले सोचा कि गेंद तक पहुंचा जाए, कैच लपका जाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पापा की गेंद के आगे टिप्पा खाने वाली है, अपने दौड़ को रोक लिया, लेकिन तब तक गेंद टिप्पा खाने के बाद उनके सिर के ऊपर से निकल चुकी थी और दोबारा पीछे की ओर दौड़ते हुए काफी मेहनत मुशक्कत करने के बाद गेंद को उन्होंने ढकेला सीमा रेखा के अंदर। हालांकि खुद सीमा रेखा से बाहर चले गए, लेकिन उससे पहले गेंद को वो ढकेलने में सफल सीमा रेखा के अंदर बेहतर तरीके से। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 3 रन प्राप्त करने का। 42 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अगली गेंद लेकर नजीर दाहिने हाथों पर विकेट, ये फुल टॉस पुल किया, लेकिन इस बार मौका जरूर है मिड विकेट फील्डर के लिए और इस कैच को लपकने में सफल। शायद थोड़ा सा भी मिस जजमेंट होता तो इस कैच को, गेंद उनके हाथों से छूट सकती थी। देखिए आसान सा कैच था, लेकिन काफी अंतिम क्षण में गेंद को यहाँ पर अपने नीचे की ओर हाथ लाते हुए लपका था और आखिरकार यहाँ पर गेंद उनके हाथों में अंतिम क्षण में बैठ गई। तो एक और विकेट गिर चुका है। 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 42 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 7 बैट्समैन नाउ। जकवान नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ और वो इस वक्त सामना करेंगे नजीर की गेंदों का। नजीर 3 गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं और अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए जकवान सामना करने के लिए तैयार नजीर की गेंदों का। यह गेंद ऑन साइड पर, गेंद को इस वक्त उछाला, ठीक तरह से उछाल नहीं पाए। डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 43 रनों पर। इट्स 43 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और नजीर एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए जकवान ऑफ द स्ट्राइक यहां पर हो चुके हैं। ये गेंद उछालना चाहा, रन के लिए काफी आगे निकल आए, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद को वहां पर गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने वाले हैं और आखिरकार रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। और फिर से एक बार नजीर अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार उछाला लंगोन पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 44 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 5 overs completed, 44 on the board, 5 wickets lost and now just a last over to go in their innings। अंतिम ओवर का खेल बाकी अब उनकी पारी में।
अगला मैच टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड विल टेक्स ओवर टीम मोबी हब इन द नेक्स्ट मैच एंड बिकॉज ऑफ दैट आई रिक्वेस्ट द कैप्टन्स ऑफ दीस टू टीम्स टू प्लीज रिपोर्ट टू द स्टेज इमीडिएटली फॉर टॉस ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಮೋಬಿ ಹಬ್ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟೀಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಮೋಬಿ ಹಬ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. तो अंतिम ओवर अब शुरू होता हुआ उनकी पारी में और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, एक रन का इजाफा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 45 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. 45 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th एंड द लास्ट ओवर ऑफ देयर इनिंग्स. गेंदबाज शमीर, यह गेंद बेहतर गेंद उनके पैरों के बीच से निकली, पूरी तरह स्टंप से एक्सपोज करते हुए गेंद को साइड पर उछालना चाहता चूके और गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है 45 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद, यह गेंद पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर, ऑफ कटर गेंद थी और आखिरकार एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. टाइम्ड आउट इस बार उनके निर्धारित समय जो कि समाप्त हो चुका है और एक फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जा रहा है. तो इस बीच 3 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी और समीर फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार और दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए ऑफ कटर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, wide 47 now for the loss of 5 wicket. 6th and the last over in progress in their innings और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. यह गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. प्लेसमेंट गलत है और भुगतान यहां पर बल्लेबाज को करना पड़ा. 47 for 6. 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में. जस्ट 2 balls left in their innings. Two balls left in their innings और गेंदबाज तैयार. ये गेंद बेहतर ऑफ कटर गेंद, पैरों पर गेंद टकराई और विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे जरूर लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था लेग बाय के रूप में 1 रन चुराने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर. 48 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट. द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. अंतिम गेंद लेकर तैयार गेंदबाज. यह गेंद उछाला लेकिन मौका जरूर है डीप मिड विकेट फील्डर को कैच लपकने का और इस कैच को बखूबी लपकने में सफल. और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप. द स्टिपुलेटेड ओवर्स आर कंप्लीटेड एंड मैक्स चैलेंजर्स आफ्टर बीइंग लूजिंग द टॉस एंड पुट इनटू बैट बाय मिलेनियम स्ट्राइकर्स इन द थर्ड मैच ऑफ दिस प्रेस्टिजियस cricket tournament. They finished with 48 for the loss of 7 wickets in the stipulated 6 overs and now the target for Millennium Strikers is 49. In 6 overs they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them 49 रनों का लक्ष्य, 49 the target. 6 ओवर में इन 6 ओवर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री और उनके पार की शुरुआत होगी यहाँ पर चंद लम्हों बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से अंग्रेजी में सतीश के साथ जब मिलेनियम स्ट्राइकर्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू.
So, yes, now it's time for the chasing here. Before that, I would like to welcome our respected chief guest for today's match, Mr. Dilip of Mahadev Telecom, Dubai Market. I request, sir, please come and have a seat in our main stage. ಮಹಾದೇವ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ದಿಲೀಪ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. आपको हम दिल से स्वागत करते हैं. महादेव टेलीकॉम के मालिक दिलीप जी को कृपया करके आप स्टेज में जाके अपना आसन ग्रहण कीजिएगा. So everything is ready here for the chasing. 49 to win the match for team Millennium Strikers to get their first victory of the league stage matches, and wait and see how well they are going to get this 49 to win this match. Sultan is on strike, and the bowler Mustaq will going to start the proceedings. Beautifully bowled, perfect one, equally well played there by Sultan. Almost covered his stump, and bat which is coming right into the line of the ball. Just a roll of the wrist which is comes into play to pick the single, and Sultan is off the mark with a 1. And the scoreboard now there started their journey, 1 without loss of any wicket. Abu will go into face his first delivery. Mustaq second time in this over. Right arm over the wicket. First ball itself he wanted to play unorthodox cricketing stroke, that is a reverse sweep, but missed it completely. Then wicket keeper behind the stump did the rest. Back to bowler. So that maybe that fielding restriction in the power play will encouraging the batter to go for the reverse sweep. There is no fielder in the third man. The only 2 fielders outside the circle, one at mid wicket and long on, wideish. And here is again batsman bowler coming round the wicket and bowls a wide, and it's absolutely big wide. One more addition to total addition of that single score, but now moves on to 2 on the board. Mustaq again, round the wicket he bowls. To Abu. Again missed it completely, and the wicket keeper also missed, and third man fielder also managed to field the ball. So I request Dilip sir, please have the sit. Oh, beautifully ball. Absolutely. That ball pitched a little bit outside the line of leg stump, and batsman Abu looking for the expansive drive, but missed it completely from the bat, and there is no chance at all for any run. 2 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Mustaq has got a very good start from the ball. Round the wicket balls. This time he swings and swings it out. What a shot! That ball went like a tracer bullet. The moment that ball left the bat of the batter Abu there, everyone realizing that ball which just came right from the middle of the bat. And you can't do the mistake in the power play overs bowling that line. Have a look at the swing of the bat. Absolutely perfect one. Ball just disappearing out of the park. And that's the kind of blow which is badly required in this over. Didn't got enough runs on the board, but that 6 brought team Millennium into the game, especially in this first over of the power play. Scoreboard is 8 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Mustaq again now round the wicket.
Delivers again, opening the face of the bat, just steering, guiding that one down to third man region, short third man region. One more single. First over completed. Completion of first over, chasing 49 to win this match. And then Millennium are 9 on the board without loss of any wicket. That means they needed another 40 runs to win this match. And the remaining 30 deliveries. The difference between run and ball, exactly the 10. And wait and see, will it going to be a big difference or not? Meanwhile, after this match, match number 4 will go into play between Team Sports World against Moby Hub. And of course, Sports World, they won their first match against Mahi Strikers. And of course, Moby Hub, they lost their first match against Team Matrix. So winner versus loser, the next match. Team Sports World versus Moby Hub. Please get ready, complete the signatures as soon as possible, and tossing ceremony as well. This time the batter Hub wanted to get one big shot again, but this time not quite getting hold of that one properly. And mid-on fielder fields the ball. No run. Ramesh balls this time, Abu swings, but the fielder will going to get there, I think so. Yes, he does. Good judgment by the fielder at long on. And looks like at once the ball will going to clear the ban. But the fielder is taking a right position and a right judgment. We can see it in the replay. How well that fielder takes that catch. Swings, short pitch delivery. Not really getting that much of timing, isn't it? Otherwise he can hit the ball out of the park. And have a look at the effort from that fielder. Absolutely good judgment, isn't it? Otherwise it's going to be a 6. But the wicket number first, which is back into pavilion of Team Millennium. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೋಬಿ ಹಬ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ Moby Hub as well as Team Sports World, kindly request you to report here in commentary box for the tossing ceremony. Ramesh to continue. This time inside out, just going over the top of the infield, and enough time for the batter to come back for the second. Sabir. Oh my goodness, absolutely unnecessary, isn't it? So no chance at all for the third run. Sultan is turning out for the third, but Shabir is not interested, rightly so, because the ball is in the hands of the fielder. And very, very unfortunate for Team Millennium. They lost their second wicket in the form of run out, and no understanding. You can see it in a replay. 11 for the loss of 2 wickets. The batter, new batter, please enter the ground quickly. Please don't waste the time. Nazir, the owner of the team, will going to join Shabir, and famously known as a Nachi, is with the nickname. Bowled well, but need to bat well if his team is wanted to win this match. Again, along with the Shabir, one more good striker of the ball will go into face. Next delivery, Ramesh. This time, chip that one over the infield. That was a handy looking drive. One bounce into the fence for 4 runs. This is absolutely handy. You know exactly that the mid-off and long-off is mid-off and mid-on is inside the ring. Once you get over the top of that fielder and have a look at it, quite deliberately chip that one, Shabir. This is really a clever cricket there from Shabir. One bounce into the fence for 4 runs. It's 15 for the loss of 2 wickets. Absolutely, it's an easy pick for some time when you're not having a long off and long on. The batter like Shabir will not going to give that opportunity, will not going to miss that opportunity to go over the top. Such a useful cricketing stroke there from Shabir. 15 for the loss of 2 wickets. Over number second is in progress. Ramesh again. Right arm over the wicket. Ooh, across the line. One more short pitch delivery. Shabir swings at one, but he's not happy with himself. He knows exactly if he had got a proper connection, he can get one more boundary there into fine leg. There's no free fine leg, isn't it? One more single added, total addition of that single score, but moves on to 16 for the loss of 2 wickets. Oh, too much far. He's just standing away from the stumps once he wanted to play. Misjudgment by the batter.
and Nachi missed it completely. Then over number 2 completed after completion of 2 over, chasing 49 to win this match. Millennium Strikers are 16 for the loss of 2 wickets. They're going exactly 9 runs per over. .33 required now. In remaining 4 overs, 24 deliveries remaining. 33 more runs required for the victory. The 9 which is the difference between run and ball. And just over 8 runs per over is the required run rate. The next match tossing ceremony is going on here between Team Sports World versus Moby Hub. Toss is in progress now here in commentary box, and a toss which is won by Team Sports World captain. They're yet to decide whether bat or ball first. But here is the third over going to start. Needed some kind of restriction here for max challengers if they wanted back in the game. Mustaq to continue. 9 runs which is came in the last over. Bowling is second and last over of his quota, and power play which is completed. Right arm round the wicket. Always happening, isn't it? Sometime excitement, leg by call by umpire. And absolutely, if it is a leg before wicket, the batsman finding his front foot right in front of middle stump. And fortunately for the batter, they knocked leg before wicket. One more single in the form of leg by. It's 17 for the loss of 2 wicket. Mustaq again back to his bowling mark. This time slashes that one over the infield, but there is a field in the deep, so that Nazir has to settle for the single there. With that single, Skobada moves on to 18 for the loss of 2 wicket. 31 to get, and remaining 22 deliveries. Mustaq. Shabir nicely played, well behind the line of the ball. Good placement between extra cover and the bowler. Huge gap, and he picked up a single there. 19 for the loss of 2 wicket. 30 to get. 21 balls remaining. Mustaq so far bowled a very tidy line, and round the wicket is operating. Drives again for a single, not more than a single. Good piece of fielding there by that mid-wicket fielder. Quickly moving to his left to stop the ball. And Nasir have to settle for the single. Both the batters are dealing with the singles in this particular over. They're quite understandable, as Mustaq is not giving any opportunity at all for the batters to freeze their arm. 20. 29 more runs required for the victory. 20 balls remaining. Again going for the big shot on the onside region. No contact with the bat. Dotted delivery will going to create the problem for Millennium Strikers to reach the target of 49. So far it's a good over there from Mustaq. Tidy over. Just 4 from that over. 1 in the form of leg by. 3 from the bat. Went for the reverse save. Deflected from the leg, and the fielder just got a leg onto that, and it's bowled him. In fact, it's bowled him. Balled out. That ball looks like I want to see it in the replay. What really happened? Have a look at that one. Mustaq round the wicket balls. Went for the ball just passing between the 2 legs. This is the bat which is nowhere near the line of the ball. Ball just kissing the up stumps. Now the bills dislodged, and Shabir back into pavilion, unfortunately. It's a 20 for the loss of 3 wicket. 3 overs completed, and 3 remaining, and 29 runs required for the victory. And 18 ball 29, Gopi. It looks like the run rate required is almost, looks to be a difficult task but not impossible. Almost 9.5 runs per over is the required run rate. And I think one good partnership, and partnership with some boundaries and sixes, which is badly required for team Millennium Strikers if we wanted to win the match.
एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त 29 रन बनाना है 3 ओवर में और दे डेस्परेटली नीड कप ऑफ बिग स्ट्रोक्स एट दिस स्टेज टू गेट बैक इनटू दिस मैच। द प्रेजेंट सिचुएशन शोज फॉर देम। और जहां तक सवाल है इस वक्त 29 रन चाहिए, 18 बॉल्स एंड 29 रन, एग्जैक्टली 9.66 रन पर ओवर द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम। और ऐसा कहना पड़ेगा चौके और छक्के यहाँ पर बल्लेबाज को लगाने होंगे अगर उन्हें इस मैच में कम बैक करना है। तो जैसा कि आपने फरमाया सतीश, तो यहाँ पर 20 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर और चौथा ओवर यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ। गेंदबाज अल्फाज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। पहली गेंद ड्राइव किया इस वक्त, स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद पहुंची इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। वहां पर बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यशस्वी तब दूसरा रन यहां पर प्राप्त कर चुका। शायद वहां पर कुछ जरूर हुआ था, जिस तरीके से गेंदबाज और फील्डर ने वहां पर चिल्लाकर कुछ कहा वडिश लॉन्ग ऑफ फील्डर से, तो यहां पर 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 17 गेंदें बाकी, 27 रन चाहिए। 27 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 17 बॉल्स। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई और जहां तक सवाल है इस वक्त डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के फील्डर को इस वक्त बदल दिया जा रहा है और ओवर की अगली गेंद लेकर अल्फाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद बेहतर गेंद, इनसाइड आउट क्रिकेट खेलना चाहा, विकेट से हटते हुए स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 22 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। और चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर। फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, गेंद पहुंचे एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर वहां पर मौजूद, सिर्फ 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर। 23 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और इस बीच गेंदबाज अल्फाज गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करते हुए, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद और हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट होते ही फील्डिंग पे तब्दीली करना जरूरी बन चुका है इस वक्त मैक्स चैलेंजर्स के कप्तान के लिए। और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर अल्फाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चूके शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। रन्स इस वक्त चाहिए बल्लेबाजों को, मिलेनियम स्ट्राइकर्स के वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, परफेक्ट ऑफ कटर गेंद, गेंद का पीछा करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, तो स्कोर रुक चुका है 24 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in progress. Still they have a long way to go. In fact 25 more runs now they have to score for victory. और गेंदबाज अल्फाज फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद just gone for a wide swing, not succeeded. Once again a perfect off cutter delivery from the bowler. और चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 24 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को स्कूप किया जरूर, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद फील्ड हो, बल्लेबाज ने बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा दूसरा रन यहां पर प्राप्त कर लिया है। पहला रन काफी तेजी के साथ पूर्ण कर चुके थे और जैसा ही बल्लेबाजों ने देखा कि फील्डर जो कि गेंद का इंतजार कर रहा है एक्स्ट्रा कवर पर, तेजी के साथ दूसरे रन के लिए मुड़े और 2 रन यशस्वीतम यहां पर प्राप्त करते हुए। 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 4 overs had been bowled, 23 runs now they have to score for victory in remaining 2 overs. अंतिम ओवर बेहतर रहा जिसमें 6 रन सिर्फ गेंदबाज ने प्रदान किए और 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। अयूब और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज
तो फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई 12 गेंदें बाकी हैं, 25 माफ कीजिए 23 और रन चाहिए विजय के लिए। तो अयूब जो कि खुद अपने टीम के मालिक है, ओनर है, फ्रेंचाइजी ओनर है, तो वो इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अयूब नासिर जो कि बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, जो कि खुद यहाँ पर मालिक है मिलेनियम स्ट्राइकर्स के। इस बार बेहतर गेंद थी और गेंद इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर जब तक फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। 11 बॉल्स रिमेनिंग, 22 रन्स रिक्वायर्ड। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त अयूब यहाँ पर करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार तारू और गेंदबाज इस वक्त तैयार अयूब। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अगली गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को उछाला, फील्डर काफी पीछे तैनात, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यशस्वी दूसरा रन यहां पर प्राप्त करते हुए। फील्डर ने इंतजार किया था इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर पहले टिप्पे का, फर्स्ट बाउंस का, जब तक पहला टिप्पा खाने के बाद अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को एक हाथ से फील्ड करके थ्रो करे। बल्लेबाज के पास समय था बेहतरीन रनिंग विटेन के द्वारा दूसरा रन पूरा करने का। और फिर से एक बार गेंदबाज किया, गेंद फिर से एक बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन इस बार मौका और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। तो शायद यहाँ पर सूरज की प्रखर किरणें उनका आंखों में छुपी थी, लेकिन गेंद को उन्होंने अपने हाथों से जाने नहीं दिया और आखिरकार यह विकेट गिर चुका है। तारू की पारी समाप्त और 29 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका है। यहाँ पर मिलेनियम स्ट्राइकर्स संकट की स्थिति में नजर आता हुआ और इन संदिग्ध हालातों में नए बल्लेबाज के रूप में यासीर का आगमन यहाँ पर होता हुआ। यासीर द नंबर 6 बैट्समैन इज नॉट कमिंग आउट टू द मिडल फॉर मिलेनियम स्ट्राइकर्स और वो इस वक्त सामना करेंगे अयूब की गेंदों का। और अयूब फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर करते हुए, 9 गेंदें बाकी, 20 रन चाहिए विजय के लिए। 20 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 90 डिलीवरीज। चौके और छक्कों की सख्त दरकार इस वक्त बल्लेबाजों को मिलेनियम स्ट्राइकर्स के इस मैच में वापसी करने के लिए। फुल टॉस ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा, 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। लॉफ्टेड एंड अ चांस एट लॉन्ग ऑन और गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खा चुकी है। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, विकेट कीपर काफी आगे निकला है, ओवर थ्रो के रूप में तीसरा रन यहां पर मिलेगा और 3 रन यहां पर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। चौथे रन के लिए दिस इज एन एब्सोल्युटली फनी थिंग्स इज नॉट गोइंग ऑन देयर। जहां पर 2 रन बनना चाहिए था, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ, वहां पर 4 रन बने और बड़ी आसानी के साथ। तो यहां पर 2 के जगह 4 और इक्वेशन समीकरण आसान होता हुआ 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो यहां पर ओवर थ्रो हो चुका था, बैकअप हुआ और जैसे ही बल्लेबाजों ने फील्डर पर दबाव डालने के लिए चौथा रन दौड़ना शुरू किया, विकेटों पर निशाना दागा गया, लेकिन इस बार भी निशाना चूका और 4 रन आसानी के साथ यहां पर पूर्ण कर चुके हैं बल्लेबाज। फील्डरों पर दबाव डालने में सफल, 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 15 रन बनाने हैं, 8 गेंदें बाकी, 15 नीडेड इन रिमेनिंग 8 बॉल्स नाउ। एक छक्का निस्संदेह यहां पर मिलेनियम स्ट्राइकर्स को इस मैच में वापस ला सकता है। दबाव अब फील्डरों के ऊपर और गेंदबाज के ऊपर। अयूब गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 14 रन बनाने हैं, गेंदें बाकी हैं 7 और दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स अपने टीम का मनोबल बढ़ाते हुए, तालियों के साथ, सीटियों के साथ चिल्लाते हुए और यहाँ पर इस ओवर में अंतिम बार अयूब गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हैं। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ये गेंद लेग से बाहर, स्ट्रेट अवे, द प्रेशर ऑन द बॉलर, 1+1 2 रन एडेड और अब द टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग।
36, 13 to get, 37 in fact, 12 to get in remaining 7 balls. और दबाव स्ट्रेट अवे गेंदबाज के ऊपर, फील्डरों के ऊपर। और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंचे लॉन्ग ऑन पर, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, लेकिन इस बार दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। धीमा थ्रो पहुंचता हुआ नॉन स्ट्राइक रेड पर रहा है और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज ने बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए दूसरा रन प्राप्त कर लिया। देखिए किस तरीके से यहां पर गेंद का इंतजार करते रहे, गेंद को फील्ड किया, अंडर आर्म थ्रो किया इस वक्त, और जब तक गेंद नॉन स्ट्राइक रेड पर पहुंचे बल्लेबाज के पास समय था कि दूसरे रन के साथ अपने अपने छोड़ पर वापस लौट सके। 39, 10 रन टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर नाउ। मैं देखना चाहूंगा इस ओवर में कितने रन बने। 26 से 39 तक रन पहुंच चुके हैं, यानी 13 रन इस ओवर में बने। 13 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवर आई थिंक आई मस्ट से इन फैक्ट मिलेनियम स्ट्राइकर्स आर नाउ बैक ऑन द मैच। 13 रन बने पिछले ओवर में, 10 रन और बनाने हैं। 9 फॉर टाई, 10 फॉर विन एंड 6 बॉल्स लेफ्ट। और देखते हैं ये है कि मैच निर्धारित ओवर अब कौन सा गेंदबाज यहां पर फेंकने को उतरते हैं। अगला मैच टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड और मोबी हब के बीच खेला जाएगा और यहाँ पर टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड इस मैच में टॉस जीत चुके हैं उनके कप्तान, और इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों टीमों के सदस्यों से कि अगले मैच के लिए कृपया तैयार रहे। दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट आफ्टर वन द टॉस बाय टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड एंड आई रिक्वेस्ट बोथ टीम्स प्लेयर्स टू प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। 10 required, 6 balls remaining, 39 for the loss of 4 wickets, 9 for tie, 10 for win, 6 balls to go in their innings। और गेंदबाज अकरम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, पहली गेंद दाहिना तो राउंड द विकेट, फुल टॉस, पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर, और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट पर जब तक फील्ड हो, 1 रन, दूसरे रन के लिए दौड़ पर थोड़ी सी मिस फील्ड, बल्लेबाज तीसरा रन लेना चाहते हैं, थ्रो पहुंचा इस वक्त रन के लिए दौड़ पड़े तीसरा, और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। तो दोनों बल्लेबाज तीसरा रन दौड़ते समय टकरा गए थे आपस में। देखिए वहां पर हड़बड़ाहट होती रही और बल्लेबाज दूसरे रन के साथ तीसरे रन के लिए थोड़े झिझके बाद में दौड़े। अगर शायद पहले दौड़ते तो ये तीसरा रन पूर्ण कर सकते थे, और खासकर दोनों बल्लेबाज वहां पर टकरा गए थे और इसकी वजह से वो क्रीज तक नहीं पहुंच पाए और 2 रन पहली गेंद पर जुड़ा और 1 विकेट भी गिरा। 5वां विकेट गिर चुका है। 41 for 5, 8 required, 5 balls remaining। What a fantastic match is now progressing here। The pressure is now building up on both sides। विजय के लिए कड़ा संघर्ष इस वक्त जारी है। 7 for tie, 8 for win, 5 balls left, 5 wickets they got in their hand। Shamir wearing a number 18 jersey is now coming out to the middle to join Nazir now। और वो स्ट्राइकर इनकी ओर इस वक्त कदम बढ़ाते हुए। अकरम गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। 8 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी, और प्लेयर्स डगआउट से दोनों टीमों के खिलाड़ी और समर्थकों की आवाज इस वक्त सुनाई देते हुए अपनी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल इस वक्त तो बढ़ाते हुए। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली राइट डिलीवरी, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि 4 balls 8 runs, दे एक्सीडेड द टाइम लिमिट नाउ। तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। तो अब इसका लाभ किस तरह से बल्लेबाज उठाते हैं ये देखना पड़ेगा। 4 गेंदें, 8 रन चाहिए। 7 for tie, 8 for win, 4 balls left। और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलते हुए डीप कवर पॉइंट के फील्डर के इस वक्त थोड़ा सा आगे तैनात किया जा रहा है। और इस बीच गेंदबाज है 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया कवर पॉइंट पर, डीप कवर पॉइंट के फील्डर को कवर पॉइंट पर इस वक्त बुला लिया गया है। मिड विकेट फील्डर पीछे की ओर जाते हुए। 4 गेंदें, 8 रन। हियर वी गो, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ओ इस बार ऑफ से बाहर, वाइड। तेजी ज्यादा करने की कोशिश की थी। He's trying to play the extra quicker, he's trying to bowl an extra quicker delivery, bowled wide। इस बार टॉप एज, और इसी के साथ यह विकेट गिर गया। छोड़ते तो शायद वाइड हो सकता था वहां पर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंचना चाहा, गेंद को उछाला जरूर लेकिन टॉप एज पर। और यहां पर देखिए किस तरीके से हुआ था, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद थी। छोड़ते तो सर्टेनली दैट वाज एन वाइड, लेकिन गेंद तक पहुंचे, टॉप एज पर करेक्ट हुए और आखिरकार कॉटन बॉल यहां पर फॉलो थ्रू पर लपक लिया गया गेंदबाज द्वारा। अब गेंदें बाकी हैं 3, रन चाहिए 7। 6 for tie, 7 for win, 3 balls remaining in their innings। अभी भी मैच में कशिश बरकरार।
तो इंतजार है इस वक्त नंबर 8 बल्लेबाज का। तो सलीम का आगमन यहां पर होता हुआ नंबर 18 की जर्सी पहने हुए यूसुफ यूसुफ का आगमन यहां पर हो चुका है। हालांकि जर्सी उन्होंने सलीम की पहनी है लेकिन असल नाम है यूसुफ, जिनका आगमन हो चुका है। 7 रन चाहिए, 3 गेंदें बाकी। 6 रन बनाते हैं तो मैच टाई होगा, 7 रन बनाते हैं तो मैच में विजय रहेंगे। 3 गेंदें बाकी है और इस बीच गेंदबाज अकरम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद स्विंग किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और इस कैच को लपक लिया गया है। स्ट्रोक काफी बेहतर था लेकिन उतनी ही बेहतर कैच यहां पर लेने में सफल डीप मिड विकेट के फील्डर। थोड़ा सा भी मिस जजमेंट होता तो ये कैच छूट सकता था, लेकिन काफी तेज रफ्तार के साथ गेंद उनकी ओर आई थी और इस कैच को बाखूबी ओर लपकते हुए अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए देखिए किस तरीके से हुआ था। स्ट्रोक काफी बेहतर उछाला था लेकिन आखिरकार डीप मिड विकेट फील्डर ने बेहतर तरीके से इस कैच को लपका सीमा रेखा के अंदर। अब लक्ष्य कुछ हद तक कठिन। 7 रन चाहिए, 2 गेंदें बाकी। 6 फॉर टाई, 7 फॉर विन, 2 बॉल्स लेफ्ट। तो पहले 4 गेंदों में बेहतर गेंदबाजी इस वक्त की है गेंदबाज अकरम ने। सिर्फ 3 रन अब तक इस ओवर में वो प्रदान कर चुके हैं। हालांकि पहले गेंद पर 2 रन उन्होंने प्रदान किया था लेकिन उसके बाद बाकी के 3 गेंदें बेहतर फेंक चुके हैं। हालांकि एक वाइड जरूर इसके बीच इन तीन गेंदों के बीच उन्होंने फेंका है लेकिन बाकी के 3 गेंदें बेहतर फेंके हैं उन्होंने। 2 गेंदें 7 रन, 6 फॉर टाई, 7 फॉर विन। और इस बीच तैयार ये गेंद फुल टॉस, इस बार अंतिम गेंद ढीली गेंद थी। बल्लेबाज के पास काफी समय था कि गेंद को उछाल कर खेल सके लेकिन आखिरकार यहां पर गेंद को उछालने में असफल। देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था, फ्लाइटेड गेंद, फुल टॉस गेंद लेकिन गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए। अंतिम गेंद छक्के की जरूरत है, जीत के लिए नहीं टाई के लिए। 6 रिक्वायर्ड इन द लास्ट बॉल, नॉट फॉर विक्ट्री बट फॉर टाई। तो इस बीच गेंद की अगेन फुल टॉस, लेग साइड बॉल, बैकवर्ड स्क्वायर लेग एंड द मैच नाउ एंडेड इन अ टाई। और अंतिम गेंद पर हीरो बन चुके हैं यहां पर मुस्कित, जिन्होंने अपना पहली गेंद पर गेंद को डिस्पैच कर दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ द मैच नाउ एंडेड इन अ टाई एंड द पॉइंट्स हैज बीन शेयर्ड, अंक बांट दिए गए हैं। तो ऐसा कहना पड़ेगा इस श्रृंखला का पहला बेहतरीन मैच यहां पर समाप्त हो चुका है मैक्स चैलेंजर्स और मिलेनियम स्ट्राइकर्स के बीच में, जो टाई पर अंत हो चुका है। व्हाट अ फैंटास्टिक मैच केम टू एन एंड। अंतिम गेंद पर छक्का गिरा मिश्किल का, देखिए किस तरीके से उछाला गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान 6 रनों के लिए। और आखिरकार यहां पर मैच टाई पर समाप्त हो चुका है। बेहतरीन मैच, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मैच। स्पोर्ट्स वर्ल्ड आफ्टर वन द टॉस दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट इन द नेक्स्ट मैच। और अगला मैच यहाँ पर तो एक बेहतरीन मैच समाप्त हो चुका है और एक बेहतरीन मैच यहाँ पर शुरू होने जा रहा है टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड और मोबी हब के बीच में। टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत यानी मैच नंबर 4 की शुरुआत होगी इस श्रृंखला के अंतर्गत। तो अब वक्त है एक ब्रेक का एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
Thank you very much, Gopi. After that excitement match, the previous one, absolutely, it's one of the best match of the day, and match which is ended in a tie between Millennium versus Max. And the hero of that match, the batter who got a 6 in the last ball of the over and able to tie the match. And yes, his name is Mushpik, and that Mushpik name will going to be a viral tomorrow, no doubt at all. And of course, my friend Gopi's voice will going to become a viral. The kind of kind of treatment which is required for that last ball, and the same kind of the voice which is came from Gopi in that final ball of the over. Altogether is excitement finish, and good match which is ended in a tie. And now we are into the match number 4, and team Sports World, after winning the toss, selected to field bat first, still for correction, and that means Moby Hub will go into ball here. Very interesting decision. So umpire Salim saying that the match will going to start, and Aziz is in action to ball the first over of the innings of team Moby Sports World. And here is the first ball from the far end. Aziz bowls right arm over the wicket, and Nasir this time wanted to get that one into third man region, but misses the ball completely. Then the wicket keeper behind the stump also misses. Third man fielder fields the ball back to bowler. Aziz again back to his bowling mark with a fantastic bowling action with a good rhythm, and he bowls right arm over the wicket, delivers. This time tries straight to the hands of short extra cover. Slide a bit of mix up there for both the opening batters, because ball went straight to the hands of short extra cover because of that misfield by the fielder, and the batter Nasir managed to complete that single. Nasir played a good innings for his team in the previous match. And Aziz once again back to his bowling mark. Moby Hub, they faced a defeat in their first match. They need to win this match actually. The second ball, slightly but outside line of next time they're going for the single throw, which is not really good enough. And Nasir quickly calling his partner for the run, by call by umpire. So 2 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. 2 without loss of any wicket. Aziz again. Right arm over the wicket, went for the big shot, but got a single in the occasion, deflected from the bat. One more addition. Aziz will not go into bother about that singles. You know exactly the bowling in the power play over, and he wanted to restrict the runs in the form of boundaries and sixes. As Aziz again back to his bowling mark. Right arm over the wicket, pass umpire Salim. Delivers. Delicately played there by the batter. Interrogation. Razak. That is a good technique again from Razak. Just opening the face of the bat. Just giving the direction, isn't it? Towards the backward point region for a single. With that single scored Namuzan to 4 on the board without loss of any wicket. Aziz. Final time in this over. Right arm over the wicket bounce. This time went for the mighty drive. Missed it completely. Good over there from Aziz. Again, he producing a very good start for his team with the excellent first over. Just 4 runs came from that over. The 4 runs came from that over. So 4 in the first over, and Nawaz Jr. is in action now to bowl second over round the wicket to the right-hander batter Razak. Oh, nicely swept that one. Very fine indeed ball running down to deep fine leg boundary region.
They're coming back for the third in the negation and they succeeded. Excellent placement there from Razak. Just using that technique very well as far as a sweep is concerned. And one of the right technique to implement when the ball is bowling along the carpet, especially one of the trademark of underarm cricket, the sweep shot. And one more single, one more replication, 3 more runs to the total. Scoreboard is 7 on the board without loss of any wicket in the over number second is in progress. Nawaz, practice bowling mark. This time Nasir is the batter, is batting on 2 out of 4 deliveries. Going for the expansive right, not quite getting hold of that properly, but there will be a single for that for Nasir. With that single, Skubana moves on to 8 on the board. 8 without loss of any wicket in the over number second is in progress. Dubai Market, Premier League 2023, Season 3 is in progress. Lovely shot, beautifully swung that one into the square leg boundary for 4 runs. Lovely slog sweep shot here from Razak. Nothing much wrong with the line of that delivery, but a way that he hit the ball, absolutely delightful to watch. Have a look at that one. Absolutely perfect one. Just like he's cutting the wood from the blade. And what a fantastic struck here from Razak. Scoreboard jumps into 12 on the board. Again, nicely reverse swept that one down to third backward point region for a single. And with a single, Skubana moves on to 13 on the board without loss of any wicket. Good comeback here by the team, Sports World. This time bowler's back drive, but protection is there in the long off region. So batter have to settle for the single. And with that single, Skubana moves on to 14 on the board. 14 without loss of any wicket in the over number second is in progress. 11 already came from that over. It's an expensive over from Nawaz. Again, he missed it. Wicket keeper has a fumble, chance of run out, but a throw which is slight a bit of wider. So that by call by umpire, expensive over which is comes in handy off on Nawaz. After completion of over number 2, team Sports World are looking good in the second over. It's 15 without loss of any wicket, and 12 runs came from that last. 10 runs came from 15, and of course the 12 runs came from that over of Nawaz. 2 extras in that 13 runs, 12 runs in fact. They're going exactly 7.5 runs per over. So in our commentary box, myself Satish Salyan, Mr. Gopi, my long-time partner, and my left, our scorer, Mr. Swastik, and in the scoreboard, our respected senior-most Prakash in operation of a scoreboard. And in a live telecast, King Sports, they got some very good teams out here, the cameramans and the man who is in the mixing department so far did a great job. Thanks to King Sports getting such a good and quality live telecast of this cricket tournament. Dubai Market Premier League 2023 Season 3. No change in bowling. Aziz to continue from the far end. Right arm over the wicket. This time Razak wanted to get that one very fine by playing that reverse sweep, but missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Aziz is so impressive in his first over and bowled a tidy over, the over of just 4 runs, 3 runs in fact, 1 in the form of extra. And here is again the bowler right arm over the wicket, delivers. This time swept that one, ball is in there for a while, but oh my goodness, total misjudgment by the fielder. Frustration continues here for Aziz, just like in the previous match also. 2 missed chances in the first over. Here is what could be a certain single there. Have a look at the fielder. Oh my goodness, it's totally misjudgment, isn't it? Absolutely. Ball might be a little bit changing the direction, and but the D fielder have to be aware of that. And no excuse at all in that occasion.
frustration for the bowler. 19 on the board. Aziz. Again tries that one. Razak firmly. Ball will go and hit the dog. And the fielder from deep long on will go and cover quickly to stop the boundary. And very lucky because ball which is not really changing the direction after ball hits the dogs. It's always going to be a difficult time for the fielder in the deep. They need to avoid the dogs as well, along with the, of course, the collection of ball. Again, improvisation nicely. Once again, they're running hard between the wicket. Good placement, couple of runs. Rafi Razak is playing such a fantastic knock for his team so far. So 23 on the board without loss of any wicket. Excellent cricket so far here from Razak. Aziz again. Swept that one, very fine. Beautifully played that one. Will it go into be boundary? No, fielder is there in the deep final aggression. They come back for the second and they made it quite easily. Again, a good looking sweep shot there from Aziz. Razak is so good in that. And now it looks like he's a slight bit of feeling a tiredness, so calling, signaling to his dressing room to he wanted water. And after maybe this over, umpire will go to allow the water for Razak. And here is again Aziz bowls. Wicketkeeper missed it, and a third man fielder will go into collect the ball. No chance at all for any run. 3 gone after completion of over number 3. It looks like team Mobi a little bit Sports World are looking very good position. It's 25 on the board, and 25 in the sense they're going exactly 8.33 runs per over. And before the next over going to start, it's time for change in commentary box. It's time for Gopi to take over the microphone. And welcome, Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो एक बेहतर स्थिति में इस वक्त स्पोर्ट्स वर्ल्ड नजर आता हुआ 25 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और पहली गेंद लेकर तैयार, लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई और वाइड का इशारा। लगातार 2 वाइड गेंदों के साथ इस वक्त गेंदबाजी की शुरुआत कर चुके हैं इस वक्त गेंदबाज, और सही गेंद की तलाश में दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहना और क्वाइट मिड विकेट। इन फैक्ट दे गॉन थ्रू फॉर अ सिंगल, दिस कुड बी इन ट्रबल इफ द थ्रो वाज डायरेक्टेड टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन निशाना यहां पर चूकता हुआ और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर। दोनों आरंभिक बल्लेबाज नासिर और रजाक एक बेहतर जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए एक बार फिर से वाइड का इशारा। वाइड नंबर 3 इस ओवर में फेंक चुके हैं गेंदबाज फयाज, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 28 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 28 in fact. It's 29. विदाउट लॉस। तो इस बीच गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा। गेंद पहुंची शॉट थर्ड मैन पर, रन्स इस बीच नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 29 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 29 विदाउट लॉस, द स्कोर बोर्ड स्टेज एट। और इस बीच गेंदबाज फयाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद। क्लीन कलेक्शन, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज इस वक्त संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 30 रनों पर बिना किसी नुकसान के। एक बेहतर शुरुआत इस वक्त दे चुके हैं नासिर और रजाक, दोनों सलामी बल्लेबाज। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, नो इस बार मिसफील्ड। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन प्राप्त करने का।
अंतिम क्षण में गेंद से अपनी नजरें हटा ली थी और आखिरकार बल्लेबाज 2 रन यहां पर दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाज की गेंद इस बार ऑन साइड पर जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग एट द लास्ट मोमेंट, नॉट सक्सीडेड। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। अगली गेंद के लिए तैयार, इस बार उछाला लंगोन पर लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल। द बॉल स्ट्राइट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ फील्डर and finally the batsmen are settled with a single और 34 रन 34 without loss रन से इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए और ये गेंद ऑन साइड पर चांस ऑफ स्टंपिंग मिस्ड बाय विकेट कीपर एट द लास्ट मोमेंट। गेंद उनके हाथों से छूटी थी और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति हो चुकी है। 4 overs completed, 34 runs on the board, yet to lose a wicket. This is an absolutely good progressing year for Team Sports World after being won the toss and elected to bat first in the match number 4 against Moby Hub in this prestigious cricket tournament, Dubai Market Premier League 2023 DPL Season 3 2023। तो दोपहर का वक्त, अगर वक्त के बारे में अगर कहा जाए तो इस वक्त 12:35 यहाँ पर बच चुके हैं और सूरज जब बिल्कुल आसमान की बुलंदियों के इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता यहाँ पर बढ़ती हुई और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। और जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है तो आज सुबह भव्य उद्घाटन समारोह के बाद ये श्रृंखला, ये टूर्नामेंट यहाँ पर शुरू हुई और एक शानदार प्रगति ये श्रृंखला यहाँ पर करती हुई। अल्ताफ गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार दिस कुड बी गॉन ऑल द वे, नो इन फैक्ट इट टेकन, द बॉल लॉस्ट इट्स स्पीड एट द लास्ट मोमेंट। जिस तरीके से पहले गेंद को उछाला गया था उससे अंदाजा लगाया गया कि शायद गेंद सीमा रेखा को पार करेगी, लेकिन गेंद अपनी रफ्तार को खोती हुई आखिरकार लपक ली गई वाइड लॉन्ग ऑन पर। आई थिंक ही जस्ट प्लेड दैट वन अगेंस्ट द विंड, हवा के रुख के खिलाफ शायद इस गेंद को उन्होंने खेला था और गेंद अपनी रफ्तार को खोते हुए आखिरकार लंगोन वाइडिश लंगोन फील्डर द्वारा लपक ली गई सीमा रेखा के अंदर और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। नासिर की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। वेल सपोर्टिंग रोल केम स्टूडेंट फ्रॉम नासिर एंड स्पोर्ट्स वर्ल्ड आर नाउ लूज देयर फर्स्ट विकेट। इट्स 34 for 1। रिनो जो कि टीम के मालिक है, फ्रेंचाइजी ओनर है, इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए काफी जिम्मेदारियों के साथ और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप। तो इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद ड्राइव, इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े नजदीकी मामला, यहां पर निशाना चूक चुका है और आखिरकार बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। जोखिम भरा दूसरा रन, लेकिन जोखिम उठाया और यशस्वीतम दूसरा रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। तो स्कोर इन 2 रनों के साथ बढ़कर पहुंच चुका है। अब कुल मिलाकर 36 रनों पर 36 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। स्पोर्ट्स वर्ल्ड मैंगलोर की प्रस्तुति है ये क्रिकेट श्रृंखला और जहां तक सवाल है इस वक्त इस श्रृंखला का, इस टूर्नामेंट का, तो एक शानदार प्रगति यहां पर करते हुए ये टूर्नामेंट, ये श्रृंखला और मैच नंबर 4 इस श्रृंखला के अंतर्गत खेला जाता हुआ ड्राइव किया इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑन पर। गेंद पहुंची, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर 37 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। रन आसानी के साथ यहां पर बनते हुए बल्लेबाजों के लिए। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, तेज तरीके की विकेट कीपिंग, ऑफ स्टंप जरूर चटकाए विकेट कीपर ने, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। स्कोर रुक चुका है 37 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। अल्ताफ गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अंतिम बार तैयार और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए।
ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को निकाला इस वक्त फाइन लेग की दिशा में गेंद बढ़ती हुई, लंबा दौड़ फील्डर लगाते हुए, और जब तक गेंद को डीप फाइन लेग पर दौड़ लगाने के बाद फील्ड करे फील्डर सीमा रेखा के अंदर, बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का। 39 रन बन चुके, 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 overs completed, 39 on the board, 1 wicket lost with just a last over to go in their innings। अंतिम ओवर का खेल यहाँ पर बाकी, और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इस मैच के बाद straight away we are going to the match number 5 of this tournament. Max Challengers will take over team metrics in the next match, and because of that I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for the toss procedure. Max Challengers ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು. छठा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ, पहली गेंद टॉप एज, यहाँ पर मौका एक्स्ट्रा कवर फील्डर के लिए, और इस कैच को बखूबी पकड़ने में सफल अपने पीछे की ओर जाते हुए। एक और विकेट गिर चुका है, 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 5 balls नाउ रिमाइनिंग इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। 5 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में, और इंतजार है इस वक्त नंबर 4 बल्लेबाज का। तो 32 नंबर की जर्सी पहने हुए इस वक्त टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के नंबर 4 बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतरते हुए अंसार, और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, और गेंदबाज जो कि अल्ताफ इस वक्त नवाज माफ कीजिए, इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू कर चुके हैं अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अंसार के लिए अगली गेंद, इस बार ड्राइव किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, हालांकि गेंद हवा में जरूर थी लेकिन फॉलो थ्रू में गेंदबाज के पहुंच से बाहर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 40-40 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th एंड लास्ट ओवर ऑफ देयर इनिंग्स। गेंदबाज ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर क्योंकि वाइड का इशारा, 1 + 1 2 runs now added to the total, couple of runs added, 2 gifted runs added to the total, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर। 42 for the loss of 2 wicket in the over number 6th and the last in progress in their innings। अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त कुछ ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलती हुई, और गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ हद तक नीचे रहते हुए, और गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। और अगली गेंद, ये गेंद उछाला लंगोल पर, और गेंद इस वक्त लंगोल सीमा रेखा गेंद फील्ड कर ली गई, बेहतर फील्डिंग, रनआउट का खतरा, दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े, 2 कदम जरूर आगे बढ़ाए लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं। 43-43 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। स्टिल कपल ऑफ बॉल्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स, 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में, और गेंदबाज ये गेंद चूके, और इस बार रन नहीं मिलेगा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची, और इससे पहले कि विकेट कीपर विकेटों के पीछे कुछ करे, बल्लेबाज वापस बल्ला अपना क्रीज पर लौट रख चुके हैं, और अब अंतिम गेंद लेकर तैयार नवाज। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर नवाज तैयार, और इस बीच अंसार सामना करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 44 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। स्टिल द लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स, और अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद लेफ्ट, दिस टाइम आई थिंक इट्स गॉट द डिस्टेंस, यस इट डज, इट्स अ बिग and he just finished the innings in a style with a 6, and that 6 brings 50 up, exactly 50 runs scored by टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड। 50 रन, ठीक 50 रन इस वक्त स्पोर्ट्स वर्ल्ड जोड़ चुका है, और एक लंबा सा लक्ष्य इस वक्त वो रख चुका है टीम मोबी हब के सामने। तो यहां पर 51 रनों का लक्ष्य, 51 द टारगेट इन 6 overs फॉर टीम मोबी हब सेट बाय टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड, और 51 रनों के लक्ष्य तक 6 ओवर में जहां तक पहुंचने का सवाल है, तो रिक्वायर्ड रन रेट एग्जैक्टली 8.5 रन फॉर ओवर, ठीक 8.5 रन, 8.50 रन, ठीक 8.50 रन प्रति ओवर के अवसर से, ठीक उन्हें रन्स बनाने 51, ठीक, और देखना यह है कि वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं। 51 द टारगेट इन 6 overs फॉर टीम मोबी हब, और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहां पर टीम मोबी हब की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का, धन्यवाद, थैंक यू।
So thank you very much, Gopi. And once again, the total score, which is almost from the beginning itself, the first batting team is scoring that ranges. 52 is in the first, 49 and second, like that only it's going on. And that means the level of competition is going to be very high in this DPL season 3. Now it's a target 51, exactly 51 for Sports World to Mobi Hub to win this match against Team Sports World. Mobi Hub, they lost the first match, but they wanted to win the match. And first ball looks like it's going to be, oh my goodness, here also they started very badly. Mobi Hub, Nawaz, who really, no, his partner wanted a single there for that wide ball, but Nawaz is not interested. But unfortunately, the wickets which is falling here in the form of run out. Payas, the batter, who is back into pavilion without facing a single delivery, always which going to be hurts the batter more when you are getting out without facing a delivery in the form of run out. Maybe the batter of Fayaz thinking about extra run, but by doing that he is back into pavilion. Ooh, one more very good delivery indeed. The Salim balls a very tidy line. That's a midland off stump. The batsman across the line tried to swing that one, and fortunately got a bat onto that last moment. Great delivery here from Salim, one of the most experienced campaigner for the side of Sports World. 2 on the board without for the loss of 1 wicket. In fact, Tawfiq is a new batter. Left-hand batter is on strike. This time improvising quite nicely between square leg and a fine leg, and a little bit footwork there from the fielder, so that the batter has got opportunity to come back for the second. A good start for Tawfiq. He got a 2 runs. Next match, the match number 5, will be played between Team Matrix versus Max Challengers. So that I request both the teams please complete the formalities of signature, as well as please report here for the tossing ceremony. So leg by, one more leg by here for Tawfiq, and with that single Scuba Namuzan to 5 on the board, 5 without loss, 5 for the loss of 1 wicket. Salim bowling with a short run up. Bounce again, that wide ball called by umpire. One more addition with that extra Scuba Namuzan to 6. Over number first is in progress. Salim again back to his bowling mark. This time went for a mighty drive. Again, timing is not coming proper here. Again, the Nawaz have to settle for a single. With that single, Scuba Namuzan to 7 for the loss of 1 wicket in the over number first is in progress. Long on and a deep square leg of the fielder in the deep for the left-hand batsman Tawfiq. This time chip that one over the infield, and one bounce will go into be a yes boundary there. Nicely placed. Lovely looking off drive there from lofted drive there from Tawfiq. You know exactly there is no long off. And he just quite deliberately slide a bit of look at that one, making a little bit room to play the shot. Played that one very high, and it's good enough to get the boundary. Just landing inside the boundary line. One bounce into the fence for 4 runs. And this is a good start for Mobi Hub, and they are 11 for the loss of 1 wicket. Salim again back to his bowling mark. Round the wicket again, they wanted to hit the ball on the onside edge, and they're going for the quick single in the negation. They managed to get their leg by call by umpire. So 12 came from that over of Salim. That means the Mobi Hub, they are really very much on their required run rate, isn't it? Got a 12 valuable runs in this first over, and thanks to Tawfiq's one boundary, which is helping them to get that 12. So 51 is the target, 41 more runs to 39 in fact. 39 they need to get in remaining 5 overs. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು.
ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ತಮಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಜಾಕ್ senior chip that one very nicely. Wrist focus comes into play in delegation. Nicely fielded by the fielder, and they're going for the extra run in the form of overthrow, and well back up by the fielder. Otherwise it's going to be another overthrow. Very good running between the wicket between Taufik and Nawaz Junior. Scored Amuzan to 14 for the loss of 1 wicket. Moby Hub, their runner-up in the DPL season 2, the last season. Again, they wanted to get the ball around the legs, but going further away, and no hesitation there from umpire Arshad Bajal to signal the wide. One more extra. Scored Namuzan to 14 on the board. 15 on the board. They are going for the extra run. 1+1 bonus run for Moby Hub. Scoreboard 17 on the board. Seventeen runs already came from just 1.1 overs. Razak again, back to his bowling mark. Nawaz going over the top, but ball will go into go. Ball did not carry it to the fielder. It's just going back, running back, but not really able to meet that catch. The two fielder from extra cover and the cover point fielder running back. And again the ball going away from the fielder and landed safely. But couple of runs, very important here. And they taken there in the middle of that. 19 on the board. Again looking for the expansive drive. Nawaz is in aggressive frame of mind. Knows that this is the last over of the power play. They wanted to get as much run as possible in that power play. Scored Namuzan to 20 for the loss of 1 wicket. Raza. Balls. Oh my goodness. Oh! Yeah, my goodness. Yeah, my even the wicketkeeper fails to make a run out there in the strikers end, but the wickets will going to fall. But not in the strikers end, but in the non-strikers end. Absolutely, it's a collision. Have a look at that one. Wicketkeeper, a little bit urgency, bails her off. And the striker doesn't know about that. But quickly realizing that yes, he will not go into out in the strikers and he's just running towards the non-strikers end, but it's too late. And unfortunately, when Taufik is looking so good in the middle and is back into pavilion. It's 20 for the loss of 2 wickets. A slight bit of comedy of error in that dismissal. For the next match, tossing ceremony which is completed. Team Matrix captain won the toss. 5th match of this cricket tournament, DPL Season 3, which is proudly organized by Dubai Market Friends Club Mangalore in this historical usage cricket ground, a day and night cricket tournament. Opportunity for all the owners, employees of Dubai Market to showcase their talent in this DPL Season 3. What a lovely shot. Reverse focus comes into play. Ball is running down so deep. Cow point region. Will it go into a boundary? It looks like yes, it is hitting the hall. Maybe we are just waiting for the umpire signal. It looks like ball hits the wall and boundary signal by umpire, rightly so. And very, very surprisingly, the Nizam is the batter. Little correction, Nawaz Nizam. Nawaz is the batter who hit that reverse stroke quite beautifully. Fantastic stroke. Scored Namuzan to 24 for the loss of 2 wickets. This time again, up and over, down to deep long off, 1 bounce into the fence for 4 runs. Nawaz is on fire. He knows that is the last over of the power play. He doesn't want to miss any opportunity to scoring the runs. Absolutely perfect stroke. Have a look at that one. Inside out. Not an easy stroke to play in the book. But he managed to send that one down to deep long off boundary for 4 runs. It's 28 for the loss of 2 wickets.
So warm welcome for Mahesh, the proprietor of Geox Mobile Dealers. Sir, welcome sir, on behalf of organizers and on behalf of all cricket players and lovers for this DPL season 3. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಿಯಾಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಮಹೇಶ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದೆ. ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So 28 for the loss of 2 wicket, and looks like Moby Hub are really cruising towards the victory. But everybody knows that cricket is a game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. Maybe the first 2 overs belongs to Moby Hub, but still the opportunity for sports world to back in the game. For that, they need to get some wickets, need to bowl some tidy over if they wanted to back in the game. This time across the line, swings that one pretty hard, and oh my goodness, lovely piece of fielding there by the fielder. But some luck is favoring him, isn't it? Because he really doesn't know whether when the second attempt he will going to stop the ball from his leg. It is automatically done, I think. So I want to see it in the replay. Have a look at the fielder charging in from the far end. Wow, he put some played some football here and is able to stop the boundary for his team. Anyhow, it's not necessary how technically you are stopping that ball, but I think it's more important you need to stop the boundary. Beautifully bowled. That is perfect leg cutter from Nasir, and he got a huge wicket, and the wicket of Nizam is back into pavilion. It's 32 for the loss of 3 wicket. The half of the job which is completed, more than half of the job which is completed, is in a 32, which is a good score on the board. 30 is the total score. For the loss of 3 wicket. Again, new batter Aziz got a single there down to cover point region. One more addition. With the addition of that single, Skubana moves on to 31 for the loss of 3 wicket. 31 on the board. That means they have to get another 20 runs to win this match. 51 is going to be a target. Reverse stroke. The batter attempted Nawaz, but this time leg by called by umpire. Addition of that single, Skobana moves on to 32, and 32 for the loss of 3 wicket. So far it's a tidy over from Nasir. They wanted to restrict the runs because they got a lot of runs in the first 2 overs. Sensible batting, absolutely sensible there from Aziz. He knows that good running between the wicket, but I don't think it is going to be a good hand to throw from the field in a long off. It's the longest distance if you wanted to return the ball to the hands of wicketkeeper, and time for Aziz to complete that couple of runs. But I think Nawaz is a very good judger of the run. He's seeing the slowness of the fielder, calling his partner for the second. Excellent running between the wicket. It's 34 on the board. Driven down to deep long off region. Once again they're coming back for the second. Absolutely good one. The fielder in the long off, he started to feel the pressure, because whenever you're running first run very quickly, always we can see that if the outfielder is under pressure. So by doing that, I think that they couldn't manage to handle the pressure. The fielder misfielded, fumbled. But both the batters grabbing the opportunity. 3 overs completed, chasing 51 to win this match. Is at 36 for the loss of 3 wicket. Another 15 more runs required for the victory. Looks like Moby Hub are right in the game, and being the runner-up of the previous edition, Moby Hub definitely wanted to win their first match of the league, and after losing a first match, they are in the second match, and they wanted to win the match quite desperately. It's a time to change in committee box. It's over to Gopi. Thank you. Dhanyavad Satish. So what a fantastic progressing here for Team Moby Hub. Aboard him, first ball, and he lost his wicket.
पहली गेंद पर शफल होते हुए गेंद को साइड पर स्वीप करना चाहा था, लेकिन अंतिम अक्षर में गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और आखिरकार गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे जा टकराए लेग स्टंप पर, बिल से डिस्टर्ब होते हुए। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था और आखिरकार ये विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेट नंबर 4 का पतन यहां पर हो चुका है। नवाज जूनियर आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और पहली गेंद पर विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। 15 रन चाहिए, 17 गेंदें बाकी, 17 बॉल्स लेफ्ट एंड 15 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। तो नवाज के आउट होने के बाद एक और नवाज यानी नवाज नंबर 2 का आगमन यहां पर होता हुआ और 46 नंबर की जर्सी पहने हुए वो इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए पहली गेंद पर बल्लेबाज माफ कीजिए गेंदबाज इस वक्त विकेट प्राप्त कर चुके हैं अंसार और इस वक्त और गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज एक और नवाज के लिए और इस बीच अंसार दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया, रन के लिए दौड़ पर खतरा हो सकता है। इस बार यह विकेट गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास है और यहाँ पर ऐसे रनों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि गेंदें ज्यादा हैं और रन बनाने हुए काफी कम है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जोखिम भरा रन उठाना चाहा और आखिरकार अपना विकेट गंवाने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए। तो एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। विकेट नंबर 5 36 रनों के योग पर 15 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं अब 16, 2 गेंदें डॉट हो चुके हैं और फारूक का आगमन यहाँ पर होता हुआ नंबर 7 बल्लेबाज की हैसियत से नंबर 77 की जर्सी यहाँ पर पहने हुए और वो इस वक्त सामना करेंगे अंसार की गेंदों का। तो अंसार 2 डॉट गेंदें यहाँ पर फेंक चुके हैं और इस बीच अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, माफ कीजिए इस वक्त सामना करते हुए अजीज क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर यह रन आउट हुआ था और फारूक नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच चुके हैं इस वक्त और अंसार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार काफी जोखिम भरा स्ट्रोक, अगर थोड़ा भी ज्यादा कम होता तो गेंद सीधे लेग स्टंप पर टकरा सकती थी, लेकिन अंतिम अक्षर में गेंद को मोड़ने में सफल रहे और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर, 37 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और अगली गेंद के लिए तैयार, ड्राइव करना चाहा, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 38 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर, 38 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। बेहतर ओवर अब तक अंसार का साबित हो चुका है। स्वीप किया इस वक्त गेंद को, इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल सके। 39 रन अंतिम गेंद इस ओवर में लेकर अंसार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त वाइड स्लॉन्ग ऑन पर, फील्डर पीछे मौजूद, 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को लेकिन 1 ही रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा। बेहतर ओवर अंसार का समाप्त हो चुका है जिसमें सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 40 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs scored by team Moby Hub chasing the victory target of 51 in 6 overs. 11 runs required in remaining last 2 overs, that means in remaining last 12 deliveries. और तो अगला मैच मैक्स चैलेंजर्स और टीम मैट्रिक्स के बीच में खेला जाएगा। टीम मैट्रिक्स के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो उन्होंने लिया है। तो मैच नंबर 4 की प्रगति यहां पर द्वितीयार्ध प्रगति पर दुबई मार्केट प्रीमियर लीग 2023 डीपीएल सीजन 3 2023 2023 के अंतर्गत एक शानदार क्रिकेट श्रृंखला इस लॉर्ड्स ऑफ अंडराम क्रिकेट काशी अंडराम क्रिकेट के क्रिकेट काशी उरुआ मैदान पर खेला जाता हुआ पहली गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहता, गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट थर्ड बैन पर और बाई का इशारा, 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 41 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 10 रन चाहिए विजय के लिए, 11 गेंदें बाकी, निस्संदेह कमबैक करना है इस वक्त टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के गेंदबाजों को। इस वक्त डॉट गेंदे यहाँ पर लगातार फेंकने होंगे, विकेटें उखाड़ने होंगे। दाहिने हाथों पर द विकेट लेग स्टंप से बाहर, दिस इज एन स्लॉपी, दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी और 1+1 2 runs now added to the total in the face of
वाइड, तो 2 वाइड उनके खाते में जोड़े जाएंगे और इन 2 वाइड की बदौलत स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर। लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंक दी थी इस वक्त गेंदबाज ने, यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड अगेन 44, जस्ट 7 टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स। अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड को इस मैच में वापस ला सकती है। 3 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में यहां पर प्रदान कर चुके हैं वाइड के रूप में गेंदबाज। ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन मिलेगा। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम आउट इज बैट एट द लास्ट मोमेंट एंड ड्रिवन दैट वन परफेक्टली डाउन टू लॉन्ग ऑफ फॉर अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 45 रनों पर, 45 नाउ। अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ। ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त जान चुके हैं कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है, अगर हर गेंद पर भी कम से कम सिंगल्स पटोड़ते तो आसानी के साथ मंजिल तक पहुंच सकते हैं। 46 जस्ट 5 रन्स टू गेट फॉर विक्ट्री। अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। 9 गेंदें बाकी, 5 रन चाहिए विजय के लिए, और नासिर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद चिप किया, लग ऑफ पर मौका, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। वहां पर अजीज कुछ कहते हुए नॉन सेकंड बल्लेबाज को कि भैया आपने ऐसा स्ट्रोक क्यों खेला, क्योंकि 9 गेंद पर सिर्फ 5 रन बनाने हैं और आपको इस वक्त स्कूप शॉट खेलने की क्या जरूरत थी। लेकिन यहां पर बल्लेबाज समझाते हुए अजीज को कि भैया मैं इस वक्त कुछ हद तक लालच में आ गया था, क्योंकि गेंद को इस वक्त टॉस, कुछ हद तक टॉस करके गेंदबाज ने दिया था कि गेंद को उछाले, और इस लालच में इस वक्त बल्लेबाज आ गए और गेंद को उछाला जरूर, लेकिन प्लेसमेंट गलत और लॉन्ग ऑफ फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की। अब 8 गेंदें बाकी है, रन से चाहिए 5, तो यहां पर 5 रन बनाने हैं, 8 गेंदें बाकी, और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ जाफर। 46 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त गेंदबाज को इस मैच में वापसी करने के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर, स्क्वायर ऑफ द विकेट एंड टेकन एट एक्स्ट्रा कवर। 1 more wicket fallen, consecutive wickets for the bowler। इस बार विकेट से हटते हुए कुछ हद तक इनसाइड आउट क्रिकेट खेला था, लेकिन प्लेसमेंट गलत था, और एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने आखिरकार वो कुछ फिसल जरूर गए, लेकिन गेंद को उन्होंने अपने हाथों से छोड़ा नहीं। देखिए किस तरीके से हुआ था, इनसाइड आउट क्रिकेट, स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक्स्ट्रा कवर पर, और बेहतर क्या यहां पर लपकने में सफल। 46 for 7, सिर्फ 3 विकेट सुरक्षित, 7 गेंदें बाकी, 5 रन चाहिए। तो 7 विकेट गिर चुके हैं, सिर्फ 3 विकेट सुरक्षित है, और नए बल्लेबाज अल्ताफ मैदान पर उतरते हुए, और दूसरे छोड़ के बल्लेबाज अजीज इस वक्त उन्हें कुछ समझाते हुए कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त उन्हें अपनानी चाहिए, क्योंकि विकेटें सिर्फ बाकी है 3, गेंदें बाकी हैं 7, रन बनाने हैं 5। 7-5-3 का इक्वेशन इस वक्त टीम मोबी हब के सामने। इस ओवर में अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर गेंदबाज बॉलर अंसार, ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ, नासी ने गेंदबाज माफ कीजिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, क्लीन कलेक्शन, नॉट मोर देन अ सिंगल। 47 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 5th over comes to an end, last over remaining, 4 runs required, 6 balls, 4 runs and 3 wickets. The present equation shows for team Mobi Hub। और देखते हैं मैच निर्धारित ओवर कौन से गेंदबाज यहां पर फेंकते हैं। तो एक बेहतरीन मैच है यहां पर प्रगति पर, और मैच लगभग बराबरी पर आकर इस वक्त रुक चुका है, और अजीज ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं, और हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज जबकि दाहिने हाथ के बल्लेबाज अल्ताफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फारूक इस वक्त मैच निर्धारित ओवर शुरू करते हुए 6 balls 4 runs। हियर वी गो, पहले गेंद लेकर गेंदबाज तैयार,
दाहिने हाथ राउंड द विकेट, लेग स्पिन गेंदबाजी, इस बार स्वीप किया, गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद, दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन नाइन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके, सफल होते हुए गेंद कौन साइड पर स्वीप किया, छोड़ते तो शायद वाइड हो सकता था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद पर अपना बल्ला अड़ाया और गेंद को स्वीप कर दिया स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए, डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए। और 5 गेंदें बाकी, 3 रन चाहिए, 3 to get from 5 balls। डॉट गेंदे और विकेटों की दरकार इस वक्त गेंदबाज को, रनों की दरकार बल्लेबाज को। अजीज बैक ऑन स्ट्राइक और इस वक्त अजीज सामना करने के लिए तैयार, 8 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए ये गेंद इस बार चिप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, फील्डर वहां पर मौजूद, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट का खतरा, लेकिन थ्रो को रिसीव करने में असफल। थ्रो को रिसीव करते ठीक तरह से तो शायद वहां पर रन आउट का मौका हो सकता था, लेकिन यहां पर 2 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुका, टाइम आउट यहां पर हो चुका है, यानी एक फील्डर को इस वक्त अंदर बुला लिया जाएगा। द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड, 1 run रिक्वायर्ड, 4 balls रिमेनिंग, 4 गेंदे 1 रन चाहिए। अजीज सामना करते हुए जबकि फारूक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और लगभग 6 से 7 क्षेत्र रक्षक 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त फुल टॉस, पुल किया, नो बॉल, और इसी के साथ यहां पर विजय दर्ज कर चुका है टीम मोबी हब 3 विकेटों से रोमांचक तरीके से टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के खिलाफ 4 गेंदें बाकी रखते हुए, और इस विजय के साथ यहां पर परिपूर्ण अंक प्राप्त कर चुका है। So a fantastic 4th match has been came to an end, which won by team Mobi Hub, chasing the challengeable target of 51. They reached the target in 5.2 overs for losing 7 wickets against Team Sports World, and with this victory they bagged the complete points. They won the match thrillingly. Next match, अगला match, Max Challengers will take over Team Metrics, and that match is now coming up live and exclusively right in front of you. तो मैच नंबर 5 की शुरुआत यहाँ पर होगी, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। The man of the match of the previous match, which is goes to Nawaz Jr. For his outstanding performance from the bat and from the ball, and who scored 12 runs and he bowled. Yes, okay. So,
I request Nawaz, please go and collect your Man of the Match award from our chief guest in main stage. Congratulations, Nawaz, for your outstanding performance. Welcome back again. So now it's a match between Max Challengers versus Team Matrix. And the Team Matrix, in the first match, they won the match, and they are playing the second match. And the Max Challengers, the tied match. Now it's a time for a presentation of Man of the Match award. And which is the Man of the Match, which is sponsored by Mobile Store, and each and every Man of the Match which is sponsored by Mobile Store. Thank you very much, Mobile Store, for your contribution for the success of this cricket tournament. And yes, it's the start of the match number 5. Right arm over the wicket delivers. Going down the leg stump, further away, white call by umpire, so that first run comes up here for Team Max Challengers. Max Challengers, the defending champion, and the previous edition they have become the champions, so that they came into this tournament as one of the favorite team in this particular season 3. Team Matrix, bowler's back drive, powerfully driven, equally well fielded there by Nawaz on his follow through. Ayub hits that one very firmly back to bowler, and bowler fields on his follow through. What a shot! Sinks with the magnificent struck. One bounce into the fence for 4 runs. It doesn't look like he's a right-handed batsman playing that cricketing stroke. Just like a left-hander hitting the ball. How quickly taking his position. Have a look at that, changing the position very quickly, just like one-handed switch it comes into play, and the ball just landing inside the boundary line. Absolutely perfect struck here from Ayub. 5 on the board. This time again now looking for the expansive drive, appeal for stump out, wicket keeper behind the stump, Mukhtar. The young talented behind the stump did a quick work, but not quick enough to get the result in his favor. Now was the back foot still inside the crease. And a good comeback from the bowler's point of view. Nawaz, after that boundary, the next ball he was start getting outside the line of off stump and defeats the batter. This time, lovely shot again, lovely shot, inside out. Again, the ball is running towards the deep extra boundary. The fielder running behind. They're looking for the third, but quickly they are taking back because of the throw which just came from that fielder very quickly to the hands of the bowler. Couple of runs here for Ayub. Looking very good in the middle, and scoreboard is 7 now without loss of any wicket. Nawaz again away from us. Again, one more magnificent struck. This time ball is rocketing towards the fence. He's so good in that particular cricketing stroke. Just have a look at that one, way that he's playing that one. It's unbelievable, isn't it? And I think more than I am calling him as a right-handed batsman, I want to call him as a left-hand batter, because no problem whatsoever as far as switch it and reverse it is concerned. He's so good in that. First gone. And it's 11 on the board without loss of any wicket. 2 boundaries helping Team Max Challengers to get a good start here. And Ayub is getting that 2 boundaries. So 11 already came from that over. With 1 ball to spare. Nawaz bowling again, away from us. This time full toss. Oh, ball just going away from the field. A chance of run out in the striker's hand. Directed and is gone. This is the wicket what Team Matrix is wanted. And Nawaz really
They're taking all the revenge that of two boundaries he came from that over, and he's now responsible for the run out. A very good small cameo which is comes in and of Ayub. Have a look at that one. Looking for the big shot, not quite getting hold of them properly. Chance of cotton ball. Missed it, but not really missing the big stumps here. And nowhere near the picture. The Ayub in the relegation when the ball hits the stumps. So it's 11 for the loss of 1 wicket. Danger man departs. After completion of 1 over, max challengers are 11 for the loss of 1 wicket. Next match, my strikers takes on Millennium. So that I request both the teams players, please get ready and please complete the formalities of signatures as soon as possible. So new bowler in, Mukhtar, a young bowler with so much of talent, wicket keeper, bowler, and even very good batter, complete cricketer. Is in action, Mukhtar bowling from the commentary box end. To the right-hander batter, Mustaq starts with the delivery which is called as a wide by umpire Salim, rightly so. Ball just shaping away from outside the line of leg stump, going further away. 12 on the board. Lovely line, absolutely perfect line to ball, and Mustaq just Akram did correction. He's a good striker of the ball. The previous match he played some massive strokes into the deep square leg and mid wicket. This time, well stopped by the fielder at square leg, isn't it? Otherwise, it's going to be a boundary there. And because firmly driven there by Akram in that occasion. A very good stop by the fielder at square leg. Just a single. 13 on the board for the loss of 1 wicket. Ayub, the batter, back into pavilion after he got 11 runs from his bat in the first over. Mukhtar setting a field here for the left-hand batter. Mustaq is opening batter, but he is playing his first delivery. Far outside the line of off time. That's all happening when there is a left and right combination in the middle. The bowler have to change the line so that they are missing the line completely. Big white, 13 on the board. 14 on the board, correction. One more single. Looking for the second there, and white throw coming from the fielder. They quite comfortably completes 2 runs. Good placement, but not a good fielding. 16 on the board for the loss of 1 wicket in the over number. Second is in progress. Mukhtar, lovely flighted delivery. The batter completely misreading that turn of the ball, flight of the ball from Mukhtar, and Mustaq missed it completely. Score remains on 16 for the loss of 1 wicket. Again, that ball is going far outside the line of leg stump, but still the batter wanted to reach that one. He knows that Mustaq, if he were to contact with the bat, he can get the boundary for that. White call by umpire, 1+1, 2 more to total score, but moves on to 18 for the loss of 1 wicket. Max challengers in this particular over getting some extra runs for whites, bowled by the bowler Mukhtar. One more wide. Oh my goodness, can you believe this? Oh, a lot of extras considered here. That conceding wide means you are giving a lot of freedom for the batter. There is no pressure at all, runs coming very freely. Again, wanted to hit the ball firmly, but not quite intended. In comes the throw from the fielder. Chance of run out. Umpire Sriraj saying that the batsman is safe. A couple of runs has been taken. Good underarm throw from wicket-keeper Nawaz to hit the stump. And looks like batter in the last moment he drags his bat in the right time. And
It's a couple of runs has been taken then. Good running with the wicket. 21 for the loss of 1 wicket. A good run here for team Max Challengers so far. Mukhtar bowling right arm over. Again wanted to hit the ball, not having a proper connection in the occasion. For Akram, just a single. One more productive over which is comes to an end for team Max Challengers. 2 gone after completion of over number 2. It's 22 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 10 and 11 runs per over. The good going here for Max Challengers against Team Matrix. So Akram is on strike, then no change in bowling. Nawaz to continue. 11 conceded in his first over. 11 in the second over, bowled by Mukhtar. Now Nawaz continuing. Third over. Across the line, swings at one. Fielder is there in the deep square leg. Good fielding there by the fielder. Just waiting for the one bounce, but quite hardly he managed to catch that one, isn't it? Looks like his ball going to be a boundary, into the boundary. But at last, it's a good judgment by the fielder at mid-wicket. But couple of runs taken there by Akram. And with that couple of runs scored, now moves on to 24 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. This time a lovely delivery. It looks like it's gone. Yes, the ball hits the stumps. Ball just passing under the bat of the batter. Akram there is looking for a reverse stroke, but line is not so easy. And on the middle and off stump, and ball after hitting a leg might be. The ball hits the stumps. Akram departs. It's 24 for the loss of 2 wicket. Team Max Challengers. So new batter in is Sinan, mid-flip collection, no, it's a 28 Shafiq, I think. Shaif is the new batter in. And the previous match is came into bat as an opener, now coming down in the order. The 24 on the board. Good score on the board for Max Challengers, but Nawaz wanted to put some break on that run rate. Oh, Shaif straight away. The first ball, his intention is to hit the ball, to kill the ball. But Nawaz knows that the batter Shaif is loves to hit the ball in the onside region. So he bowled that very tidy line outside the line of off stump. And he missed it completely. Mukhtar, Nawaz. Bowls, wicketkeeper fumbled, so that one more single. Wait for umpire signal. It's inside edge of the bat. And one more addition to total. 25 comes off here for team Max Challengers. 25 for the loss of 2 wicket. Over number 3 is in progress. Mustaq is left-hand batter. Came as an opener for the side. Didn't got enough of deliveries to bat. Nawaz to the left-handed batter. Oh, what a shot! What a shot that one! Adman it's going to be 6. Just like I mentioned, he didn't got enough deliveries to bat in this 3 overs, but he got one delivery where he want to swing that one, and he loves that line. And have a look at that stroke, quite easily, effortlessly played that one. Down to deep square leg boundary for a 6. Absolutely magnificent and glorious shot.
31 on the board again. One more nice looking drive. The timing is so good in irrigation there from Mustaq there. Then the 3 overs completed, and out of that 18 balls, he got only three deliveries he faced, Mustaq, and he scored 9 runs out of that. So over number 3 completed. A good score on the board still for Max Challengers is 32 on the board for the loss of 2 wicket, and there looks like they will going to get a huge total here. In the similar 100 projected score is going to be a 64, and wait and see if they can get that or not. And it's a time to change in commentary boxes. So over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो एक बेहतर प्रगति यहाँ पर करता हुआ मैक्स चैलेंजर्स 32 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद। और जहाँ तक बचे हुए 3 ओवर का सवाल है तो देखते हैं और कितने रन उनके बल्लेबाज यहाँ पर बटोर पाते हैं। फिलहाल एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ मैक्स चैलेंजर्स, और चौथा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार और दाहिने हाथ राउंड द विकेट। लेग स्पिन गेंदबाजी ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन इस बीच नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड एंड इनटू द कमेंटेटर बॉक्स एंड फॉर अ ह्यूज वन। ऐसा कहना पड़ेगा, ही जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट और गेंद सीधे जाकर हमारे कमेंटेटर बॉक्स के दीवार पर टकरा दी हुई बिल्कुल हमारे सामने। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एंड द बॉल स्ट्रेट वेंट एज एन एरो। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ मुश्ताक के बल्ले से। इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर जब तक फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। तो धीरे धीरे यहां पर रन जुड़ते हुए और एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त मैक्स चैलेंजर्स। ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया इस वक्त मिड विकेट पर, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस बार गेंद को स्कूप किया था ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ, शायद वहां पर कोई फील्डर नहीं होगा, हमें यहां से ठीक से दिखाई नहीं दिया। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के दरमियान और वहां पर शायद कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। फील्डर मौजूद थे लेकिन 2 स्क्वायर इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा लेकिन ठीक से गेंद को उछाल नहीं पाए और 1 रन इस बीच बल्लेबाज को मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 45 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। स्टिल सम फील्डिंग एडजस्टमेंट्स इज गोइंग ऑन देयर, कुछ हद तक का फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और गेंदबाज इस वक्त असरार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। तो इस ओवर के बाद और भी 2 ओवर उनकी पारी में और फेंके जाने बाकी। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला लेकिन फील्डर डीप मिड विकेट पर मौजूद है, थोड़ी सी मिसफील्ड और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने आसानी के साथ दूसरा रन यहां पर प्राप्त कर लिया। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 47 रनों पर 47। 15 रन केम फ्रॉम दिस ओवर और इस ओवर की बदौलत 15 जिसमें 15 रन बने मैक्स चैलेंजर्स अब बुलंदियों पर नजर आता हुआ। दे आर लुकिंग राइट ऑन टॉप। 2 ओवर का खेल बाकी और देखना यह है कि इन बचे हुए 2 ओवर में मैक्स चैलेंजर्स के बल्लेबाज अपनी टीम को रनों के और रनों के शिखर के और कितने ऊंचाई तक ले जा पाते हैं। तो अपना बल्ला परखते हुए अपना बैट टेस्ट करते हुए इस वक्त बल्लेबाज और इस बीच नया ओवर प्रारंभ होता हुआ 59 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी सादिक का सीएम इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और नया ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ। तो मुश्ताक जो कि एक बेहतरीन पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। दाहिने हाथ
राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। Again, lofted. This time, I think it could be taken inside the fence. स्ट्रोक को उछाला था लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। Have a look at this in the replay. Actually, what was happened? He lofted that one, not quite mid-leg it. The ball got a stoppage, and finally, long-off fielder just took the catch inside the fence. Brilliantly, in fact, he took the catch just inside the fence. और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है और एक बेहतरीन पारी पर यहाँ पर पर्दा गिर चुका है मुश्ताक का जहाँ तक सवाल है उन्होंने बनाए 22 रन. He scored 22 runs into his career, including 2 massive sixes and a boundary. And after playing a fantastic knock of 22 runs, including 2 sixes and 1 boundary, he is backing to pavilion. और मैक्स चैलेंजर्स अपना तीसरा विकेट यहाँ पर खोल चुका है. तो इस बीच सादिक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है. अल्फाज सामना करने के लिए तैयार है. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद बॉल्ड आउट, मिडल स्टंप अप्रूटेड. द बॉल पिचिंग राइट ऑन द ब्लॉक होल एंड स्टक टू हिज मिडल स्टंप. रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता लेकिन गेंद देखिए किस तरीके से ब्लॉक होल पर टिप्पा खाई और बल्लेबाज को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला इस गेंद पर. शायद स्ट्रेट बैटेड खेलते तो शायद गेंद को कनेक्ट कर सकते थे लेकिन यहां पर देखिए गेंद लगभग बल्ले के 3 विकेट टिप्पा खाती हुई उनके पैर और बल्ले के बीच से निकलकर ऑफ स्टंप को उखाड़ कर ले गए और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. 47 4 विकेट के नुकसान पर. 47 for the loss of 4 wicket. हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. सादिक ही इज ऑन हैट्रिक. अब तक सिर्फ एकमात्र गेंदबाज इस श्रृंखला में अपना हैट्रिक परिपूर्ण कर चुके हैं और सादिक के लिए मौका है इस श्रृंखला के दूसरे गेंदबाज बनने का, हैट्रिक प्राप्त करने का. यह गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा. फुल टॉस गेंद थी, नॉट क्वाइट मिड विकेट. 1 रन मिलेगा. हैट्रिक का मौका टल चुका है. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर. 48 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को उछाला. लॉन्ग ऑन पर एक और मौका हो सकता है इस वक्त. फील्डर गेंद के नीचे आते हुए नो बॉल का इशारा और इस बीच बल्लेबाज 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. तो शायद यहां पर ओवरस्टेप किया था गेंदबाज ने और आखिरकार यहां पर गेंद फेंकते समय उनका पैर शायद स्टंप्स पर टकराया था मेरे ख्याल से. तो यहां पर नो बॉल घोषित करते हुए अंपायर और 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे और 2 रनों के साथ 51 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका. 51 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. और अगली गेंद के लिए तैयार. ये गेंद चिप किया स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड इनटू स्ट्राइट हिट एरिया. इनफैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड एंड दे मेड इट. इस बार बल्लेबाज हालांकि पीछे की ओर वो मुड़े अंतिम क्षण में दूसरा रन पूरा करते हैं. शायद गेंद नॉन स्ट्राइक रन की ओर आई है लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि गेंद स्ट्राइक रन की ओर आ रही है और आखिरकार अपने तेजी को बढ़ाई उन्होंने और आखिरकार दूसरा रन यहां पर पूर्ण करते हुए परिपूर्ण तरीके से 2 रनों के साथ 53 रनों पर. 53 नाउ. तो इस बार गेंद को खेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची. विकेट कीपर ने आगे क्यों रखकर गेंद को फील्ड कर लिया. रन इस बीच नहीं मिलेगा. और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार. इस ओवर में अंतिम बार. इस बीच गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई. 1 रन मिलेगा और जानबूझकर इस वक्त पैर से नहीं ढकेला था यहां पर बल्लेबाज ने. तो 1 रन घोषित. 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर. 54 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड 5 overs had been bowled. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 4 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. पहली गेंद लॉफ्टेड डाउन टू लॉन्ग ऑन, नॉट मोर देन अ सिंगल. 1 ही रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 55 रनों पर. 55 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. नो बॉल कॉल्ड बाय अंपायर वंस अगेन. तो 3 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात है तो इस वजह से अंपायर ने इसे नो बॉल घोषित किया. तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 56 रनों पर. अब तक 56 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर.
और इस बीच फील्डिंग में जमावट करते हुए गेंदबाज और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला, फील्डर काफी पीछे तैनात, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 57 रनों पर। 57 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। Lost it! This time, I don't think it could be gone all the way. And it's dropped and the batsman got plenty of time to come back for the second run. गेंद को काफी ऊंचा उछाला था इस वक्त और मिड ऑफ से फील्डर दौड़े लेकिन गेंद को लपक नहीं पाए और आखिरकार बल्लेबाज के पास समय था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 58 रनों पर। फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। शॉट थर्ड मैन के फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 59 रनों पर। 59 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट और फिर से 16 फैक्ट फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। काफी आगे दौड़ा है बल्लेबाज, इससे पहले कि गेंदबाज गेंद डिलीवर करे बल्लेबाज ने दौड़ना शुरू किया नॉन स्ट्राइक राइट पर और इसे देखते हुए यहां पर अपने रनअप को इस वक्त गेंदबाज ने रोक लिया। तो अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, फाइन इस वक्त खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर इस वक्त मोड़ दिया खूबसूरती के साथ। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है चौके के लिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 64 रनों पर। तो रन इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए और निस्संदेह यहां पर लंबे स्कोर की ओर बढ़ता हुआ मैक्स चैलेंजर्स। 2 गेंदें अभी भी बाकी और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज की ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खेला, मिड विकेट पर फील्डर पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा, ओ मिस फील्ड और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो दबाव प्रेशर इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर साफ दिखाई देता हुआ और जहां पर कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 रन मिलने चाहिए थे वहां पर चौका प्रदान हुआ। देखिए किस तरीके से 2 फील्डर आ गए, पहले फील्डर के हाथों से गेंद चूकी, दूसरे फील्डर जब तक गेंद को देखते गेंद उनके सामने से निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। अंतिम गेंद द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और गेंदबाज की अगेन स्विंग्स एंड टेकन इनसाइड डिफेंस। तो the innings is up and they finished well with 68 for the loss of 5 wicket for max challenges and the target for team metrics is 69. So a stupendous task in front of team metrics. 69 they have to score in the stipulated 6 overs and exactly 11.5 runs per over the present run rate required run rate for them. They have to score for victory. 69 they have to score in the stipulated 6 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them 69 रन बनाने हैं और निर्धारित 6 ओवर में और जहां तक सवाल है रिक्वायर्ड रन रेट का तो 11.50 रन प्रति ओवर के औसत से उन्हें रन बनाने हैं 69 और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद, थैंक यू। ಅಲ್ಲಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಭೋಜನ ಗೃಹದತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। So 69 the target in 6 overs and we are just waiting for the openers of team metrics. तो इंतजार है इस वक्त आरंभिक बल्लेबाजों का टीम मैट्रिक्स का और फील्डर जो कि मैक्स चैलेंजर्स के इस वक्त मैदान पर छाते हुए।
So 69 on the target and their innings now going to start. और इससे पहले कि उनकी पारी की शुरुआत हो आगे का खोते काल छोड़ने के लिए अंग्रेजी में आमंत्रित करना चाहूँगा सतीश को. Yes. धन्यवाद. Thank you. Thank you very much, Gopi. And 69, the huge total, one of the highest total score of this tournament, 68 from Max Challengers. And now it's a big challenge for Team Matrix to get that 69. They're going for the second chance of run out in the strikers, and wicket keeper not in the position. Maybe the wicket keeper tried to cover that throw so that he is not in the behind the stump. Not a wicket keeper I'm talking about. That short third man fielder need to cover the stumps. Have a look at that one. Driven down to deep square leg, the fielder charging from the deep and picked up and returns the ball. That time hesitation is between two batters about the second run. Have a look at that one. Throw from the wicket keeper and misses the stumps. Again, that ball is almost around the legs of the batter. Leg by call by umpire. Nawaz, a good striker of the ball, looking for the big swing of the bat, missed it completely. Then umpire not missing the opportunity to signal the leg by. With that leg by, Skoba Namuzan to 3 on the board without loss of any wicket. Bright sunny afternoon. Time is exactly 1 past 50. And looks like the condition seems to be a little bit hotter. The humidity is very high in the day, in this particular day. Round the wicket, bowler Mustaka. Mustaka bowls and defeats everyone. Defeats everyone means it not only the defeats the two fielder, but even the dog which is just passing there. Otherwise, maybe the opportunity to stop the boundary, but everything is a fortunate for Team Matrix. And one more boundary, first boundary in the form of extra. Lucky boundary for Team Matrix, but they will going to enjoy that each and every run because they need to climb the mountain of runs. I request the two teams captain, my strikers as well as the Millennium, though, please report here for the tossing ceremony. ದಯಮಾಡಿ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಲೇನಿಯಂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ 6th ಮ್ಯಾಚ್. ಮುಸ್ತಾಕ್ to Afreed. Nicely swept, defeats the infield. Shaif, I don't think we'll go together. Oh, he got there. Absolutely good job. Everyone thought that it might be all over, but Shaif is not really given up. He's just using his feet to stop that one because he can't bend down quickly. And have a look at that one. Absolutely perfect one. And footwork, timing of putting this right foot into the ball has been outstanding. And stopping couple of runs for his team. And Skoba Namuzan to 10 on the board without loss of any wicket. Mustaq again right up over the wicket. Again he swept that one straight. That's a fielder chance of run out. But oh my goodness, Nawaz is so quick between the wicket. Even the quick work by the fielder, but not good enough to stop the single from this to batter. And with that single, Skoba Namuzan to 11 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. We are talking about that 69, which is going to be a huge total to chase down, but in cricket anything can be possible. The cricket is a game of glorious uncertainty. Swept and one, very fine. This time ball will going to defeat the fielder. Again the footwork comes into play that from the short third man fielder. Good piece of fielding, two boundaries which is stopped because of some good footwork by the two fielders, and a couple of runs has been taken. That's Skoba Namuzan to 13 on the board, and 13 without loss of any wicket. A good reply coming from Team Matrix.
Yes, again the bowler bowling right arm. Improvisation. This time they will going to get a single there. Looking for the second. In comes a throw. Wicketkeeper missed it. Couple of runs has been taken there. So Nawaz is dealing with some luck here. And three chances already missed out by the fielding team for Nawaz. After completion of first over, good start from the opening batters of Team Matrix. They are 15 without loss of any wicket. Change in bowling. The bowler will go into ball the second over, jersey number 10. Ramesh. For Max challenges, second over of the power play. The last opportunity for Team Matrix to get some runs on the board. This time nicely driven down to extra cover, but equally well fielded by the fielder. Just a single there for Afreed, and with the addition of that single, scored almost on to 16 now. This time going for the mighty drive, but not a good placement, I want to say. Nawaz wanted to get that one over that deep long on, but not really getting that much of elevation. He got, not elevation, he got an elevation, but not really get the distance what he is looking for. The first wicket is back into pavilion now for Team Matrix. It's a huge wicket. The placement is not good enough from Nawaz. Huge wicket for Max challengers. It's 16 for the loss of 1 wicket. Highlight of the innings of Max challengers, some big innings threat from Mustaq. He scored a 20 valuable runs with alpha for 2 massive sixes and a boundary. Aggressive batting performance from Mustaq to get this team into a good total and good position. Hafiz is a new batter in. This time catch it is a call, and catch will be taken in the mid wicket. So Hafiz is gone for golden duck. Bowler Ramesh strikes twice in this over. 2 consecutive wickets in 2 consecutive deliveries. That means he's on hat-trick. There isn't a hat-trick in this particular tournament. 1 hat-trick. Asif got a hat-trick, and now it's a golden opportunity for Ramesh to get a second hat-trick of this DPL season 3. Riaz bowling. Riaz a new batter, need to be correction. Ramesh balls nicely reverse up, then that will go into defeat that man. Absolutely perfect one. Fast outfield. You can't do that, can't chase that, especially it is going to be difficult for Shaib to chase down, because a little bit risky factor there in that region, because the wall which is removed, because spectators gallery will going to be constructed very soon. The work is in progress, so that little protection for the fielder, so that Shaib is not taking any risk at all in that occasion. 16 on the board for the loss of 1 wicket. Ramesh 20, little correction, 20, not 16, it's 20. 16 plus 4, it's 20. Ball aim, cleaned him up, just misses the line completely, isn't it? Never looks like that Riaz has played that one very well, isn't it? That ball is in a different line, and the bat which is in a different line. Flighted delivery, incoming delivery. Have a look at it on replay. High bat lift, huge gap between bat, and ball did the trick and hits the stumps. The wicket number 3, which is back into pavilion of Team Matrix. All happening when you are chasing a huge total like a 69. It's always going to be a big ask, but not impossible. 20 means another 49 more runs required for the victory in the remaining 25 deliveries.
Lovely delivery, beautifully bowled. Good comeback here by the bowler. Rami is giving his everything in this over. After completion of over number 2, chasing a total score of 69 to win this match. Slight a bit of onto the back foot now in this particular over. Team Matrix after getting a flying start. 15 in the first, just a 4 in the second and a 2 wicket. 5 in the second and 2 wickets. It's 20 on the board. 20 for the loss of 3 wicket. 4 overs remaining. 24 balls remaining. 49 runs required for the victory. Difference definitely going to be a huge one. 29 difference, 25 difference in fact, between a run and the ball. And that need to bring this difference down quickly. Otherwise, difficult for team of Matrix to win this match. But looks like Max Challengers, they are very much in the game. They are in a driver's seat of winning this match. This time they wanted to play the reverse stroke, missed it complete, then wicketkeeper also missed it, but Shaif down at third man region, short third man region, fields the ball, and there is no chance at all for any run. The same jersey color, which was standing outside the boundary line, will make the little bit, maybe the teammate of the same fielding team standing outside the boundary line. Beautifully bowled. Oh my goodness, how far that ball from the stump. It's not too far, I want to say. Ball very close to the off stump. The very lucky escape here for the batter, Mukhtar. The quicker one, faster one here from Afreed, the middle Christian striker. Mustaq and believed his strength. Again, nice little one. Wide off that short mid-wicket fielder. They're coming back for the second and they made it quite easily. There's good running between the wicket. Board pin. Oh my goodness. Again, the very good line. Tidy line here from Mustaq. Is looking a totally different bowler. When he bowled the first over in the power play, and bowler not really getting the right line. But here he is getting such a good line here so far. 4 deliveries, just 2 runs. Went for the sweep shot. Again, they crossed off for a single. Afreed still is in a defensive frame of mind, looking for some runs behind the wicket, square of the wicket. 23, but that the singles will not going to help their team to win the match. Needed some big shot quickly if they wanted to back in the game. Mustaq bowls. Mukhtar swept down to square, in front of square. One more single, one more over completed. 3 gone after completion of over number 3. Chasing a total score of 69 to win this match. It's 24 on the board for the loss of 3 wickets. That means it's a long way to go. They have to get another 45 runs to win this match in the remaining 3 overs. Time to change in commentary box, and after lunch break, I request Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर 20 रन 3 विकेट के स्कोर है। 24 रन, 24 the score, and now it's 25 for the loss of 3 wicket, and 4th over started now। चौथा ओवर शुरू हो चुका है। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर। 26 now for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress। अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा। गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, रन नहीं मिलेगा। हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। और जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, इस वक्त चौके और छक्कों की उन्हें सख्त जरूरत इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। ना तो ओवर द विकेट, यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा। बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर।
और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। तो रन से ज्यादातर सिंगल्स के रूप में यहां पर बनते हुए, और इस बीच एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए गेंदबाज मैक्स चैलेंजर्स के, और ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 26 रनों पर, 26 रनों पर, माफ कीजिए 27 रनों पर, 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। इस बार बेहतर गेंद थी और गेंद इस वक्त सीधे टकरा चुकी है स्टंप्सों पर, बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करने के बाद। तो एक और विकेट यहां पर गिर चुका है, और इस विकेट के पतन के साथ ऐसा कहना पड़ेगा टीम मैट्रिक्स काफी संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। माही स्ट्राइकर्स will takes over Millennium in the next match, and because of that I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for the toss procedure. Mahi Strikers ಹಾಗೂ ಮಿಲೆನಿಯಂ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮಾಹಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಮಿಲೆನಿಯಂ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. I request the captain of Mahi Strikers please to be reported here. The captain of Millennium is just waiting for you for toss with the organizers. So new man comes out to the middle, और वो इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद स्वीप करना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में ऑफ कटर गेंद पर स्वीप नहीं कर पाए। ओवर नंबर 4 की समाप्ति हो चुकी है, और इस चौथे ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 27 for the loss of 4 wicket after completion of 4 overs, and 42 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs. And the required run rate, asking run rate, is now gone up to exactly 21 runs per over. And तो 2 ओवर 42 रन, सिर्फ चौके या छक्के ही अब काम कर सकते हैं यहाँ पर टीम मैट्रिक्स के लिए। पहली गेंद ऑन साइड पर, स्विंग्स हार्ड एंड he's got the distance. It's a huge one. छक्का इस वक्त लगता हुआ, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर, 33 for the loss of 4 wicket. With that 6 the scoreboard is now moving up to at the start of the 5th over. जैसा कि इस गेंद से पहले मैंने फरमाया था, सिर्फ चौके या छक्के इस वक्त मंजिल तक पहुंचा सकते हैं टीम मैट्रिक्स को, और पहली गेंद पर छक्का लगाने में सफल। ऑफ का टर्न, फुल टॉस, गेंद को उछालना चाहा चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 33 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा, नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज काफी आगे निकल आए, और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। डायरेक्ट हिट इस वक्त लगता हुआ नॉन स्ट्राइक रन पर, वाइड का भी इशारा हो चुका है, 1 रन जुड़ चुका है, और स्कोर बढ़कर 1 रन के साथ 34 रनों पर पहुंच चुका है, और 5वां विकेट यहां पर गिरता हुआ। 5th विकेट फॉलन, 34 for 5. 11 balls left, 35 more runs now they have to score for victory. तो गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली मत स्ट्रेट लाइन, जस्ट गॉन फॉर ऑफ, नॉट सक्सीडेड, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 10 गेंदें बाकी, 35 रन चाहिए। अगली गेंद के लिए तैयार। यह गेंद ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 35 for the loss of 5 wicket in the over number 5 in progress. Still they have a long way to go. अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी उनके लिए, और फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए गेंदबाज, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार चूके रन के लिए दौड़ पड़े, रनआउट का खतरा, थ्रो पहुंचा, थ्रो निशाना चूका, और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और दूसरा रन यशस्वीतम यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। लेग बाय का इशारा, और लेग बाय के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर। 37 for the loss of 5 wickets. 32 more runs now they have to score for victory in remaining 8 balls. 7 balls in fact. Loved it, and
and a chance, but he won't get that one. एक रन का इजाफा नहीं, रन ही नहीं इस वक्त, कोई रन नहीं लिया बल्लेबाजों ने. स्कोर रुक चुका है इस वक्त 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर. 5 ओवर की समाप्ति. 32 needed from last over now. तो अंतिम ओवर शुरू होता हुआ यहाँ पर गेंदबाज कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. 32 नीडेड फ्रॉम लास्ट ओवर. दाहिने हाथ ओवर द विकेट ड्राइव किया. गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर. रन नहीं मिलेंगे. 5 गेंदे 32 रन. लगभग असंभव सा लक्ष्य इस वक्त. 32 रिक्वायर्ड फ्रॉम 5 डिलीवरीज. इस बार फिर से रन नहीं मिलेगा. लॉन्ग ऑन पर गेंद पहुंच चुकी है. 4 गेंदे 32 रन. अब लक्ष्य असंभव यहां पर हो चुका है और अगली गेंद के लिए तैयार. लॉफ्टेड एंड a chance. I think it's the chance for the fielder and he took that one successfully. One more wicket fallen. 37 for 6. 3 balls left. 32 needed. Absolutely impossible task now. Misses. Dot ball. 32 needed. 2 balls remaining. It's just a formality now remaining in this match. Lofted. Not quite mid wicket. Can't got any run. Last ball remaining. And the last ball of the match is now coming up. Turns it away. That's it. Maiden wicket for the bowler. And they lost the match by 31 runs. So a comprehensive victory for Max Challengers. They defeated Team Matrix by a huge margin of 31 runs. And with that victory, Max Challengers back the complete points. तो इसी के साथ मैच नंबर 5 की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है. और मैक्स चैलेंजर्स ने टीम मैट्रिक्स को 31 रनों के विशाल अंतर से हराया है. और अब मैच नंबर 6 खेला जाएगा माही स्ट्राइकर्स और मिलेनियम के बीच. तो वो मैच यहाँ पर शुरू होगा चंद लम्हों बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और वापसी करेंगे जब मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू.
So man of the match, the award goes to the batsman, the batter who performed very well from the bat, scored 22 runs. 22 runs from his bat. Mushtaq of Max Strikers adjudged the man of the match. I request Mushtaq, please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizers. Mushtaq ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ತೋರಿ 22 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಮುಷ್ತಾಕ್ರವರು ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So thank you very much, Gopi. Welcome back. Good afternoon, cricket lovers. And we are into the match number 6 of this prestigious DPL season 3, which is proudly organized by Dubai Friends, Dubai Market Friends, Mangalore. And all now set now for the big match, because the My Strikers in their first match, the match which is My Striker lost against Sports World, and Millennium their first match which is tied, so that it's very important for both the teams to get the victory here, and that's why the level of competition is going to be very high between these two teams. Shahik and Chamu are the two opening batters out there in the middle, and umpire Arshad Bajal signaling towards our scorer, and everything is ready for the first over. Pass ball, Yusuf right on the money, right on the target. He got a dream start for Millennium. And just like I mentioned, both the teams wanted to get a good start here. After winning the toss, captain of Millennium, they elected to field first. And first ball itself, Yusuf has got a huge wicket of Shahik. He departs for Golden Duck. Millennium quite hardly they made the match into a tie when it's 7 required from last ball. Then 6 came from the bat of Moshpek, I think so, is a man who hit 1-6 in the last ball of the over and managed to tie the match. Now they're playing their second match. Outside the leg stump, going to be a punishable
from the umpire. Misfield there by the fielder. It's going to be a lucky boundary. Frustration for everyone. Wide plus boundary, 5 to the total. Lucky runs coming up here for team My Strikers. Absolutely sloppy piece of fielding there by the fielder. Absolutely sloppy. Of course, the bowler did the mistake, and even fielder also did the mistake here. Across the line, he wanted to swing that one. They're going for the quick single, chance of run out in the non-strikers and throw little bit wide from the wicket keeper. Abu, by call by umpire, one more addition to total. Addition of that single scored Namuzan to 6 for the loss of 1 wicket in the over number. First is in progress. Bowler's back drive. Good piece of fielding there by the fielder. Chance of run out in the non-strikers, and the batsman just have made it when the bowler completes the job, and good running within the wicket with that single scope by Namuzan to 7 without loss a little bit correction, loss of 1 wicket. Nisar is on strike now. Yusuf. One more wide. Really, Yusuf, after got a wicket in the first ball, umpire has called it dead ball. Umpire called it a dead ball. I don't know the exact reason for that. Right arm over the wicket bounce. Went for the drive. Misses the line completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Nishad is the batter. Will go into face next ball. Again went for the big drive. Missed it completely. Good comeback here by the bowler Yusuf in that occasion. 2 dotted deliveries. Yusuf again. Was single-handed stroke down to short mid-wicket region. Not more than a single. So first over completed. After that first completion of first over with some lucky run, the team Millennium, little correction, My Strikers got 8 runs. 8 runs in 1 hour by losing 1 wicket. Lot of cricketing action is coming up in this UCG cricket ground. Just we're talking about in coming 16th and 17th, there will be a LCC Cup, Legends Cricket Club Cup, an opportunity for the cricket lovers to watch their favorites, those who are performed in 80s and 90s till 2000. The 2 days of cricket tournament will be organized here in Urva Cricket Ground. This time across the line, swings that one, placement it's, oh what a good piece of fielding there by the fielder. Just pulls that ball, pushes that ball into the playing area. Once it looks like ball going to reach to the fence. Absolutely good work drive of the fielder. Have a look at the effort there from the fielder. Jumped and of course almost able to stop the boundary. Top edge, but will going to be a chance here for the fielder. No, it doesn't. Again the ball which is landed safely, and a couple of runs has been taken in the middle, and with that couple of runs Kopata moves on to 13 on the board for the loss of 1 wicket. Nazir. Right arm over the wicket. Bounce this time, swings that one, but straight to the hands of fielder at mid-wicket. Not orthodox mid-wicket, it's what do you call it, a cricketing language, it's a cow corner. Between mid-wicket and the long on, and one fielder is situated on unorthodox field set. Seeing the batsman is shuffled across the line of the delivery, tried to get the distance, but the fielder just waiting for that, completes a catch. The wicket which is gone of team Mahi Challengers.
Nazir will going to continue from the far end, right arm over the wicket. Driven and straight to the hands of long on. Back to back 2 wickets for Nazir. My strikers just lost their momentum what they got in the first over. 4 runs in the 2 balls and 2 wickets in the 2 consecutive deliveries. And absolutely, it's a good comeback from the bowler's point of view. Now he's on hat-trick. So far I've already mentioned there is a 2 hat-trick in this tournament. 1 hat-trick in fact, in this tournament. The golden opportunity for Nazir to pick the hat-trick. And new batter Rashid will be the batter. And Nazir will be the bowler who will going to try for the hat-trick. Can he able to get the hat-trick? Wait and see. Nazir from the far end. Right arm over the wicket delivers. Went for the reverse sweep. Backward point fielder will going to field that one. But ample time for the batter to complete the single. One more addition. Addition of that single score numbers on to 14. Ajmal Jokate, one more very experienced umpire joining the umpiring panel, is now doing umpiring job for this match. Again that ball missing the bat of the batter, but well within the reach of the batsman. One good over which is really absolutely effective for team Millennium. They got that, they required that over, tidy over, and Nazir produced that one. So after completion of over number 2, it's 14 for the loss of 3 wickets. The presentation of a man of the match award here in our commentary box. Abu will be the bowler, will go into bowl the 3rd over of the innings of Mahi Challengers. 14 for the loss of 2 wickets, 3 wickets. Abu round the wicket is in operation, long on, long off. There is a wideish long on, the mid wicket and the deep square, like the 4 protection in the onside, 1 in the offside, that is a long off. Nicely played it down to square leg region. They're running hard, looking for a mistake from the fielder. Maybe they slide a bit of fumble, but recovered quickly by that fielder in the deep, so that the batter had to settle for the single. It's 15 on the board for the loss of 3 wickets. So runs are which is slowing down after that 13 runs, 8 runs in the first over, and then runs are not really coming very quickly for Mahi. Again the driven that one along the ground towards the mid wicket. Good pick up and throw from the fielder. Chance of run out. And batsman at last moment drags his bat. This is a perfect way to save your wicket when you are wanted to complete the runs. Dragging your bat is so important, and the batter did a right job. So drags his bat, saves his wicket, and got important runs for his team. Oh my goodness, it's not drags. He's just wanted to put the bat into the crease, and 2 more runs added to total. With that couple of runs, Coburn numbers down to 17 on the board. Abu. Nicely played at one square of the wicket, given to cover point region by the batter Chammu. One more single. With that single, Coburn moves on to 18 on the board. Chammu, where the batter is in non-striker's end, but in front of our commentary box, the cameraman is also Chammu. So always is confusion when I'm calling that name. He's turning back and watching at me. And one more single. It might be so distracting for cameraman calling his name every time. Lovely shot, lofted that one, but not good enough to get more than a single there. Not good enough to get a boundary or a 6, but just a single there. With that single score, numbers on to
19 on the board. Next match, the match seventh match. Team Sports World takes on Team Matrix. Bowlers back dry, not for run. One more over completed, 3 gone. After completion of over number 3, Mahi challengers searching for the right track. They are 19 for the loss of 3 wicket. Next match, match number 7. Team Sports World versus Team Matrix. That is going to be a third match will go into start of the league for every team. So little bit changes in the number of overs. The over which is reduced to 5 for the third round of the league stage matches. That means next match all matches will be of 5 overs. Please note the change. And I request 2 teams captain, please report to the commentary box for the tossing ceremony. Team Sports World as well as Team Matrix. Time to change in commentary box. I would like to invite Mr. Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ, जस्ट इम्प्रोवाइजेशन करना चाहता अंतिम क्षण में, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं आए और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। द स्कोर स्टेज एट 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द फोर्थ ओवर। इन फैक्ट फॉर माय स्ट्राइकर्स। और अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को नॉट क्वाइट मिलेगी। इन फैक्ट 1 रन मिलेगा जरूर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर चौथा यहां पर प्रारंभ हो चुका है। तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर करते हुए तैयार। फुल टॉस, नो बॉल का इशारा। इस बीच लगभग कंधे की ऊंचाई पर गेंद थी और नो बॉल घोषित। इस बीच स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके और विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटका, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। नो बॉल के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर, जबकि ओवर नंबर 4 की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। तो फ्री हिट इस वक्त घोषित अंपायर द्वारा और फ्री हिट गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। इस बार फ्री हिट काफी ढीली गेंद थी, लेकिन इस ढीली गेंद का फायदा उठाने में सफल। अंतिम क्षण में गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद निचला हिस्सा टकराने के बाद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और इस बीच बल्लेबाज को रन इस गेंद पर नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है। कुल मिलाकर 21 रनों पर अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। लेग बाय का इशारा और लेग बाय के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। एक धीमी प्रगति यहां पर करता हुआ माही स्ट्राइकर्स और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद कट करना चाहा, बैकवर्ड पर जाने के बाद चूके सीधे पहुंची गेंद विकेट कीपर के हाथों में और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 22 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए नजीर दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर मौजूद है। सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर। 23 and 4 overs has been game shown and slower progressing here now for Mahi Strikers after being losing the toss and put it to bat by Millennium in the match number 6 of this tournament. First session is now progressing here. जहां तक सवाल है बचे हुए 2 ओवर का, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन देयर रिमेनिंग 2 ओवर्स ऑफ देयर इनिंग्स। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए तारू इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए
ये गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। प्लेसमेंट गलत था और भुगतान उन्हें करना पड़ा, और इसी के साथ विकेट नंबर 4 यहां पर गिर चुका है। लॉन्ग ऑफ पर गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद सीधे पहुंची लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। हबीब नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद, नॉन स्ट्राइक रन पर, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तारू दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। तारू अगली गेंद, ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, परफेक्ट लेग स्पिन डिलीवरी, और गेंद को खेलने के प्रयास में चूंकि बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेल दिया, रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो गेंद को खेला खूबसूरती के साथ, गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर जरूर मौजूद थे, जी तोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की, लेकिन गेंद को लपकने में असफल, गेंद तक पहुंचने में असफल कहना पड़ेगा, और गेंद उनके हाथों को चीरती हुई सीधे सीमा रेखा के सीढ़ियों पर स्टेप्स पर टकराती हुई 4 रनों के लिए, स्टेप्स पर टिप्पा खाती हुई 4 रनों के लिए 29 रन, और ओवर नंबर 5 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 5 overs completed, 29 on the board, 4 wicket lost, and just a last over remaining in their innings. तो अंतिम ओवर यहां पर शुरू होता हुआ, और गेंदबाज हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त अंतिम ओवर लेकर तैयार था। हाथों पर तो विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर की और निकलते हुए थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकली मिसफील्ड यहां पर, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का, वाइड का भी इशारा हो चुका है। 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द लास्ट ओवर इन फैक्ट। और अगली गेंद, इस बार गेंद को खेला इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर थोड़े से पीछे तैनात, क्लीन कलेक्शन, सिर्फ 1 रन मिलेगा, और यहां पर दूसरा रन तो यहां पर शायद वहां पर थ्रो करते, निशाना समझो पर टकराता शायद, तो वहां पर बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन जैसे ही फिर विकेट कीपर ने भापा की, फील्डर ने भापा की वहां पर कोई बैकअप नहीं है, उन्होंने थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा, और इस बीच बल्लेबाज आसानी के साथ दूसरा रन यहां पर प्राप्त करते हुए, पूर्ण करते हुए, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इन 2 रनों के साथ 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, lofted this time, he's got the distance, it's a huge one, it's a biggie, ऐसा कहना पड़ेगा। बल्ले के बीचों बीच गेंद को कनेक्ट करते हुए लेग स्पिन गेंद थी, गेंद के लाइन पर बल्ले को लाते हुए गेंद को इस वक्त उछाल दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोरबोर्ड बढ़कर अब पहुंच चुका है 39 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन द लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स, और 4 गेंदें अब कुल मिलाकर उनके पारी में बाकी। शबीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, हबीब एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए। अगली गेंद इस बार ड्राइव किया मिड ऑफ पर, मिसफील्ड, बैकअप होता हुआ लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और दूसरा रन यशस्वितम यहां पर प्राप्त कर चुके हैं, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 41 रनों के ऊपर। 41 फॉर द लॉस ऑफ 4 wicket with just 3 balls to go in their innings.
तो शायद बैट्समैन बैटर अपना बल्ला यानी बैट बदलने के लिए इस वक्त पेविलियन की ओर लौटते हुए, या फिर शायद कुछ और बात है, देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर रिटायर्ड हर्ट के रूप में पेविलियन वापस लौट चुके हैं। शायद काफी थके मांदे नजर आ रहे थे और आखिरकार उनका स्थान ग्रहण करते हुए इस वक्त दूसरे बल्लेबाज। 3 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में, और गेंदबाज शमीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। नए बल्लेबाज, नए बैटर दूसरे छोर पर मौजूद। फुल टॉस, लेकिन इस गेंद का पूरी तरह फायदा उठाने में सफल। जब तक विकेट कीपर अपनी दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर। 42 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट विद जस्ट अ couple of balls now remaining in their innings. शमीर bowls the next delivery, अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार ऑन साइड पर मोड़ा खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर कलेक्शन। दूसरे प्रयत्न में रन के लिए दौड़ पड़े। इस बीच रनआउट का खतरा नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। थोड़ी सी झिझक स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज द्वारा पहला रन पूर्ण करने के बाद, और फलस्वरूप नॉन स्ट्राइक रन पर यहां पर रन आउट होता हुआ 43, 5 विकेट के नुकसान पर। 43 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एंड जस्ट अ लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन द इनिंग्स। अंतिम गेंद बाकी। तो अंतिम गेंद लेकर बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और गेंदबाज शमीर उनकी पारी की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। दाहिने हाथों पर विकेट स्वीप किया इस वक्त। डीप स्क्वायर लेग पर, डीप मिड विकेट पर कहना पड़ेगा। 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा, आसान सा रन आउट होता हुआ। तो पारी की अंतिम गेंद पर विकेट नंबर 6 गिर चुका, और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप एंड माय स्ट्राइकर स्टार्टेड स्लोली बट फिनिश्ड वेल with 44 for the loss of 6 wickets, and now the target is 45 for मिलेनियम। तो 44 रन माही स्ट्राइकर्स ने बनाए, और 45 रन का लक्ष्य इस वक्त मिलेनियम के लिए उन्होंने रखा है निर्धारित 6 ओवर में। एग्जैक्टली 7.5 रन पर ओवर द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम। और देखते हैं यहाँ पर मिलेनियम के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते या नहीं। टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟೀಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. धन्यवादಗಳು. So 45 द टारगेट एंड देयर इनिंग्स नाउ गोइंग टू स्टार्ट, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर द्वितीयार्ध की पारी की शुरुआत होगी. धन्यवाद. राइट फ्रॉम द नेक्स्ट मैच, एवरी मैच विल बी ऑफ 5 overs. प्लेयर्स प्लीज नोट. थैंक यू.
So thank you very much, Gopi. And again, the 45, the target for team Millennium to win this match. The bowlers did the job, and all after that, batters of Millennium to justify the effort of their bowlers to restrict their opposition for 45. And maybe this total looks to be reachable, but I think some effort which is badly required here from the batters of Millennium strikers if they wanted to if we wanted to win this match. So comparison between the two teams, Millennium strikers, they are in their first match they tied the match against Max Challengers, and at the same time my strikers they lost against Sports World. Left and right combination, Shabir is in non-strikers end, and the striker left hand batter just number 3 Yasir. The bowler from the far end Shahik, and signal came from umpire towards Swastik, our scorer, and the first ball will going to start from the far end. Mid on, mid off, mid wicket, square leg, short fine leg, short mid wicket. Nicely turns that one down to mid wicket region for a easy single. With that single, Yasir is off the mark, and Millennium started their chasing and one without loss of any wicket. The two fielders we are talking about in the deep, different field set for the opening batters. For Shabir, they are sending one fielder into deep in the square leg, and one at mid wicket. They are calling now long off fielder to stand in the deep straight long off region, and one mid wicket is there. Now long on, long off and mid wicket, short mid wicket, short square leg, the behind the square, short fine leg, short third man, short cover point, short extra cover, short mid off. Now long on going towards the mid on, long off going towards the long on, and there is no protection in the deep in the offside region for Shabir. Shahik. I request captain of team Sports World, please be reported immediately for the toss. The first ball, next ball outside and on leg stump. Shabir wanted to reach that one, missed it completely from his bat. Wicket keeper behind the stump did the rest. Ali team Sports World ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ತಮಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Shahik around the wicket to Shabir. Again the identical mirror display of previous delivery, same line and length, and Shabir again not able to read that delivery which is coming around his legs. The passing is bat and pad. Wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. One without loss of any wicket. Shahik has got a good start from the ball, giving some protection in the onside, two protection, bowling that line which is around leg stump. One more delivery. This time I think it's called as a wide, because a slight a bit of ball is just changing its line, and good collection there by the wicket keeper, but rightly umpire says it's a wide. Two on the board. Shaikh trying one similar delivery around the legs. One more big wide. Good collection there by the wicket keeper behind the stump. One more wide means one more run added to total 3 on the board. Sports World ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Shahik to Shabir. Again Shabir wanted to get that one down to square leg region, missed it completely. Leg by call by umpire, with the addition of that leg by Skobar Namuzan to 4 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Shahik so far bowled a very tidy line and length. Shahik again from the far end. Round the wicket delivers. Ball, lovely delivery indeed. Perfect line to ball to the left-hander batter. It's not so easy.
when it's right and left combination, but Shaikh is stick with his line and land so far. Got a very good start from the ball. Just a 4 runs in that over, the first over of the power play. Millennium have to get 45 runs. Again, wanted to drive that one. Wicketkeeper completely missed out the delivery. By call by umpire. Frustration for the bowler. Good over there from bowler Shahik in dedication. Excellent over. Just 5 runs. 5 runs came from that over. And now target 40, which is really required in a remaining 5 overs. 30 ball. 40 runs required for the victory. The match is looks to be, it's very interesting. The toss is going on here, and my partner Gopi doing that tossing ceremony. Yes, captain of sports world once again, the lucky captain winning the toss. Consecutive 2-3 toss, which is won by sports world. Razak. Rashid. Going to be a wide punishable from umpire. Starts with a wide. Rashid. Scoreboard numbers on to 6 without loss of any wicket. Rashid. This time he swings and not quite able to get that one from the middle of the bat. But just a single here. The placement is, field placement is right down at square leg. And just a single here for the batter Yasir. With the addition of that single score, numbers on to 7 on the board. In the over number second is in progress. 7 balls completed and 7 runs scored. That brings Shabir into strike. Rashid. This time catch it is a call again. Lucky escape here for Shabir. Ball landed safely. The cow point fielder is not quick enough. Ball is in there for a while, but effort is not good enough. Shabir survives again. One more single, looking for the expansive drive, lofted drive on the offside region. 8 on the board. This time, mistimed stroke, opportunity for the extra cover fielder to take the catch. He completes the catch. Yashir departs. Looks like he's not that much of comfortable in the middle. Going for the lofted drive, mistimed, and back into pavilion. First wicket gone. It's 8 for the loss of 1 wicket. In the off ball, the batsman is a little bit excited by seeing that line. Going for the off drive. Mistimed that one. Abu is a new batter in. He's a wicket-keeper batter for the side of Millennium with some responsibility in his shoulder. He's walking towards the middle. Rashid has got a very important breakthrough. Right, a over. The ball is curving back into the batter. But fails to make a contact with the bat. In the again, wicketkeeper fails to collect the ball. Dotted delivery. Abu. No ball call by umpire.
because 3 fielders behind the square. That fielder in the deep square leg a little bit behind the square, which is that's why umpire called it no ball. Behind the square there is the 3 fielders, and it's going to be a free hit delivery. The golden opportunity for the Abu to get one big shot in that free hit delivery. Rashid. Balls to Abu going for the big swing. Missed it completely. White call by umpire. Rightly so. Ajmal Jokate in the delegation has got no hesitation. The free hit will going to continue. Free hit delivery will going to continue as Abu ball. Abu back on strike again. Good delivery there from Rashid for that free hit delivery to ball that tidy line. Abu will going to get one single for that. It's 11 on the board for the loss of 1 wicket. Over number 2 is in progress. Very hard to combine some boundaries and big shots. So far there is no boundary at all. And from the bat, what we are talking about so far, there is no boundary at all. But here you go, the 6. Shabir is just not thinking about that boundary, but he was just thinking about that 6, and ball is just landing. One ball remaining in this over, please. Not 1 ball remaining. Umpire, please note 1 ball remaining. Umpire, please note 1 ball remaining in this over. 1 ball remaining. It's 17 for the loss of 1 wicket. Shabir is the right time. He's breaking the shackle. Again the bowler Rashid from the far end. 17 on the board. This time up and over the infield, but the ball will go into collected by the fielder. But here is ample time for the batter Shabir to complete that couple of runs. So 8 runs came from that last 2 balls, and very handy for team Millennium to back in the game. 19 for the loss of 1 wicket after completion of over number 2. 19 means they need to get another 26 runs to win this match. In 24 deliveries, 26 they need to get. They're really productive over. 16 runs came from that over of Rashid. Not 16, it's 12 runs came from that over. (16) in fact came from that over. So 19 for the loss of 1 wicket. The bowler Shaikh will go into continue, I think so. And after that second over of very expensive over, the challenge, my challengers captain thinking about Shaikh to come and ball some good overs. The Shaikh takes his own time to deliver the ball. Abu is on strike. Long on, wideish long on, almost between long on and mid wicket. One at square leg behind the square. Deep backward point, deep long off. There is the extra cover. Short third man, short fine leg, mid on. Going to be a wide, one more extra. A lot of extras which is considered by challengers. So it's 20 on the board. You cannot do that mistake when you're depending a total score like 45 to win the match for their position. They need to restrict that wides and no balls. This time, oh my goodness, looks like it's a cotton balled. Abu back. It's got a top edge. He wanted looking for the improvisation. Maybe that ball hitting his handle off the bat, and the wicketkeeper, bowler himself, even wicketkeeper actually, he doesn't know where the ball is. And certainly it's a wicketkeeper's catch, but the bowler knows that the presence of mind
that wicketkeeper is in a confusion, so himself is running towards the strikers and completes the catch. Good presence of mind here from the bowler Shahik. Please note, afterwards there will be a third round of the league match will going to start. A team Sports World versus team Matrix and little bit correction. And the team Matrix, team Sports World captain won the toss and elected to field first, and that match will be of all the matches. Now afterwards it will be of 5 overs. That means 1 hour power play, 5 bowlers to be used. That means each bowler will going to get 1 hour. 1 hour going to be a power play. Please note the change for the next match onwards. Shahik. Bowls. Right time Nazir looking for expansive drive. Not quite getting hold of that one properly. And the score remains on 19-20 on the board. 20 for the loss of 2 wickets. 25 more runs required for the victory. The over number 3 is in progress. Shaikh a little bit trying for a restriction in this run. Again, what we are talking about the restriction, but these will not going to restrict the runs, but that is going to make it so easy for the opposition. 1+1. 2 valuable runs in the form of extras. 22 on the board. 23 more runs required for the victory. Shaikh bit struggling to get his line and length. Extras which is conceded, the number of extras conceded in that 3 overs. Again inside edge of the bat, Shabir tried to drive the ball, but checking the stroke in the last moment, inside edge of the bat, he got a single. With that single, Skoba Namuzan to 23 for the loss of 2 wickets in the over number 3 is in progress. Good going for team Millennium. Drives the run, catch it is a call, but fielder at cow point was standing in the edge of the circle. After one bounce he wanted to collect, missed it completely. One more single added total. With the addition of that single, Skoba Namuzan to 24 on the board for the loss of 2 wickets. 21 required for the victory. Shabir this time quite watchful. You know exactly they're right back in the game. No need to panic at all, just rotating the strike and doing the right job. One more single, and with the single, Skoba Namuzan to 25. 25 means 20 required from 19 balls. Shaikh. Round the wicket. This time chipped it just over that cow point fielder. They're turning out for the second, but again they made it quite easily. The cow point fielder is not that much of quick. You always need a quick fielder inside the ring, but I don't think that fielder is that much of quick enough to stop that couple of runs. So with that couple of runs, Skoba Namuzan 27 for the loss of 2 wickets. That means in the remaining 18 balls, they have to get another 18 runs to win this match. 6 runs per over is the required run rate. Looks like team Millennium are in the game. And if the challengers wanted to back in the game, I think they needed some wickets. They needed 1 or 2 good overs quickly. It's time to change in community box. Again, I would like to ask Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you.
धन्यवाद सतीश। सो द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए हमसे दूल और छोर से गेंदबाज नहीं और की पहली गेंद 18 गेंदों पर 18 रन चाहिए। पहली गेंद इस वक्त गेंद को खेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाया और जब तक गेंद को स्वयं गेंदबाज फॉलो थ्रू में फील्ड करते 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर। 17 गेंदें बाकी, 17 रन चाहिए विजय के लिए। और जम्मू गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। 17 गेंदों पर 17 रनों की दरकार और गेंदबाज जम्मू दाहिने हाथ राउंड द विकेट, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और जम्मू एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद चिपकी है इस बार लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर काफी पीछे तैनात, एक बात रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, सीधा थ्रो पहुंचा और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है रन आउट के रूप में। बल्लेबाज 1 रन प्राप्त करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े डेंजर एंड पर, जो कि काफी जोखिम भरा साबित हुआ और आखिरकार इस पहले के नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ लॉन्ग ऑफ फील्डर का गेंदबाज के हाथों में और गेंदबाज ने थ्रो को रिसीव करने के बाद तेजी के साथ विकेट चटका दिया और इसी के साथ शमीर की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। 12 रन शमीर ने बनाया, ही स्कोर 12 रन इंक्लूडिंग 1 6 और एक बेहतर पारी खेलने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए और इसी के साथ मिलेनियम हंटर्स का विकेट यहां पर गिर चुका है, विकेट नंबर 3, जबकि स्कोर है 30 रन। इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मैच नंबर 6 इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट दुबई मार्केट प्रीमियर लीग 2023 डीपीएल सीजन 3 2023 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ और जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है दुबई मार्केट फ्रेंड्स मार्केट रोड मैंगलोर ने। और ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहां पर करते हुए और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है। नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, वाइड लेग स्टंप से बाहर की ओर निकली गेंद और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर। 14 रन और चाहिए विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी है 16। अगली गेंद, ये गेंद स्क्वायर ऑफ द ड्रॉप्स, इजीएस्ट चांस, स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस गॉन इन वेन। आसान सा मौका यहां पर गवाते हुए गेंद सीधे पहुंची थी कवर पॉइंट फील्डर के हाथ में। देखिए किस तरीके से हुआ, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच और कैच को इस वक्त छोड़ चुके हैं। तो 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 13 रन चाहिए, 15 गेंदें बाकी, 13 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 15 डिलीवरीज। डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त मैक्स स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को इस मैच गेंदबाजों को इस वक्त इस मैच में वापसी, माही स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को कहना पड़ेगा इस मैच में वापसी करने के लिए। विकेट कीपर चूके और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ 22 के रूप में स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। हर गेंद पर रन रोकना जरूरी बन चुका है इस वक्त गेंदबाज और फील्डर्स के लिए। और ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड। 34 और अपनी सही लेंथ और लाइन को यहां पर तलाशते हुए गेंदबाज जम्मू और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। तो अब इक्वेशन सीम्स टू बी मच इजियर नाउ फॉर मिलेनियम हंटर्स। और जहां तक सवाल है इस वक्त, अब जम्मू गेंदबाजी करेंगे राउंड द विकेट। 10 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 14। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद फुल टॉस और इस बार बेहतर तरीके से गेंद को लपक लिया। हालांकि चंद गेंद पहले आसान सा कैच उन्होंने छोड़ा था, लेकिन इस बार बेहतर तरीके से गेंद को लपका अपने बाईं ओर डाइविंग लगाते हुए फील्डर ने और इसी के साथ ये विकेट नंबर 4 यहां पर गिर चुका है। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, स्क्वायर ऑफ द विकेट और बेहतरीन तरीके से गेंद को लपक लिया गया अपनी बाईं ओर डाइविंग लगाते हुए फील्डर ने। तो 13 गेंदें बाकी, 10 रन चाहिए विजय के लिए। और आउट होने वाले बल्लेबाज सुल्तान, माफ कीजिए नजीर, आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 5 रन बनाने के बाद। और सलीम का आगमन होता 1 नए बल्लेबाज के रूप में, यूसुफ माफ कीजिए,
इस वक्त यूसुफ का आगमन होता हुआ और वो इस वक्त सामना करेंगे चम्मू की ओवर की अंतिम गेंद का। और चम्मू आखिरी बार इस ओवर में फ्लाइट 10 ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया। एक रन के लिए कोई फील्डर वहां पर नहीं, दूसरा रन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 36 रनों पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स एंड ओवर नंबर 4 हैज बीन गेम्स टू एन एंड। 4 ओवर की समाप्ति 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर और सिर्फ 9 रन चाहिए अब विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी हैं 12 यानी 2 ओवर्स बाकी है। So the bowler brought into the attack from that side in. हबीब गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 12 गेंदों में चाहिए 9 रन। डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त गेंदबाजों को। ये गेंद पहली गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, पॉइंट पर मिसअंडरस्टैंडिंग। ओह दैट इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी और यहां पर आसान सा रन आउट स्ट्राइकर एंड पर था, लेकिन घूमकर जैसे थ्रो किया फील्डर ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर। हड़बड़ाहट में देखिए किस तरीके से हुआ था, आधे पिच तक आ गए थे बल्लेबाज। थ्रो पहुंचा इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर और बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित वापस है। तो वहां पर उनके निर्धारित समय जो कि समाप्त हो चुका है, तो एक फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। और अब 11 गेंदें बाकी है और रन चाहिए 9 रन टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स। और गेंदबाज हबीब गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार। लेग स्टंप से बाहर वाइड, 8 रिक्वायर्ड, 11 बॉल्स रिमाइनिंग। और फिर से एक बार हबीब अपने गेंदबाजी के भाग पर जाते हुए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद बेहतर शॉर्ट मैन पर रन के लिए दौड़ पड़े। ओ निशान इस वक्त गेंद चूक चुकी है शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों से। हड़बड़ाहट में गेंद उनके हाथों से चूकी थी और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन प्राप्त कर लिया और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 38 रनों पर। 38 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 4 टॉप एंडर्स बैट्समैन ऑलरेडी बैक इनटू द पेविलियन। और हबीब गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 7 रन चाहिए, 10 गेंदें बाकी। यह गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलती हुई, शफल होते हुए स्टंप से एक्सपोज करते हुए गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। डॉट गेंद, ऐसे ही चंद और डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त कमबैक करने के लिए माही स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को। ऑफ स्टंप से बाहर वाइड, 39। एक सही गेंद फेंकते हैं तो एक वाइड फेंकते हैं और यहाँ पर हर गेंद पर बल्लेबाज के ऊपर डॉट गेंद के साथ दबाव बढ़ता है तो वाइड गेंद के साथ वो दबाव उतर जाता है। 16 रन एक्स्ट्रास के रूप में प्रदान कर चुके हैं, अतिरिक्त के रूप में प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज। इस बार एक्स्ट्रा नंबर 17, 17वां अतिरिक्त रन। 40 नाउ द स्कोर, just 5 more runs now they have to score for victory in remaining 8 balls। तो गेंदबाज इस वक्त तैयार, बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली गुड वन। एंड नाउ 5 of 7, 5 of 8 in fact, 8 balls and 5 runs required। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद ड्राइव किया हल्के से गेंदबाज की दाईं ओर से मिड ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। 41 नाउ, 4 रिक्वायर्ड, 7 बॉल्स रिमाइनिंग।
कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है मिलेनियम हंटर्स के बल्लेबाजों को। और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज हबीब गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि शॉट फाइन लेग पर रन्स नहीं मिलेगा। 6 balls and 4 runs required and a fifth over has been came to an end। अंतिम ओवर में चाहिए जीत के लिए 4 रन। So the last over starts in their innings। अंतिम ओवर यहां पर शुरू होता हुआ मुनीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और रनों की सख्त जरूरत इस वक्त बल्लेबाजों को मिलेनियम हंटर्स के, जबकि माही स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को चाहिए डॉट गेंदे और विकेटें इस अंतिम ओवर में। 4 रन चाहिए अंतिम ओवर में। 4 to get from last over। 6 balls remaining। पहली गेंद फर्स्ट बॉल कम्स दाहिने हाथ राउंड द विकेट, lofted and taken inside the fence। और मैच में कशिश अभी भी बरकरार। गेंद को उछाला था जरूर, करारा प्रहार किया था, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं। और लॉन्ग ऑन पर फील्डर जो खड़े हुए थे फ्लैटर वर्जन पर उनकी ओर गेंद आई, और इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ उन्होंने लपका सीमा रेखा के अंदर। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, और बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका गया। 5 गेंदें बाकी, 4 रन चाहिए अब विजय के लिए। 4 runs to get from 5 deliveries। इंतजार है इस वक्त नंबर 7 बल्लेबाज का मिलेनियम हंटर्स की ओर से। तारू नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद। 4 रिक्वायर्ड और 5 डिलीवरीज। और फील्डिंग में इस वक्त जमावट कुछ हद तक करने के बाद गेंदबाज इस वक्त तैयार। मुनीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट तारू के लिए। फ्लाइटेड ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ। मिड विकेट पर 1 रन मिलेगा। बेहतर थ्रो, और यहां पर तारू की पारी समाप्त। दूसरा रन लेने की हड़बड़ाहट, और आखिरकार कोई मौका नहीं क्रीज पर वापस लौटने का नॉन स्ट्राइकर एंड पर। तो एक और विकेट गिर चुका है, 1 रन भी जुड़ चुका है इस वक्त उनके खाते में। 3 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 4। मुशफिक का, तो इस वक्त मुशफिक का आगमन होता हुआ, और मुशफिक ने पिछले मैच में अंतिम गेंद पर जब छक्के की जरूरत थी टाई के लिए, तो छक्का लगाकर अपनी टीम को टाई करवाया था। और यहां पर देखना है कि इस मैच में भी वो अपने टीम को सही मंजिल तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। एक और फील्डर इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है, और अब सिर्फ 3 रन चाहिए, जबकि गेंदें बाकी है 4। तो कुल मिलाकर यहां पर कुछ हद तक बातचीत चलती हुई खिलाड़ियों के बीच में। काफी वक्त यहां पर जाया कर चुके हैं फील्डिंग साइड, और अभी भी 4 गेंदें उनकी पारी में बाकी। फील्डिंग में अभी भी कुछ जमावट करते हुए इस वक्त कप्तान माही स्ट्राइकर्स के, और गेंदबाज मुनीर इस वक्त तैयार। नए बल्लेबाज मुशफिक इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, और मुनीर गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद इस बार चूके, और विकेट जरूर उखाड़े गए, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। 3 balls and 3 runs। Now the tide is slowly turning। 3 गेंदें
3 रन चाहिए और यहां पर दबाव इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर साफ दिखाई देता हुआ। मैच में कशिश अभी भी बरकरार रहा और अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए तो अब तक बेहतर गेंदबाजी इस ओवर में कर चुके हैं गेंदबाज मुनीर। 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं मुनीर। अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर तैयार। 3 of 3। हियर वी गो। दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद ड्राइव किया मिड ऑन पर 1 रन मिलेगा। थ्रो पहुंचा लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए। 2 गेंदें 2 रन। अब पिछले मैच के हीरो मुशफिक का आगमन यहां पर हो चुका है। स्ट्राइक पर आ चुके हैं और देखते हैं वो बचे हुए 2 गेंदों में क्या करते हैं। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। वाइड लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर को इस वक्त थोड़ा सा स्क्वायर तैनात किया जा रहा है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग ठीक सीमा रेखा के पास एक फील्डर मौजूद। 2 गेंदों में 2 रन चाहिए। 6 खिलाड़ी बीच गज के दायरे के अंदर तैनात इस वक्त। केवल 3 मात्र खिलाड़ी बीच गज के दायरे के बाहर मौजूद सीमा रेखा के पास और फील्डिंग में अभी भी जमावट कुछ हद तक चलती हुई। 2 of 2। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। 2 गेंदें 2 रन चाहिए और दूसरी अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। हियर वी गो। यह गेंद इस बार चूके वाइड का इशारा। वाइड इस वक्त घोषित और इसी के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। तो अब सिर्फ एकमात्र रन चाहिए यहां पर मिलेनियम हंटर्स को बचे हुए 2 गेंदों में और गेंदबाज मुनीर इस वक्त तैयार मुशफिक के लिए। डॉट डॉट 1 of 1। So the pressure is now building up। 1 रन 1 गेंदे। क्या यह श्रृंखला का दूसरा टाई मैच होगा? क्या मिलेनियम हंटर्स इस मैच में विजय दर्ज करेगा? देखते हैं इस मैच निर्धारित गेंद पर, मैच डिसाइडिंग बॉल पर क्या होता है। तो मुनीर का भविष्य इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा माही स्ट्राइकर्स का भविष्य मुनीर के हाथों में जबकि मिलेनियम हंटर्स का भविष्य मुशफिक के हाथों में। और देखना यह है कि कौन से खिलाड़ी अपने टीम को सही मंजिल तक पहुंचा पाते हैं। लगभग 4 से 5 खिलाड़ी इस वक्त घिरे हुए बल्लेबाज को। 1 of 1। हियर वी गो। राइट आर्म राउंड द विकेट बाउल्स। ये गेंद इस बार स्वीप किया मुशफिक ने और अंतिम गेंद पर स्वीप करते हुए अपने टीम को रोमांचक विजय यहां पर दिला चुके हैं 4 विकेटों से मैच के अंतिम गेंद पर। सो अ फैंटास्टिक मैच केम्स टू एन एंड which won by Millennium Hunters in the last ball of the match against Mahi Strikers by 4 wickets and with that thrilling victory they bagged the complete point. So match number 6, the fantastic match has been came to an end and now the match number 7 is now going to start between Team Sports World versus Team Matrix और वो मैच शुरू होगा चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम उपस्थित होंगे जब अगले मैच की शुरुआत होगी यहाँ पर। धन्यवाद। थैंक यू। So man of the match of this match award goes to Nazir of Millennium Hunters. All-rounding performance came from him. He conceded just 8 runs in his 2 overs and capturing 2 wickets. And in the batting, he scored 5 runs. And because of this all-rounding performance, he bagged the man of the match award. I request Nazir of Millennium Hunters, please come on to the stage and receive the man of the match award from organizer. Thank you.
Thank you very much. And we are into the match number 7. And seventh match of this prestigious DPL season 3. Meanwhile, we have a chief guest. We have a very respective Sri Bharat of Toy World, Dubai Markets. Warm welcome for you for this prestigious DPL season 3, which is proudly organized by Dubai Market Friends Mangalore. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಟಾಯ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಭರತ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Thank you very much. And one more good match between our team Sports World versus Team Matrix, because both the teams they were one matches out of their 2 league matches. So this is going to be very important for both the teams to get the victory. So that competition going to be very very high. Team Sports World captain won the toss and elected to field first, and so that captain himself going to bowl the first over. Right arm over the wicket. Razak bowls. Batsman drives that one. They're going for the quick single. That looks like the Salim, the experienced campaigner down at short mid wicket, misfielded, so that they completed the first run. So Nawaz is up the mark with a single, one without loss of any wicket. Ashraf is a batter and went for the sweep shot. Misses the line completely. The wicketkeeper behind the stump did the rest. And there is no chance at all for any run. This time Ashar is lofted at one across the line of fielder in the mid-wicket. Might be having some bad time at mid-wicket region, not really able to control that speed, and he might be lost his balance while collecting the ball. Have a look at that one replay. Maybe that the grass in that area will makes a little bit difficult for that fielder to grip properly, and couple of runs has been taken. 5 overs game, please note, and 1 hour going to be a power play. Improvisation nicely down to deep square leg region. Fielder there in the deep. They're running hard, looking for the second. In comes the throw, but they completed that couple of runs. Good running between the wicket, especially Nawaz, who is running towards a dangerous end. This is the striker's end. But there is a fielder in the square leg, new to move towards his right to cover the little bit ground to field the ball. And here is Nawaz complete a couple of runs. And with that couple of runs, Kobar Namuzan to 6 on the board without loss of any wicket. This time far outside the line of off stump, so that no hesitation from umpire Shiraj to call that white with the extra Kobar Namuzan to 7 lead correction, 7 on the board without loss of any wicket. This time flicks it off his legs down to square leg. They're going for the quick single. They made it quite easily in the end. So with that single, Kobar Namuzan to 8 now without loss of any wicket. First over is in progress. Razak bowls. Wicketkeeper misses it. Frustration for the bowler. By call by umpire. One more extra. So first over completed after completion of first over, and the team Matrix are 9 without loss of any wicket. A good start from these opening batters for team Matrix. And Sports World bowled the first over power play, only 1 over power play. We can understand that the number of over which is reduced from 6 to 5, so that only 1 hour power play. 5 bowlers to be used. Salim brought into attack, experienced campaigner for the side of
team world, sports world. So, sports world taking their time to set a field and need to make it pass because you are the loser if you are not able to ball in a time. The punishment waiting for you that need to bring one or two fielders inside the ring when a crucial stage. So need to be a very, very important to set a field very quickly. The Salim, the bowler, bowling right arm over the wicket. Again, lovely there, wicket keeper. This time chance of run out throw which is not up the mark and overthrow comes into play. And they're coming back for the second chance of run out and is gone. Ashrar, maybe he's in a safer hand, and but I don't think he run well between the wicket. There is a certain couple of runs, no doubt at all, and he's responded very late to his partner because already Nawaz who completes the run in the strikers and non-strikers end. Then afterwards, Ashrar started to run and pays the penalty for that. First wicket is gone of Team Matrix. 10 for the loss of 1 wicket. Afraid is a new batter in, slowly walking towards the middle. This is just number 18. Salim so far very impressive bowler for the side of Sports World team, Sports World, who really bowls a good line and length, tidy line and length. Simple bowling action, isn't it? But the consistency in the line and length is very important. What we're talking about the consistency, but this is not a consistency we're talking about. Bowled a big wide this time. One more single, 16 for the loss of 1 wicket. Correction, 11 for the loss of 1 wicket. So this is the one line. Salim always bowls outside the line of off stump, always testing the temperament of the batter with that line. Afraid is a new batter in, facing next delivery. What we are talking about, this man is absolutely have got a magical bowling performance. Some magical deliveries. We can see that ball, simple off cutter, but a ball is taken an extra deviation, extra turn. Afraid looking for the drive, misses the line completely. Have a look at that one. The ball pitched outside the line of off stump, but the nip back into the batter. Afraid completely misreading that delivery, going for the expansive drive. Misses the line completely. Wicket number 2, which is back into pavilion. It's 11 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 2 is in progress. Riaz. The bowler, the batter, new batter, experienced campaigner for Team Matrix. This time very, very interesting. But definitely it's going to be wide because the batsman not completely changed his position to play the reverse sweep. He's changing his mind. But I think the bowler is just wanted to bowl that outside and like stump because the batter trying for the reverse sweep. It's 13 on the board. This time swings that one beautifully. One bounce into the fence for 4 runs. Nawaz knows that if he played that one in the straight bat, it's not so easy. So slide a bit across the line, he moved and improvising cricketing stroke. You know exactly, fine leg inside the ring. Down to deep, fine leg boundary for 4 runs, and scoreboard jumps into 16 for the loss of 2 wickets. The over number 2 is in progress. This time again, Nawaz so good on his legs. Beautifully flicks that one off his legs, running hard between the wicket. He's a very good runner. This is a good batting performance here from Nawaz in this particular over. Runs are coming very freely. It's 19 on the board. Even after that power play, Nawaz really finding the gap and hitting the ball in the gap. And that
boundary and a couple of runs in the previous last two deliveries for Team Matrix. Again, that wide. Absolutely, Salim today in this particular match is just lost his concentration over the line. Now he's bowling round the wicket. Changing the angle. 20 on the board. Round the wicket delivers. Oh, full toss. My goodness. He's gone. Good catch taken by the short mid-wicket fielder. I'm not really understood what Nawaz is doing that for the full toss delivery. Maybe his intention that last delivery I want to keep the strike for the next over. I want to pick the single. Have a look at that one. Full toss and just flicks that one. Loose stroke. Good catch. Very good catch. His finger just under the ball. And umpire rightly so. It's a clean catch taken by the fielder. Ansar is the fielder down at short mid-wicket, taken a very good catch, just diving to his front, just above the ground level. He managed to complete the catch. 20 for the loss of 3 wickets after completion of over number 2. Expensive over from Salim. 11 of runs from that over. 20, which is the total score of Team Matrix. The new batter in is Hafiz. They lost a huge wicket of Nawaz, who was looking so good in the middle. Went for the reverse sweep and managed to complete the single for that. Leg by call by umpire. Missed it completely from the bat. Nasir, the bowler. The very, very good all-rounder for the side of Sports World, is in action. Afrid. This time opportunity to run out in the non-strikers, and one more wicket is back into pavilion of Team Matrix. Then once again they lost the momentum what they got in the previous over. They're losing their wickets quite cheaply. It's not a good running between the wicket. It's a good thinking there from Team Matrix to taking that much of risk for the run. Absolutely no chance at all for that batter Afrid to survive from that run out. It's 21 for the loss of 4 wickets in the over number 3 is in progress. Nasir. To Riaz. Again Riaz reverse sweeping the ball. Just a single there for the batter Riaz. One more single. With that single score moves on to 21 on the board. 22 correction. Lovely delivery. This is a line what Nasir loves to ball outside the line of off stump. Sadiq completely missing it completely from the bat. Again around the legs. Excellent line. This time a change of line there from Nasir. The previous one outside the line of off stump. The next one is outside the line of leg stump, but well in the reach of the bat of the batter. And again drives, missed it completely. Good over there from Nasir. Excellent over. 3 overs completed. After completion of over number 3, Team Matrix, they lost the momentum and that over. But Nasir is about outstanding over of just a single run. It's 22 for the loss of 4 wickets, Team Matrix. Asir is a new bowler, and again the problem continues here for Team Matrix. The wickets are falling like a house of cards of Team Matrix.
No many runouts. Absolutely, it's no understanding at all. 3 runouts so far. Out of that, 5 wickets. The new batsman in is jersey number 33, Asif. Right arm over the wicket, delivers. Asir. Bowler's back drive is gone. Excellent catch taken on his follow through. Cut and bowled. Riaz departs. Problem continues here for Team Matrix. It's 22 for the loss of 6 wickets. Mukhtar is a new batter, young cricketer for the side of Team Matrix. Mukhtar played that one very well, square of the wicket down to cow point region, but just for a single, protection is given for that stroke at a deep cow point region. Mukhtar off the mark and the scoreboard moves on to 23 for the loss of 6 wickets. Drives it on nicely down to extra cover. They're running hard right in the gap. Fumble from the fielder. They're looking for the third, but in comes a throw. Already there are 3 runouts. They doesn't want to lose one more wicket in the form of runouts, so that settle for that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 25 for the loss of 6 wickets. The over number 4 is in progress now. Last 8 deliveries left in their innings. Asir, right arm over the wicket, bowls. Went for the sweep shot. Chance of run out, direct it, but looks like the umpire is unmoved. Yes, he says not out. Even though directed, but not good enough to stop the single. 26 for the loss of 6 wicket. Last time in this over. Mukhtar is on strike. This time he drives that one down to mid-wicket region, right in the gap. And easy couple of runs for Mukhtar. So 5 completed. After completion of 5 overs, Team Matrix, 4 overs, correction. After completion of over number 4, it's 28 for the loss of 6 wicket. 1 hour remaining in their innings. Got 4 wickets in hand, and wait and see how many runs they will go into score in that remaining last over. For the latecomer, you're watching this fantastic Dubai Market Premier League 2023 Season 3, which is proudly organized by the Friends of Dubai Market, Mangalore. In this historical UCG cricket ground, and with the nickname of Lots of Underarm Cricket, providing the opportunity for the talents from Dubai Market to come and perform in their busy life, slight a bit of relaxation by playing cricket. Not only give the mentally give relaxation, but physically you will always going to be fit when you are engaged in a game. This time lovely shot, swings that one, one bounce, a lovely piece of fielding there by the fielder, and they're turning out for the third, but they're now not getting that third because throw quickly coming from that fielder. Good piece of fielding there by the fielder down at deep square, like just a couple of runs. And with that couple of runs, Kobada moves on to 30 on the board for the loss of 6 wickets. There's a chip that one, opportunity, catching practice for the fielder down at wideish long on. 7th wicket departs here of Team Matrix. No other option at all. Is you're dealing with the last over. Need to look for some acceleration of run rate. But he's not really controlled that stroke. Half-hearted chip costing a wicket. It's 30 for the loss of 7 wicket. Still 4 balls left in their innings.
So next match, match number 8 will be played between My Strikers versus Max Challengers. Please get ready. Both our teams, captain, please be reported here for the tossing ceremony. Wide outside the number leg stamp and a bonus run for Team Matrix. 1 plus 1, 2 more to the total. With that couple of runs, Koba moves on to 32 for the loss of 7 wicket. Lovely shot there from Mukhtar. 1 bounce, 2 bounce into the fence for 4 runs. This is a very important runs came from the bat of Mukhtar in that last over. Excellently played, isn't it? Slide a bit shuffle across the line of delivery. Across the line, very good contact with the bat. And the ball running towards a deep square leg boundary for 4 runs. Good placement as well there from a young man. And with that boundary score numbers on 36 for the loss of 7 wicket. Again, he drives that one. Again, they will go in for the couple of runs here. The very, very important runs coming here for Team Matrix from the bat of Mukhtar. 2 very good cricketing stroke there for Mukhtar. 38 on the board. He's coming as a number 8 batter, but he's very handy. Again, across the line. He's so good. Frustration for the bowler. This time he's gone. Not Mukhtar, but his partner Azhar back into pavilion. That's it. One ball remaining. The Azhar's innings, which comes to an end. Total score is 39. 1 ball remaining. Mukhtar will go in to retain the strike. No. Looks like Mukhtar is in non-strikers then. The new batter will go in to take the strike. Just number 45. Saddam. The 45, just number. So, last deliver. Oh, this is a Spectra wide. 1 plus 1, 2 more to the total. Very important runs coming in this last over for Team Matrix. They're till the 4 overs, they're looking so good. Nasir bowled well, Asir bowled well. But this is a really expensive over from Zunaid. This time wicketkeeper will go in to make the formalities of making a run out in a non-strikers, and that's it. Run out taken place. Mukhtar, the batter, will go in to be out. So 41 is the total score of Team Matrix, and it's a good score on the board. 42 will go into the target for mobile team Sports World, and wait and see how well Team Sports World will go into win this match. Both the teams really, out of 2 matches, they won 1 each. So it's going to be a very interesting which team will go into win this match. We will take a short break here, and after that short break, my friend Gopi will go in to take over the microphone. Thank you.
धन्यवाद सतीश. So the next match is now going to play between Mahi Strikers versus Max Challengers, and because of that I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for the toss procedure. Mahi Strikers ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮಾಹಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭರತ್ ಮಾಲಕರ ಟಾಯ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದುಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ದುಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಹರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಭರತ್, proprietor of Toy World Dubai Market Mangalore, heartily welcome to you sir. धन्यवाद सतीश. तो मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है. एक रन बन चुके हैं पहली गेंद पर और एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड का एक रन पिला से नुकसान के और 42 रन उन्हें बनाने निर्धारित 5 ओवर में. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें 42 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो. और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद स्वीप करना चाहा. अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए और रबाई का इशारा इस बीच अंपायर द्वारा. और रबाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर. और गेंदबाज नवाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद चिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ. बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई और काफी नहीं, गेंद को रोकने में असफल और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ द बैकवर्ड. गेंद को इस वक्त स्कूप किया था खूबसूरती के साथ और गेंद इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा की ओर बढ़ रही थी. गेंद को रोकने की जीतोड़ कोशिश जरूर की लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए और इस बीच 4 रन प्राप्त कर चुके हैं बल्लेबाज नासिर. बेहतरीन स्ट्रोक और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर. नवाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए again swings and this time is just fell short of a fence. One bounce and into the fence. Fantastic struck came from the bat of Nasir. Have a look at this in the replay. देखिए किस तरीके से एक्सक्विजिट पोजीशन के साथ गेंद को इस वक्त पुल कर दिया था. देखिए एब्सोल्युटली मार्वलेस.
डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर। एक टिप्पा खाने के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। 2 लगातार चौके यहां पर लग चुके हैं नासिर, और इस बीच नवाज एक बार फिर से तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर, बॉल 2 फॉर सादी, लेग स्टंप एंड वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, ये गेंद इस बार स्कोप किया, लॉन्ग ऑफ पर मौका जरूर है यहां पर फील्डर के लिए, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। इनफील्ड क्लियर करते हुए इस वक्त गेंद को उछाला था, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए, ऐसा करना पड़ेगा। नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन गेंद इनफील्ड क्लियर करते हुए निकली। मिड ऑफ से फील्डर दौड़े लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए लॉन्ग ऑफ पर, और इस बीच 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। यह गेंद चिप किया लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन मिलेगा, दूसरा रन मिलेगा जरूर, दूसरा रन भी मिला, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर 15, 16 रनों पर 16 without loss, and this is an absolutely terrific start made by the batsmen of Team Sports Watch. 16 runs they scored after their completion of first over, chasing the victory target of 42 in 5 overs, and still in overall calculation it's going to be 26 runs more now they have to score for victory in remaining 4 overs. So that means 24 balls left and 26 more runs now they have to score for victory, with the required run rate of exactly 6.5 runs per over they have to score for victory. Still they got all 10 wickets kept intact, they got all 10 wickets in their hand, और दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ। सादिक का गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार रजाक, तो ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट सादिक, ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार बाउल्ड ऑफ हिज लेग्स, स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को मोड़ना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, और आखिरकार गेंद बल्ले को वंचित कर सीधे जा टकराई मिडल और लेग स्टंप पर। गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और यहां पर रजाक की पारी पर पर्दा गिर चुका है। 0 पर आउट होकर रजाक पेविलियन वापस लौटते हुए, और पहला विकेट खो चुका है यहां पर टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड 16 रनों के ऊपर। It's 16 for 1. तो नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ रजाक के निर्गमन के बाद, और रिन्नो नए बल्लेबाज, और सादिक की गेंद का सामना करने के लिए तैयार। सादिक अपनी पहली गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं यहां पर रजाक का, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और सादिक फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन, मच स्ट्रेट लाइन, गेंद तक पहुंचना चाहा, नहीं पहुंच पाए, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार सादिक का गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद तक पहुंचे लेकिन ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए, लेकिन गेंद इनफील्ड क्लियर करते हुए निकले बैकवर्ड थर्ड मैन की तरफ। दूसरा, इस बार खतरा हो सकता था अगर दूसरा रन लेते, लेकिन अंतिम क्षण में अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए बल्लेबाज नासिर ने, और इस वजह से सब कुछ यहां पर सुरक्षित, वरना नासिर का बेशकीमती विकेट यहां पर गिर सकता था। तो सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। सादिक का दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार चिप किया, गेंद को इनफील्ड क्लियर करते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और सादिक अपनी ओर की अगली गेंद इस बार रिन्नू के लिए,
दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद उछाला लॉन्ग ऑन पर, गैप पर गेंद इस वक्त जा चुकी है और 2 रन आसानी के साथ इस बीच बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। वाइड लॉन्ग ऑन और डीप इन विकेट के बीच में जो लंबा अंतर है उस अंतर पर गेंद को इस वक्त उछाला था और 2 रन आसानी के साथ बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। रन आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के लिए 22 रन बन चुके, 1 विकेट के नुकसान पर 20 और रन ठीक बनाने हैं उन्हें और विजय के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद टॉप एज मौका, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं, एक्स्ट्रा कवर पर जब तक चंद टिप्पों बाद आफ्टर कपल ऑफ बाउंसेस गेंद को फील्डर फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 23 नाउ, 7 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, बेटर वन कंपेयरिंग टू द फर्स्ट ओवर। और 2 ओवर के बाद एक बेहतर स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड 23 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 23 for 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs, 19 runs to get from remaining 18 deliveries, and the situation, the equation seems to be much easier now for them. तो मुख्तार इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए 24 गेंदें और 19 रन चाहिए, पहली गेंद लेकर तैयार। इस बार स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है और 18 रन अब चाहिए विजय के लिए। गेंदें बाकी है 17, 18 टू गेट फ्रॉम 17 बॉल्स। अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एंड ड्रिवन दैट वन परफेक्टली डाउन टू अ लॉन्ग ऑफ फॉर अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। रन्स आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के लिए। और फिर से एक बार गेंदबाज मुख्तार, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, और यहाँ पर परिवर्तन के तौर पर लेग कटर गेंद फेंकनी चाहिए थी, लेकिन गेंद उनके हाथों से अंतिम क्षण में फिसलते हुए सीधे चले गए विकेट कीपर के हाथों में। रन 1 रन मिले वाइड के रूप में। और फिर से मुख्तार, ये गेंद बेहतर गेंद थी, उछाला गेंद को लॉन्ग ऑन पर सीधे फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। रिन्नू की पारी समाप्त। गेंद को उछाला जरूर था, देखिए किस तरीके से उछाला था गेंद को, लेकिन प्लेसमेंट गलत था, और लॉन्ग ऑन पर, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्हें कुछ ज्यादा दौड़ इस वक्त लगानी नहीं पड़ी इस कैच को लपकने में, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। 26 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है। इट्स 26 for 2। तो आशीर का आगमन यहाँ पर होता हुआ, और वो इस वक्त सामना करेंगे मुख्तार की गेंदों का। 15 गेंदें उनकी पारी में फेंके जा चुके हैं, 15 गेंदें और फेंके जाने बाकी। रन्स इस वक्त चाहिए 16, और ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, और गेंद डिलीवर करते ही वहां पर फिसल कर गिर गए और घुटनों के बल बैठ गए थे, और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए 27 रन बन चुके हैं। 15 गेंदें 15 रन चाहिए विजय के लिए। और मुख्तार एक बार फिर से तैयार था, इन हाथों पर था विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, इम्प्रोवाइजेशन करना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए। गेंद जब तक शॉट कवर पर फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 28 2 विकेट के नुकसान पर, 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। नासिर एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए 2 चौका अब तक झड़ चुके हैं, सामना करने के लिए तैयार मुख्तार की गेंदों का। लेग कटर गेंद उछालना चाहा, टॉप एज, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट हो चुके हैं। 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ
ओवर द विकेट मुख्तार की गेंद, रिवर्स शॉट, इम्प्रोवाइजेशन गली की दिशा में, 1 रन का इजाफा, 30 2 विकेट के नुकसान पर, 30 for the loss of 2 wicket, 3 overs have been bowled, still they are looking right on top, and 12 runs just they have to score for victory in remaining 12 balls, and still the equation seems to be much easier for them at this situation. 8 wickets they got in their hand, 8 wickets they got kept intact, और यहाँ पर कमबैक करना है तो निस्संदेह यहाँ पर टीम मैट्रिक्स के गेंदबाजों को कुछ घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देना होगा, क्योंकि लक्ष्य कुछ हद तक आसान इस वक्त दिखाई देता हुआ टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के लिए। 12 गेंदों पर 12 रन बनाने हैं, और उस घातक गेंदबाजी की तलाश में इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए गेंदबाज कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से असरार इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पर 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 11 गेंदें बाकी, 11 रन चाहिए, 11 रिक्वायर्ड ऑफ 11 बॉल्स। फुल टॉस, स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ निकाला, लेकिन कवल पॉइंट पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद टॉप एज, गेंद पहुंची इस वक्त वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर। 1 more run added to the total, it's 33 now for the loss of 2 wicket, 9 required, 9 balls remaining, और सेंसिबल क्रिकेट ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त अपनाते हुए, नासिर और आशिर गेंद को ड्राइव कर दिया वाइड इस लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 8 runs they have to score for victory in remaining 18 overs, और अगली गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, डॉट गेंद, काफी देर के बाद एक डॉट गेंद इस वक्त गिरी है, और स्कोर है इस वक्त 34, 8 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 7, और अगली गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, फील्डर थोड़े से पीछे, 1 रन मिलेगा, क्लीन कलेक्शन, और 1 ही रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा। 35 for the loss of 2 wicket, and 4th over has been came soon, and 6 balls remaining, last over remaining, and 7 runs to get from last over। 7 रन चाहिए अंतिम ओवर, यानी बचे हुए 6 गेंदों में विजय के लिए टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड को। तो सद्दाम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए 6 गेंदें 7 रन चाहिए, 7 रिक्वायर्ड ऑफ 6 डिलीवरीज, स्टिल द मैच इज नाउ इक्वली बैलेंस्ड, और सामना इस वक्त करते हुए आशिर, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, रनों की सख्त जरूरत इस वक्त टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के बल्लेबाजों को, जबकि डॉट गेंदे और विकेटों की दरकार टीम मैट्रिक्स के गेंदबाजों को। पहली गेंद, गेंद को उछाला इस वक्त मिड विकेट पर, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ी, स्पीड थ्रो पहुंचा अंतिम क्षण में, रन आउट यहां पर होते होते बच चुके हैं। तो इस गेंद पर नजदीकी मामला था, लेकिन अंतिम क्षण में यहां पर रन आउट होते होते बच चुके हैं, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे, और आखिरकार यहां पर 2 रन प्राप्त करने में सफल। तो 5 गेंदे और 5 रन चाहिए विजय के लिए, 5 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट 5 डिलीवरीज, स्टिल द मैच इज इन बैलेंस। तो फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलते हुए, अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए, विकेटों के ऊपर गिल्लियां यानी बेल्स इस वक्त रखते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है।
6 गेंदे 7 रन चाहिए विजय, माफ कीजिए 5 गेंदे और 5 रन चाहिए विजय के लिए। और इस बीच सद्दाम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद कट करना चाहा, वाइड का इशारा इस बीच, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। हालांकि कॉट बहान के लिए मांग की थी गेंदबाज और विकेट कीपर और कुछ खिलाड़ियों ने, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का। 38 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद के लिए तैयार, फुल टॉस, गेंद को इस वक्त गेंद तक पहुंचे, गेंद को खेलना चाहा, पॉइंट पर गेंद को खेलने में सफल और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 39 रनों पर। और 4 गेंदे 3 रन चाहिए। Lofted straight down the ground and this time he finished the match in a style with the boundary. तो चौके के साथ मैच की समाप्ति यहां पर कर चुके हैं। नासिर के बल्ले से चौका लग चुका है, चौका नंबर 3 और इसी के साथ टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड इस मैच को 8 विकेटों से जीत चुका है, 3 गेंदे बाकी रखते हुए टीम मैट्रिक्स के खिलाफ, और इस विजय के साथ वो परिपूर्ण अंक प्राप्त कर चुका है। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲೆನೋ ಕಾರ್ನ ಬೀಗದ ಕೈ ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ, ಕೀಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ। ಬಲೆನೋ ಕಾರ್ನ ಕೀಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು। So man of the match, undoubtedly, the man of the match award goes to Nasir, who scored 22 runs unbeaten, and he played a sheet anchor for their side, and also in the bowling department he bowled very economically. He conceded just 1 run from his 1 over, and because of this all-rounding performance he bagged the man of the match award. I request Nasir of Team Sports World, please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizer, Nasir of Team Sports World. So congratulations for him and best of luck for the rest of the matches of the tournament. And we'll be back right after the short break. Thank you. Dhanyawad.
ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಆಶಿಕ್ SR ಮೊಬೈಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಲ್ತಾಫ್ ಜಿಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ದುಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಬೋತ್ ಸರ್. हर्टली वेलकम टू यू बोथ सर. थैंक यू. तो द मैच नंबर 8 नाउ गोइंग टू स्टार्ट और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को ड्राइव कर दिया. गेंद पहुंची इस वक्त मिड ऑन की दिशा में. 1 रन का इजाफा और हबीब का खाता इसे 1 रन के साथ खुल चुका है और रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. मुश्ताक का गेंदबाज माही स्ट्राइकर्स है जो कि पहले बल्लेबाजी करता हुआ और इस बीच मुश्ताक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए टॉप एज मौका. फील्डर विकेट कीपर गेंद तक नहीं पहुंच पाए. अंतिम क्षण में गेंद उनके आगे टिप्पा खाते हुए, हालांकि जी तोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की थी लेकिन आखिरकार गेंद को लपकने में असफल और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि 2 गेंदें उनके पारी के यहाँ पर फेंके जा चुके हैं और दोनों बल्लेबाज 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते. इस बार हबीब सामना करने के लिए तैयार मुश्ताक की गेंदों का और मुश्ताक दाहिने हाथ राउंड द विकेट लेग स्टंप से बाहर और शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को रोका गया अंतिम क्षण में और 1 रन का इजाफा वाइड के रूप में यहाँ पर हो चुका है. तो 20 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका गया था अंतिम क्षण में और थोड़ा सा भी चूकते तो निस्संदेह गेंद उनको बीट करती हुई फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर निकल सकती थी. डीप फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. तो यहाँ पर रोकने में सफल. 20 गज के दायरे के अंदर वाइड के रूप में 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है. 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम द बॉलर. एक्स्ट्रा क्विकर और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. बल्लेबाज को वंचित करने के बाद रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर रुक चुका है 3 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. मुश्ताक एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते. इस बार उछाला लंगोल पर लेकिन सीधे फीडर के हाथों में. प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और भुगतान इस वक्त बल्लेबाज को करना पड़ा. लगोन के फील्डर ने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है माही स्ट्राइकर्स का. तो 3 रनों पर पहला विकेट खो चुका है यहां पर माही स्ट्राइकर्स. इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस एंड हबीब डिपार्ट्स फॉर 1. तो 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर और अस्कार इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद और गेंदबाज तैयार. ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ. गेंद पहुंचते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद का पीछा करते हैं 2 फील्डर और गेंद सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई. जब तक सीमा रेखा के अंदर काफी लंबा दौड़ लगाकर गेंद को रोका जाता. बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का. खूबसूरती के साथ गेंद को स्वीप किया था. हालांकि स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं था लेकिन फाइन गेंद निकली थी इस वक्त स्क्वायर लेग फील्डर की बाईं ओर से. आखिरकार 3 रन बल्लेबाज इस वक्त प्राप्त करने में सफल और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. तो इस बीच अंपायर अरशद कुछ कहते हुए खिलाड़ी से और पहला और एकमात्र पावर प्ले का ओवर इस वक्त प्रगति पर. गेंदबाज मुश्ताक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार. बेहतर गेंद थी. ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा और गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और बाई का इशारा अंपायर का. ओवर की समाप्ति फर्स्ट ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 7 रन बिना किसी नुकसान के. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर इट्स 7 विदाउट लॉस फॉर माही स्ट्राइकर्स.
ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೊಲೆನೋ ಗಾಡಿಯ ಒಂದು ಬೀಗದ ಕೀ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕೀಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೊಲೆನೋ ವಾಹನದ ಒಂದು ಕೀಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀಲಿಯನ್ನು ತಂದೊಪ್ಪಿಸಿದವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮಾಲಕರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಕೀಲಿಯನ್ನು ತಂದೊಪ್ಪಿಸಿದವರಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. तो रमीज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. एंड ये स्टार्ट्स ऑफ विद राइट डिलीवरी और स्कोर इस वक्त रुक चुका है. कुल मिलाकर 7 रन एक विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और इस बीच गेंद पहुंची शॉर्ट बैन पर. 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है. कुल मिलाकर 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट in the over number 2 in progress. Sweep किया इस बार, not quite mid wicket, in fact he's got a single for that stroke. और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है. कुल मिलाकर 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 9 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. रन्स ज़्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए एक एक्सक्विजिट बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त यूट्यूब पर किया जा रहा है किंग स्पोर्ट्स द्वारा. और ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, वाइड का इशारा. 1 रन का इजाफा, 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है. 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. रमीज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. यह गेंद इस बार सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा. गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. तो ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जमने की कोशिश यहां पर करते हुए. और रमीज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ता है. रिवर्स शॉट एंड दिस टाइम he just got that one from the middle of the bat and lofted that one down to deep cover point fence for a boundary. तिरछे बल्ले के सहारे गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ विद अ ट्विस्टेड बैट और चौका प्राप्त करते हुए बल्लेबाज. तो रमीज चौका इस वक्त प्रदान कर चुके हैं और शाहिक के बल्ले से ये चौका इस वक्त लग चुका है. गेंदबाज तैयार. बेहतर गेंद टॉस की गई थी. फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकलते हुए स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में. चूंकि 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 14 रन. माही स्ट्राइकर्स जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर. 2 ओवर्स कंप्लीटेड, 14 ऑन द बोर्ड, 1 विकेट्स लॉस्ट फॉर माही स्ट्राइकर्स. और इससे पहले की तीसरा ओवर प्रारंभ हो. आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए अंग्रेजी में अब सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा. ये सतीश, धन्यवाद, थैंक यू. Thank you very much, Gopi. 2 overs completed, 14 for the loss of 1 wicket. Team Max My Strikers against Max Cricketers. Max Challenges, in fact. And from the far end, Salim brought into attack. Down the wicket, he is going to ball to the right-hand batters. Went for the reverse sweep. They will go and get a single for that. And batter got a single there. And Asghar got a single here. Previous match, Sports World won the match and they're grabbing the very important 2 points of the league stage. Looking for the improvisation, and there is a single there. Both the batters are dealing with the singles in this particular over. And Salim almost is not giving any opportunity for both the batters to deal with any kind of big shots. 16 for the loss of 1 wicket in the over number 3rd is in progress. Salim again from the far end, round the wicket, Dediverse. Again went for the sweep shot, not quite getting that one from the bat, so that leg by call by umpire. And with that single, Skuban moves on to
A 17 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Salim round the wicket. This time lofted. One bounce collected by the fielder at long off. Good piece of fielding and good return as well. Very good throw. Very good throwing arm there from the fielder in the long off. Just over the bails. No question of second run. 18 for the loss of 1 wicket. Salim again. Right arm round the wicket. Oh, lovely delivery. Absolutely perfect line. Asghar completely missed out. Leg by call by umpire. One more addition. Addition of that single scored moves on to 19 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Salim round the wicket bounce. Oh, this is a clever thinking there by the bowler, isn't it? Absolutely perfect one there from Salim to finish the over. The batter wanted to reverse sweep and the bowler doesn't really settle for that. Bowled outside the line of leg stump. Excellent over there from Salim. The very tidy over indeed. So after completion of over number 3 and team my strikers are 19 for the loss of 1 wicket. My strikers full toss, swings and opportunity, no. Unbelievable. Once it looks like the batsman not really controlled that stroke, but ball went with the direction of the wind and they got the distance. Absolutely fantastic struck. Pulls that one very handsomely. Have a look at that one. Ball gone high up in there. Once it looks like the fielder will going to get the catch, but ball is going and going, and because he played that one very high, the direction of the wind is really helping that stroke to get the distance. Again, they went for a big shot. Scoreboard is at 26 now. Good score on the board. My strikers, they need to open the accounts in the points table. 2 matches they played, but they fails to get any single victory here. So that is a very important match for my strikers. They need to win this match. One more single. With the addition of that single score, was under 27. Very important runs coming in this over. 8 runs in the 3. Oh, lovely piece of work. Lovely piece of work by the wicketkeeper behind the stump. The batsman have to walk towards the pavilion. Asghar departs. Absolutely good work, isn't it? Have a look at the wicketkeeper behind the stump. It's not so easy for the wicketkeeper when you are gathering a ball outside the line of leg stump. When it's outside the line of leg stump, it's so difficult in the sense because the wicketkeeper really difficult for him to judge the line of the ball, and because batsmen are coming right in front of the line of the ball, so that it's going to be challenging for the wicketkeeper when you are gathering the ball outside the line of leg stump. Excellent work by the captain of the side. It's 27 for the loss of 2 wickets. Rauf. This time a bounce, wide call by umpire, rightly so. That ball is moving away from the right-hander batsman, further away. 28 for the loss of 2 wickets. Ayub. To Rauf. Rauf drives that one towards the mid-wicket. They're running hard. The fielder in the deep mid-wicket region. Oh, there is certain couple of runs because not a good throwing arm from the fielder in the deep. Batsman out to settle for the single. 29 for the loss of 2 wickets. Shahik back on strike. This time Shahik lofted in the sense he will going to find the fielder in the long off. It's not an area you need to choose when you are playing in the evening, especially in the UCG cricket ground. That you are playing against the direction of the wind. The ball just landing, isn't it? Once it looks like ball will going to get the distance, but because of that stroke which is played against the direction of the wind, and even that played very high, a very good capturing from the cameraman of King Sports, absolutely perfect landing, and
the landing of the ball. Along with that, the cameraman also nicely captured. And Azim, and thanks to the all teammates of King Sports, done a great job for the success of this cricket tournament. Naufal, the owner of King Sports, Izaz Mani is the operator, Azim, cameraman, Tamim Chamo, the cameraman, and Irfan, our in the online scoring department. Thank you very much, all King Sports staff, for making this cricket tournament most memorable one. Full toss, swings at one, and one bounce into the fence for 4 runs. Good placement. Even though that is a full toss, but you need to deliver that one right in the gap, isn't it? Just standing across the line of the delivery, and just you want to say thank you very much for that full toss. One bounce into the fence for 4 runs. Important runs coming here. It's 33 for the loss of 3 wickets. The over number 4 is in progress. 5 is in progress, a little bit correction. This time he got the distance. No, its fielder is finding there. Absolutely perfect catching there from the fielder. Once it looks like the batter, Shahik. Rauf, I think he really got a good connection. Have a look at that one. Again, he shuffled across and almost drags the ball from outside the line of offhand. Swings at one, but he fails to get the distance as the fielder is absolutely very quick to move to his right to take the very good running catch in the end. It's 33 for the loss of 4 wicket in the over number 5 in progress. Saha is the new batter in. Taha, little bit correction. Zakwan. Leg spinner is in action. Going for the drive. Missed time that one, just a single there. With that single, Skobana moves on to 34 on the board. Again, Zakwan bowls. That was excellent thinking from the young batter Farooq's point of view, that he picked up a single down to backward point region. With that single, Skobana moves on to 35 for the loss of 4 wicket. Again, lovely delivery, and we need to wait for the umpire signal. Leg by, deflected from the leg of the batter. 36. My strikers, it's a must-win match for them. He wanted to remain in the competition. Oh, wicket keeper, absolutely sloppy. Just passing under his hands, trying hands. That's it. 5 overs completed. The My strikers. Captain might be happy with that total. That 37 they managed to score, and they set a target of 38 to win this match in stipulated 5 overs. 30 ball and 38 runs required for the victory, and mostly the 6.17 runs per over, the required run rate for team defending champion. In fact, max challengers have to get 38 if they wanted to register their third victory of their league stage matches. We'll take a short break here, and we are back in front of you live and exclusively. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर लक्ष्य है पहली गेंद बॉल्ड आउट ऑफ स्टंप अप्रूटेड इन हिज वेरी फर्स्ट डिलीवरी एंड अ गोल्डन डक फॉर द बैट्समैन। तो पहली गेंद पर आयूब ने गेंद को बोड़ना चाहा, लेकिन गेंद को ज्यादा तेज रफ्तार लेते हुए अंतिम अक्षर में उनके बल्ले को वंचित करते हुए ऑफ स्टंप को उखाड़ कर ले गए और इसी के साथ ये विकेट आयूब का गिर चुका है। पहली गेंद पर मैक्स चैलेंजर्स अपना पहला विकेट खो चुका है 0 पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त माही स्ट्राइकर्स का, तो उनके लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी बन चुका है। अगर इस मैच को वो हारते हैं तो निस्संदेह इस श्रृंखला के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त करने की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। तो यहां पर पहली गेंद पर विकेट दिला चुके हैं माही स्ट्राइकर्स के गेंदबाज शाही का, और अब नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज जो कि इस वक्त शाही का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद टॉप एज मौका ड्रॉप्ड अंतिम क्षण में कुछ हद तक मुश्किल सा मौका था, गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन गेंद को अपने हाथों में दबोचने में असफल, लेकिन बेहतर प्रयत्न उन्होंने जरूर किया और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए शाही का और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार मुश्ताक। तो फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए गेंदबाज शाही पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर और मिड विकेट फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है डीप मिड विकेट पर, ये जानते हुए कि बल्लेबाज जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और शाही के इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर फाइन निकल चुकी है और गेंद फाइन लेग सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, दिशा से भटकती हुई गेंद थी, न सिर्फ विकेट कीपर के पहुंच से बाहर बल्कि शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के भी पहुंच से बाहर होती हुई गेंद इस वक्त निकल चुकी है डीप फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो 5 रन वाइड के रूप में उनके खाते में जोड़े जाएंगे और इन 5 तोहफे के रनों की बदौलत स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और इस बीच शाही का गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त मिड ऑन पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस बीच अकरम सामना करने के लिए तैयार। शाहिक रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, खाली क्षेत्र पर गेंद निकली गली पर 1 रन का इजाफा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला लेकिन बल्लेबाज यहां पर बच चुके हैं और 2 रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಬಿ ಹಬ್ ಹಾಗೂ ಮಿಲೇನಿಯಂ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮೋಬಿ ಹಬ್ ಹಾಗೂ ಮಿಲೇನಿಯಂ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕರೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ. तो पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर 10 रन अब तक बन चुके हैं और गेंदबाज शाही के इस वक्त तैयार। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, अंतिम क्षण में 1 रन का इजाफा, लेग बाय का इशारा, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं और इसी के साथ यहां पर स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक लंबा ओवर इस वक्त प्रगति पर शाही का और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर और दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेला, नॉट क्वाइट मिडल गेट, रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ 1 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं
और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 12 रनों पर। तो एक बेहतर शुरुआत, एक विकेट अपनी पारी की पहली गेंद पर खोने के बावजूद एक बेहतर शुरुआत यहां पर मैक्स चैलेंजर्स कर चुका है। 12 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट after completion of first over for Max Challengers, chasing the victory target of 30-18 overs set by Mahi strikers. 26 to get in remaining 4 overs. That means in remaining 24 dead overs, exactly 6.5 runs per over they have to score for victory. तो पहली गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। डॉट गेंद और गेंदबाज हबीब गेंदबाज यहां पर प्रारंभ कर चुके हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, गली की दिशा में गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। तेज तरीके का रन इस वक्त चुराते हुए बल्लेबाज और लेग बाय का इशारा अंपायर का, और लेग बाय के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। निस्संदेह कम बैक करना है माही स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को, तो इस वक्त एक घातक गेंदबाजी उन्हें करनी होगी क्योंकि लक्ष्य छोटा सा इस वक्त मैक्स चैलेंजर्स के सामने। सिर्फ 38 रन उन्हें बनाने हैं 5 ओवर में, और यहां पर एक बेहतर गेंदबाजी की जरूरत है गेंदबाजों को। इस बार बैक टू द बॉलर की दिशा में, लेकिन यहां पर जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, फॉलो थ्रो में बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल सके, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए हबीब गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद पैरों पर गेंद टकराई, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था चूंकि, और गेंद इस वक्त विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला, और एक बार फिर से गेंदबाज हबीब गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और इस ओवर में अंतिम बार हबीब गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। तैयार, swings and this time he finds the gap as well, और गेंद को बेहतर तरीके से जब तक रोका जाए, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर शायद फील्डर ने किया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और बल्लेबाज को सिर्फ 1 रन इस गेंद पर मिला। तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 ओवर्स कंप्लीटेड। एक बेहतर ओवर हबीब का समाप्त हो चुका है जिसमें सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किया, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रनों पर पहला विकेट खो चुका है यहां पर मैक्स चैलेंजर्स। 22 runs to get in remaining 18 balls now. Still the match is now equally balanced. चम्मू इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। नया ओवर प्रारंभ होता हुआ हमसे दूर वाले छोर से, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। पहली गेंद, ये गेंद को खेल दिया, स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े, नजदीकी मामला लेकिन निशाना चूका यहां पर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और चम्मू फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। इस वक्त
ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ, सीमा रेखा से बाहर, शायद छक्का हो सकता है, देखना पड़ेगा। 6 रन घोषित इस वक्त अंपायर द्वारा, ऐसा कहना पड़ेगा। जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड, एक्सक्विजिट फुटवर्क। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। गेंद को उछाला किस तरीके से, लगभग गेंद सीमा रेखा के 1 या 2 इंच बाहर टिप्पा खाती हुई, और ये छक्का इस वक्त जुड़ चुका है उनके खाते में। और इस छक्के के साथ द थिंग्स गेटिंग मच इजियर नाउ फॉर मैक्स चैलेंजर्स। 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड अ परफेक्ट स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ मुश्ताक। और गेंदबाज तैयार। ये गेंद एक बार फिर से उछालना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ, 1 रन मिलेगा इस बीच। लेग बाय का इशारा, और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। सिर्फ 14 रन अब चाहिए विजय के लिए, 15 गेंदें बाकी, 14 रन टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 15 डिलीवरीज। और गेंदबाज चम्मू गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद, 1 रन मिलेगा। 1+1 2 रन इन फैक्ट एडेड टू द टोटल। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जस्ट 12 रन्स मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होता हुआ यहां पर मैक्स चैलेंजर्स। और इस बीच अगली गेंद लेकर चम्मू तैयार। 15 गेंदें कुल मिलाकर उनकी पारी में बाकी, 13 रन और चाहिए विजय के लिए। यह गेंद उछाला, लॉन्ग ऑफ पर मौका हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और आसानी के साथ इस कैच को लपकने में सफल। उछालना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर से नाकामयाब, और गेंद को लपका गया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर। तो इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेट नंबर 2, मुश्ताक की पारी समाप्त। 9 रन उन्होंने बनाए 1 छक्के की मदद से, और एक छोटी मगर बेहतर पारी खेलने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है मैक्स चैलेंजर्स का 26 रनों के योग पर। 26 for 2। ट्वेल्व रन्स दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ, न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। Moby Hub, after won the toss, they elected to field first in the next match against Millennium Cricketers, and that match is now coming up live exclusively right after this match. तो 12 रन अपने विजय से दूर, 14 गेंदें बाकी, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, लॉन्ग ऑफ पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रन। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है, गेंद से ज्यादा रन से ज्यादा गेंद इस वक्त पड़े हुए हैं, और इत्मीनान भरी बल्लेबाजी, ऐसा कहना पड़ेगा सेंसिबल बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत है बल्लेबाजों को मैक्स चैलेंजर्स के। और ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन का इजाफा, लेग बाय, 28 द स्कोर, 10 रिक्वायर्ड, 2 ओवर्स लेफ्ट। दो ओवर 10 रन। और जहां तक सवाल है इस वक्त माही स्ट्राइकर्स का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक घातक गेंदबाजी इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए, और उस घातक गेंदबाजी की तलाश में गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। अकरम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद चूंकि शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन मिलेगा। 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 9 रन्स टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स। और फिर से एक बार गेंदबाज अपने गेंदबाजी पर तैयार। मुनीर गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट। गेंद को बड़ी मुश्किल के साथ इस वक्त ढकेला, बल्ले का भीतरी किनारा टकराया था, और आखिरकार इस गेंद पर बल्लेबाज को रन नहीं मिला। बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आए थे, अलोंग द ग्राउंड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 28 रनों पर। अगली गेंद लेकर तैयार, गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट। इस बार जस्ट कॉल फॉर अ बिग वन, अगेन अ डॉट बॉल। अब 9 रन
और गेंदे बाकी हैं 9, 9 of 9 now. 9 balls and 9 runs required. और गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए driven down to long on for a single 30 for the loss of 2 wickets. 8 balls 8 runs required. तो इस बीच अपने गेंदबाजी पर जाते हुए मुनीर अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. रिवर्स शॉट पॉइंट पर रन एक मिलेगा. नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो करते तो शायद कुछ बात वहां पर बन सकते थे, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर फील्डर ने थ्रो किया, पॉइंट फील्डर ने, और फलस्वरूप बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ तेजी के साथ बदल चुके थे. 31 रन बन चुके दोनों आरंभकार को खोने के बाद. फिर से एक बार गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद उछालना चाहा, चूंकि डॉट गेंद. बेहतरीन ओवर की समाप्ति. इस ओवर में सिर्फ 3 रन यहां पर मुनीर ने प्रदान किए. अब गेंदे बाकी है 6 और रन चाहिए 7. 7 required of last over. So what a fantastic over came student from Munir. He conceded just 3 runs in this over. और अंतिम ओवर में देखते हैं यहाँ पर क्या मैक्स स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज अपने मैक्स चैलेंजर्स के बल्लेबाज अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं. Next match, Moby Hub will take over Millennium Thunders, and because of that I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. निसार गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए. मैच निर्धारित ओवर यहां पर शुरू होता हुआ मैक्स स्ट्राइकर्स से मैक्स चैलेंजर्स की पारी में. और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त निसार तैयार. यह गेंद टॉप एज, मौका, फील्डर पकड़ने में सफल, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. हालांकि पहले प्रयत्न में गेंद उनके हाथों से छूटी जरूर है, लेकिन दूसरे प्रयत्न में इस कैच को लपकने में सफल है. तो यहां पर कुछ चोट आई है फील्डर को. मैदान पर लेटे हुए हैं और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है.
तो सब कुछ सही सलामत इस वक्त खिलाड़ी के लिए, कुछ हद तक चोट जरूर आए थे लेकिन अब वो ठीक ठाक संभल चुके हैं और गेंद खेल एक बार फिर से पुनरारंभ यहां पर होता हुआ। 7 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी। The things getting stiffer a little bit for the batsmen of Max Challengers now. और गेंदबाज इस वक्त तैयार। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट इनटू द गैप एज वेल और गेंद एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई और जब तक गेंद को रोका जाता सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े और तीसरा रन यहां पर अपील इस वक्त जारी है और इस बार आउट घोषित। तो 2 रन जुड़ेंगे और 1 विकेट गिर चुका है। अब गेंदें बाकी है, 4 रन चाहिए, 5। तो 5 रन चाहिए, 4 गेंदें बाकी। तीसरा रन पूर्ण करते समय वहां पर विकेट गिरा रनआउट के रूप में नॉन स्ट्राइक रन पर और गेंदबाज निसार इस बीच गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला है इनटू द गैप एज वेल। काफी लंबा दौड़ इस वक्त फीट लगाते हुए लेकिन गेंद को रोकने में सफल और गेंद बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इंप्रोवाइजेशन करते हुए देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था, फाइन गली और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से चौके के लिए और इस चौके के साथ नाउ द स्कोर्स आर लेवल्ड। रनों की बराबरी हो चुकी है, सिर्फ 1 रन चाहिए अब विजय के लिए मैक्स चैलेंजर्स को। बेहतर चौका इस वक्त सईफ के बल्ले से लग चुका है, तो सिर्फ 1 रन चाहिए विजय के लिए और दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करने के बाद अपने अपने स्वस्थानों पर लौटते हुए और गेंदबाज इस वक्त तैयार। निसार loves it, clearing the infield. That's it. He finished the match in a style with the boundary. तो चौके के साथ विजय इस वक्त घोषित कर चुके हैं बल्लेबाज सईफ। लगातार दूसरा चौका और मैक्स चैलेंजर्स 6 विकेटों से मैच को जीत चुका है जबकि सिर्फ 2 गेंदें उनकी पारी में बाकी रखते हुए। तो एक बेहतर मैच यहां पर समाप्त हो चुका है और अगला मैच मोबी हब और मिलेनियम थंडर्स के बीच खेला जाएगा और वो मैच शुरू होगा यहाँ पर चंद लम्हों बाद। और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब यहाँ पर अगले मैच की शुरुआत होगी। धन्यवाद, थैंक यू।
So the man of the match award goes to the man who hit a couple of boundaries in the last over and brought the victory for his team. Saif of Max Challengers adjudged the man of the match because of his fantastic batting in the last over of the match. I request Mr. Saif to come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizers, Saif of Max Challengers. Please to be reported here to receive the man of the match award from one of our organizer. Thank you. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸೈಫರ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೈಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Welcome back for the match number 9, prestigious DPL Season 3. Moby Hub takes on Millennium. So, wait and see. Umpire Shiraj signaling towards our scorer. Swastik so far did a great job as a scorer. And now Aziz will going to start the proceedings from the commentary box and for Moby Hub. So in front of him is Abu, promoted up in the order in this particular match for Millennium. Wait and see. Right arm over the wicket. First ball itself, he wanted to play the unorthodox cricketing stroke, reverse sweep. Missed it completely, but hitting his leg by call by umpire. One without loss of any wicket. So Millennium in the previous match, they able to got 2 points by defeating Mahi Strikers. Altogether they got 3 points, one match which is tied, and they're playing their third match. Again Aziz bowling right arm over the wicket away from us. What a delivery, what a fantastic delivery there from Aziz there. Shabib completely misreading that one. The sharp incoming delivery, and it's ball which is taken a lot of turn, and the batsman is surprised with the turn ball just passing between his two legs. The wicketkeeper behind the stump missed that one, but short fine leg fielder fields the ball. Aziz again. Balls again, that ball just passing the bat of the batter, well within the reach of the batsman. Again beaten by the pace. Shabir not able to get that one because the line which is slight a bit of hittable down to fine leg, but he missed it completely because of that the pace in the ball. Absolutely perfect one there from Aziz to defeat the bat of Shabir. Aziz bowls. Oh, what a delivery. That was a fantastic one there from Aziz. Very lucky indeed Shabir. Last moment he got back foot hitting the ball, hitting the back foot, just surviving from that delivery. Very good stop there from Aziz. Match after match, Aziz just growing his level of confidence with his very accuracy in the line and length. And so far it's a very good over. 5th time in this over. Again he wanted to hit the ball across the line. After little chance of run out. Aziz on his follow through tried to hit the stumps. Leg by call by umpire. Second leg by of this over. And just 1 run, 2 without loss of any wicket in the over number first is in progress.
And of course the sunlight is very brighter, but the month of December early sunset within 6 to 6:15 will going to be a dark. Still after these 3 matches, the league matches stages remaining, then knockout stage matches. This time he lofted, swings at one, right in the gap or not, wait and see. Yes, it does. It's in the gap. One bounce into the fence for 4 runs. That was a magnificent struck. Have a look at that one. If anybody wants watching this replay of that particular cricketing stroke, this is not a cricketing stroke. This is a baseball stroke. Just lifting his front foot and clearing that the front by lifting his front foot and getting a lot of power behind the stroke from Abu. Probably we can see that high bat lifting is not so easy in underarm cricket. And have a look at that cameraman, they're catching that beautiful sunset. And sunset will going to be commence in a short while. And this is absolutely the sun. We can see that slowly lost his brightness. And of course, once the sun will going to lose the brightness, but brightness of a floodlight will going to cover the stadium very soon. The mid wicket what Abu is chosen in this previous delivery, one of the longest distance what you want to say, that is a cow corner between mid wicket and long on. A very good finish for the first over for team Millennium. Bowler's back drive, very good stop from his legs by the bowler on his follow through. Powerfully driven back there by Shabir. Nawaz, the bowler, junior. And scoreboard is 7 on the board. Without loss of any wicket. Short fine leg. The fielder down at deep square leg in front of square. There is a deep mid wicket, short mid wicket. One long on is there. And in the offside region, long off. Now long off inside. Now inside the ring, one fielder is going back. No, in fact it's a power play over, not a power play over. Spread out fielder, deep backward point and cover point and long off. Right arm round the wicket delivers. This time again, going for the big swing of the bat. Abu this time missed it completely from his bat. Leg by call by umpire Salim. One more addition to total score, but moves on to 8 on the board. I request all the teams please cooperate with the organizer to finish the match in a time. Don't waste the time. You need to play another, after this match, 6 matches to be played. Your cooperation, 7 matches to be played, little bit correction. And again they're going for the single, quick single, and they managed to complete that. By call by umpire. One more addition to total with that addition of that single score, but moves on to 9 on the board. 9 without loss of any wicket. Nawaz. Again, wicket keeper. Again, the fails to collect the ball. Abu is not interested. There is certain single, isn't it? But Abu, after trying for the off drive, is not responding for the run. Sabir is not impressed with his partner. Every run is going to be very crucial. Next match. This time Abu swings. This is what you're talking about, the confidence level of the batter. Now you can realize why he is not responded for that run. He knows that I am the one, I can clear the boundary line very easily. Have a look at that. Once again, just lifting his front foot and smashes that one. He is a killer of the ball. Absolutely, ball is hitting that trophy which is just situated at main stage. The winner trophy and run-off trophy. This time, opportunity of run-out. Again, that ball missed the stumps and one more extra in that. And with that, very productive over. The scoreboard is 16 now. And what a magnificent struck there from Abu. Absolutely. It's an unbelievable struck there from Abu.
Just I want to see that the front foot, the lifting the front. I will look at that one. How highly lifting that front foot. Absolutely. This is, we can see that in the baseball, isn't it? The baseball strikers are doing the same thing. If they wanted to get enough power, they're almost lifting their front foot and transferring their weight onto the back foot to get some extra power. And a swing of the bat will be now standing. 16 on the board. Fayaz introduced. Again, that ball which is slight a bit of outside the line of leg stump. Batsman nicely turns that one down to square leg region for a single. With that single, Scuba Namuzan to 17 on the board without loss of any wicket. Millennium Challengers got a start here. This time, White, good judgment there by Shabir, watching the ball till the last moment, seeing that ball is far away outside the line of off stump, left the ball. White call by umpire. 18 on the board. Right arm. Lovely delivery indeed. Shabir missing the line completely. This time, good comeback by the bowler. Faiz. Tall bowler, Faiz. With the jersey number 10, bowling away from us. Again, sharp incoming delivery. Again, the batsman driven that one down to deep long on for an easy single. With that single, Scuba Namuzan to 19. 19 without loss of any wicket. Now Abu just checking that quality of the ball. Maybe thinking of after hitting that too mighty stroke, maybe the ball is got damaged, but nothing is happened. This time again, look at the stroke. That one almost drags the ball from outside the line of off stump to pick the single down to wideish long on region. With that single, Scuba Namuzan to 20 for without loss in the over number 3 is in progress. This time again, chip that one just over the head of the infield. They're running hard. Shabir turning out for the second. Abu coming back, and this is not a good end to throw. And Shabir completes that couple of runs. Meanwhile, I request Shaif of Max Challengers, please come and collect your man of the match. ದಯಮಾಡಿ ಶಾಯಿಫ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಗೇನ್ dotted delivery to finish the over number 3. Then after completion of over number 3, and team Millennium are 22 without loss of any wicket. Bills are off. Maybe something is going on here. Maybe there's some there's appealing here. The fielding side. It's given out. It's bowled out, I think. Yes, I am right. The bowled out? Yes, it is a bowled out. Maybe the batsman shuffled across the line of the delivery too much. So I want to see it in the replay what really happened. Because Sabir is a man who is always shuffled across the line of the delivery to hit the ball on the onside region. That's maybe the reason that he's exposing his leg stump. Absolutely right. Ball just kissing the leg stump and bails off. And very good decision came from umpire, the field umpire. Umpire Salim as well as umpire Shiraj having some conversation, then saying yes, the ball kisses the stumps. It's 20 for the loss of 1 wicket. 22 for the loss of this time. Budrais, catch it is a call. Might be the fielder is not really trying for the catch. Look at the frustration on the face of the bowler. Maybe there was opportunity for the catch. But the batsman, the fielder is in trying for the safer hand, and he wanted to collect the ball after one bounce. Lovely delivery. Wicketkeeper misses it. Opportunity of run out. It is a good miss. It's a good miss by the wicketkeeper, isn't it? Because the batter thought that ball is away from the field, wicketkeeper, so that he is trying for a run there. And immediately, wicketkeeper picked the ball and easily complete the formalities of run out. Have a look at that one in replay. The wickets are tumbling now. And a quick session, 2 wickets back into pavilion. And the new batter, Nazir, without disturbing the scoreboard, is back into pavilion.
It's 23 for the loss of 2 wickets. Sultan, the new batter. Nawaz. And this time placement is so good, no need to run for that. He knows that fine leg inside the ring. Once he got a connection, then it is going to be wound here. And UCG cricket is one of the shortest part of the ground. And that was a really very improvising cricketing stroke, isn't it? Look at that one ball, how far he shuffled, front foot, setting his front foot, played that one very fine, right from the middle of the bat, down to deep fine leg boundary for 4 runs. And with that boundary scored now jumps into 27 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Now here is a Shaif collecting the man of the match of the previous match. He played a very good innings under pressure and giving victory for his team. This time it's a full toss, but not an easy full toss for the batter to tackle with, but managed very well by the batter to pick the single there. With the single score moves on to 28 on the board for the loss of 2 wickets. Right up over the wicket delivers. Again, looking for the expansive drive up once again. He did not really connected that one. Missed it completely from his bad leg by call by umpire. With that leg by score, moves on to 29 for the loss of 2 wickets. The over number 4 is in progress. Good comeback by the bowlers in the previous over. 5 is bowled very tidy. Now Nawaz senior bowling away from us. Again looking for the improvising cricketing stroke. Good piece of fielding there by the fielder at short fine leg. Picks the ball, returns the ball, but fails to stop the single. 1 more over completed, 4 gone. After completion of 4 overs, Millennium 30 for the loss of 2 wickets. Last 4 remaining in their innings. Meanwhile, next match will be the match number 10 of this prestigious Dubai Market Premier League 2023 season 3. And a match will be played between Matrix versus Mahis Strikers. I request both the teams' captain please be reported here in the commentary box for the toss. Mahis Strikers captain as well as Matrix captain, Team Matrix captain. Wicketkeeper Aziz fails to collect the ball. They are grabbing the opportunity. Direct it, but by call by umpire. The very interesting, very interesting. And I think when appeal is going on and Shiraj lifting his hands, but not for single hand, but 5 fingers, which is giving yes, by signal, not out signal. 31 for the loss of 2 wickets. Again, outside the run of off stump, Babu again looking for his favorite stroke towards the mid wicket. Altaf. Oh, again that going to be a big wide, absolutely big wide. No ball called at square leg. Yes, it might be above the shoulder level. And right call from square leg umpire Salim. To call the no ball means it's going to be a free delivery. It's always going to be a square leg umpire's call when you need to see the height of the ball. And here is again coming down the track, missed it completely. Only 1 run, mistimed that one in fact. And Altaf just survived from that delivery. 33 for the loss of 2 wickets. Altaf. This time he played that one into the hands of square leg. Not quite getting that one from the middle of the bat, isn't it? Might be looks like it's going to be a top edge because he wanted to play that one too much across. That's why he didn't got enough timing in that strokes and the ball went straight to the hands of the fielder at the deep square leg. And comfortably held that one by that fielder in the deep. So it's 33 for the loss of 3 wicket team Millennium.
The one stage when Abu is looking very good. They looks like they will going to get a 40 plus runs on the board, but they just lost that momentum and strongly back into the game by the fielding team. Moby Hub, the runner of a previous edition, just a single for the left-hand batter, Yashir. 34 on the board. Last delivery of the innings of Millennium. Can Abu will going to finish the innings with a big one? Wait and see. Altaf wanted a dotted delivery. No. They're going for the run there. That means Abu will be the non-striker. 1+1. Now this is what you call the presence of mind. And maybe they're asking for the ball, which is umpire have to call the dead. But umpire says no, ball is in play. White signal. Out which is given. Just I want to see it in a replay now. The throw which just came from the batsman is safe in the non-striker's end. Then look at the bowler, wide which is given, and throw which is bowler actually throws the ball to the wicket-keeper's hand, and Abu desperately back into the strike now, and he succeeded. Now last ball remaining. Altaf drives it and catch it is a call, but it's going to be a boundary there. That's what I'm talking about. That Abu finished the match with the boundary, finished the innings in a correction with the boundary, and at last Millennium the managed to get the total score of exactly 40, and they set a target of 41 to in the match. They got a run at the rate of exactly 8 runs per over. And they will going to set a target here for team Moby Hub. 41 is going to be a target. And let's wait and see. We take a short break. And after a short break, my friend Gopi will going to take over the microphone. Thank you.
धन्यवाद सतीश. Right, the target is exactly 40 in 5 overs. They have to score for victory with the help of with the required 100 of exactly 8 runs per over, and their inning starts. First ball, पहली गेंद थी इस वक्त, लगभग बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद विकेट कीपर के हाथों में पहुंचे, लेकिन विकेट कीपर इस वक्त इनको गैदर नहीं कर पाए, कलेक्ट नहीं कर पाए और मौका इस वक्त गवा चुके हैं. तो यहाँ पर पारी की शुरुआत हो चुकी है मोबी हब की और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर, रन से यहाँ पर नहीं मिलेंगे और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 0 पर. और अगली गेंद के लिए इस वक्त गेंदबाज तैयार. शमीर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए मिड विकेट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट और मिड ऑफ मौजूद. ये गेंद ड्राइव किया, इनफील्ड क्लियर करते हुए इनटू द गैप एज वेल. ही हैज गॉट अ बाउंड्री, एटलीस्ट ही हैज गॉट अ कपल ऑफ रन्स फॉर दैट. जस्ट वी आर वेट एंड सी. काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को इस वक्त फील्ड करे, इस बार खतरा नॉन स्ट्राइकर एंड पर और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. जोखिम भरा तीसरा रन चुराना चाहता विदाउट फेसिंग एनी डिलीवरी. द बैट्समैन इज नाउ बैकिंग टू पेविलियन और इसी के साथ दूसरा पहला विकेट गिर चुका है 2 रनों के योग पर. 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. तौफीक बिना किसी गेंद का सामना किए हुए इस वक्त पेविलियन वापस लौटते हुए और यहां पर तीसरा जोखिम भरा रन चुराने के प्रयास में अपना विकेट गवा चुके हैं रनआउट के रूप में और पहला विकेट गिर चुका है इस वक्त 2 रनों के योग पर. तौफीक बैक इनटू द पेविलियन and now Moby Hub lose their first wicket. It's 2 for 1. Match number 9 of this prestigious cricket tournament, Dubai Market Premier League 2023, DPL Season 3, 2023 is now progressing here. After this match, Mahi Strikers will take over Metrics in the next match, and that match is now coming up loud exclusively right after this match. और जहाँ तक इस मैच का सवाल है तो मुकाबला इस वक्त जारी है. फैज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज इस वक्त ये गेंद ऑफ द टोस, गेंद को खेला खूबसूरती के साथ, मिड विकेट पर गेंद पहुंची. 1 रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है और आखिरकार 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है. कुल मिलाकर 3 रनों के योग पर 1 विकेट के नुकसान पर. 3 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Still some fielding adjustments is going on there. Deep mid wicket इस वक्त मौजूद है. लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और अगली गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, पैर पर टकराई, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद सीधे जब तक शॉट कवर पर फील्ड हो. 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. और अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद इस बार इनफील्ड क्लियर करते हुए स्कूप किया और यहां पर कैच छूट चुका है. मुश्किल से मौका और निशाना डायरेक्ट लग चुका है इस वक्त, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद. 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे. जस्ट कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 6 for the loss of 1 wicket. First over has been came to an end. So after first over chasing the victory target of exactly 40 in 5 overs, Team Moby Hub made a mixed start. In fact, they managed to score 6 runs on the board for losing 1 wicket after completion of first over. 34 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs. That means in remaining 24 deliveries with a required run rate of exactly 8.5 runs per over. और गेंदबाजी इस वक्त कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी पर उतरते हुए गेंदबाज नजीर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और दूसरा ओवर शुरू होता हुआ उनकी पारी में और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. नवाज इस वक्त सामना करते हुए और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई. ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज नजीर. पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और पहली गेंद लेकर इस वक्त नजीर गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद स्वीप करना चाहा. दैट इज अ फनी थिंग्स इज गोइंग ऑन देयर. आसान सा रन आउट यहां पर और इस मौके को गवाते हुए दोनों तरफ हड़बड़ाहट हुई, पहले बल्लेबाज में उसके बाद विकेट कीपर में और आखिरकार यहां पर आसान सा रन आउट का मौका गंवाते हुए विकेट कीपर और 1 रन यहां पर जुड़ चुका है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और इस बीच
अगली गेंद लेकर नजीर गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, जबकि सामना इस वक्त करते हुए फैज। और ये गेंद नजीर की, फैज के लिए ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, इस बार विकेट कीपर चूके और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बता चुके। इट्स ऑफ द बैट सिग्नल बाय एम्पायर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। तो इस बीच अगली गेंद के लिए इस वक्त तैयार, ये गेंद ऑन साइड पर बोल्ड, अंतिम क्षण में गेंद स्टंप्सों पर टकरा चुकी है और इसी के साथ यह पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले थे, गेंद को उछाल कर खेलना चाहा ऑन साइड पर, लेकिन गेंद बल्ले और पैर को चीरती हुई निकली, सीधे लेग स्टंप पर जा टकराई, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ यह विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। 8 रनों पर दूसरा विकेट खो चुका है यहां पर टीम मोबी हब। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ. ಮಹಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿपोर्टेड हियर फॉर द टॉस प्रोसीजर विद ऑर्गेनाइजर्स। तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ एक और नवाज इस वक्त मैदान पर उतरते हुए और इस वक्त तो सामना करेंगे नजीर की गेंदों का। गेंद की परीक्षा यहां पर करते हुए और गेंद की परीक्षा करने के बाद गेंद को एक बार फिर से वो लौटाते हुए गेंदबाज के हाथों में। कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए नजीर। इस बार बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, केम अलोंग द ग्राउंड एट द लास्ट मोमेंट। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता चूंकि विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को कलेक्ट कर लिया, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में असफल। ऐसा कहना पड़ेगा, just wanted to play that one too early at the last moment and the ball came quite lately and because of that no contact between the bat and ball और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। आसान सा मौका यहां पर गंवाते हुए बल्लेबाज। अगली गेंद इस वक्त, ये गेंद इस बार गेंद सीधे स्टंप्सों पर टकरा चुकी है, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई, परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक टर्न लेती हुई गेंद, लेग कटर गेंद थी और लगभग घुटनों के बल इस वक्त झुकते हुए गेंद को उछालना चाहता। देखिए किस तरीके से उछालना चाहा, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी नीचे रहती हुई और उनके पैरों के बीच से निकलकर सीधे स्टंप्सों पर जा टकरा, मिडल और ऑफ स्टंप पर। तो बेहतरीन ओवर यहां पर नजीर का समाप्त हो चुका है। He conceded just a single in this over and captured 2 wickets। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब ऐसा कहना पड़ेगा टीम मोबी हब लुकिंग अ ट्रबल a little bit। 8 for the loss of 2 wickets। 8 for the loss of 2 wickets in fact after completion of 2 overs। 33 more runs now they have to score for victory and still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining in the innings। The equation seems to be stiffer and stiffer now at the situation for team मोबी हब। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, फारूक बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार रन के लिए दौड़ पड़े। देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट, एग्जैक्टली परफेक्टली राइट फ्रॉम अंपायर, डिलिबरेटली प्लेड, जानबूझकर अपने पैर पर गेंद को आने दिया था, कोई स्ट्रोक्स ऑफर नहीं किया था और बिल्कुल सही तरीके से अंपायर ने इसे इस रन को रद्द घोषित किया। डिलिबरेटली इस गेंद को खेला था इस वक्त जानबूझकर। और एक बार फिर से इस बीच गेंदबाज यासीर गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी का लेग स्टंप से बाहर और गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, मिसफील्ड वहां पर लेकिन नहीं, स्ट्रोक को रोकने में सफल आखिरकार। 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
जबकि उनकी पारी का तीसरा और इस वक्त प्रगति पर। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर थोड़े से स्क्वेयर तैनात, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े यहां पर, थ्रो को रिसीव करने में असफल गेंदबाज और बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। यासीर फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। रन इस वक्त चाहिए टीम मोबी हब को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और इस बीच अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर, एक बार फिर से शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद, एक रन मिलेगा और एक बार फिर से वाइड का इशारा। 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल। तो तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में यहां पर रन से प्रदान करते हुए गेंदबाज और इन 2 तोहफे के रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दिस द थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। स्टिल 26 more runs now they have to score for victory। और यासीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, वाइड का इशारा। 16 now the scoreboard is now moving up to 8 runs already scored in this over in the first 2 deliveries and this is turning out to be a fine over so far in Moby Hub's point of view। और इस बीच परिवर्तन के तौर पर ऑफ स्पिन गेंद को इस वक्त खेल दिया पॉइंट पर, 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 17 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, फ्लाइटेड ऑफ स्टंप से काफी बाहर, मिसिंग 2 फॉर सादी ऑफ स्टंप एंड अ वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर। और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल द बैट्समैन ऑफ टीम मोबी हब आर नाउ फाइटिंग बैक। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है किंग स्पोर्ट्स पर और निश्चित रूप से यह श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहां पर करते हुए, ये गेंद इस बीच लेग स्टंप पर आती हुई, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज कुछ हद तक आगे जरूर निकल आए लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद को विकेट कीपर विकेटों के पीछे फील्ड कर चुके हैं, कलेक्ट कर चुके हैं। अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद, क्लीन कलेक्शन, 1 रन मिलेगा। सिर्फ 1 ही रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर, 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज यासीर, ये गेंद उछाला लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और आसानी के साथ इस कैच को लपकने में सफल। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट। गेंद को काफी ऊंचा उछाला था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को उछाला और आखिरकार लॉन्ग ऑन फील्डर जो मौजूद थे सीमा रेखा के अंदर, उन्होंने आखिरकार कोई गलती नहीं की और इनसाइड डिफेंस एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल। तो विकेट नंबर 3 यहां पर गिर चुका है। नाउ दे आर लुकिंग अ ट्रबल अ लिटिल बिट। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 4 wickets down, in fact it's 19 for the loss of 4 wickets and this is the over number 3 has been came to 3 gone, 19 on the board, 4 wickets lost, 22 required in remaining 2 overs, that means in 12 deliveries। 11 रन इस ओवर में बने, 1 विकेट भी गिरा और अब चौथा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ। नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। तारू गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, बेहतर गेंद थी, परफेक्ट ऑफ कटर गेंद, बिल्कुल जमीन के सहारे अलोंग द ग्राउंड गेंद आई थी। इस गेंद को खेलना चाहा, लगभग बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद, बल्लेबाज के पैर पर टकराने के बाद गेंद जब तक का शॉर्ट गली पर फील्ड हो, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रन। 11 गेंदें बाकी हैं, रन से चाहिए 21, 21 नीडेड इन रिमाइनिंग 11 बॉल्स। और इस बीच सामना करने के लिए तैयार, ये गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉल की दिशा में एंड नाउ 10 balls and 21 runs। The equation seems to be a stiffer now for team Moby Hub।
they badly required couple of boundary or sixes at this stage to get back into this match. अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात। एक और विकेट यहां पर गिर चुका है और इस विकेट के पतन के साथ ऐसा कहना पड़ेगा, द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर टीम मोबी हब। समस्याएं और बढ़ चुकी है टीम मोबी हब के लिए। आसानी के साथ गेंद को लपक गया सीमा रेखा के अंदर, एक बेहतर जजमेंट के साथ फील्डर द्वारा। 9 balls left, 21 required. The equation seems to be stiffer and stiffer now for team Mobi Hub. Nizam, the number 7 batsman, is now comes out to the middle और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद टॉप एज, एक और मौका, इस बार लॉन्ग ऑफ फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ कंसेक्यूटिव विकेट्स फॉर द बॉलर तारू। टॉप एज पर गेंद टकराई, लॉन्ग ऑफ पर पहुंची और आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया गया। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से गेंद को उछाला था देखिए, लॉन्ग ऑफ पर इस कैच को लपकने में सफल फील्डर। तो विकेट नंबर 6 यहां पर गिर चुका है। 20 for the loss of 6 wicket. हैट्रिक डिलीवरी फ्रॉम तारू कम्स। हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त तारू तैयार और देखना है कि नंबर 18 की जर्सी पहने हुए बल्लेबाज, नंबर 8 बल्लेबाज इस वक्त टीम मोबी हब की ओर से मैदान पर उतर रहे हैं। क्या वो तारू का हैट्रिक का रोक पाते हैं या नहीं। और इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। Be a chance of hat-trick for Taru. Fielder getting underneath it and he took the catch successfully. Hat-trick completed. Second hat-trick of the tournament from Taru. और इस हैट्रिक के साथ वो काफी खुश नजर आते हुए और परेशानी के बादल और घने हो चुके हैं कहना पड़ेगा यहाँ पर टीम मोबी हब के पास। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से उछाला था, टॉप एज पर गेंद पहुंची और एक बेहतर जजमेंट के साथ मिड ऑन से लॉन्ग ऑन से मिड ऑन आते हुए इस कैच को लपका एक बेहतर जजमेंट के साथ फील्डर ने। तो हैट्रिक परिपूर्ण कर चुके हैं तारू और एक गेंद अभी भी बाकी, 7 गेंद बाकी है, 21 रन चाहिए विजय के लिए। 21 रिक्वायर्ड एंड 7 balls रिमेनिंग। किंग स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित 20 टीमों के डे नाइट क्रिकेट श्रृंखला जो कि फ्लडलाइट के तौर पर कुछ दिनों बाद यहाँ पर कुछ दिनों बाद मंगलोर पर चलेगी। तो उस मैच का दिनांक हम कुछ दिनों में ही आपके सामने अनाउंस करेंगे। इस श्रृंखला के लिए पहला इनाम 2,22,222 रुपए नकद और किंग स्पोर्ट्स ट्रॉफी दिया जाएगा, जबकि दूसरे इनाम के तौर पर 1,11,000 रुपए नकद, 1,11,111 रुपए नकद और ट्रॉफी जो कि प्रदान किया जाएगा। और मंगलोर के 20 प्रतिष्ठित टीमें, 20 prestigious teams of Mangalore participating in this mega event which proudly presented by King Sports which will be held, the date will be declared later afterwards after a couple of days. Winners will get 2,22,222 rupees cash plus trophy and runners will get 1,11,111 plus trophy, and this tournament will be held, date and place will be announced soon. And a fantastic cricket tournament for the first time in Underarm cricket history, 20 teams day night frontline cricket tournament which organized by King Sports Mangalore, and that tournament will be held probably in March or April. Date will be announced soon. इस बार गेंद को खेला था बैक टू द बॉलर की दिशा में, 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 now for the loss of 7 wickets, 5 balls remaining, 18 runs to get. यह गेंद पैरों पर गेंद टकराई, गेंद इस वक्त पहुंची फॉरवर्ड शॉट लेग पर जहां पर विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया और इस बीच 1 रन का इजाफा, लेग बाय का इशारा अंपायर का। 24, 17 टू गेट, 4 balls रिमाइनिंग और यह गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। अब अंतिम अवकाश था, लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ टीम मोबी हब। ऑलमोस्ट 3 sixes रिक्वायर्ड इन द लास्ट 3 डिलीवरीज, 17 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट 3 balls. This time misses, can't got any run. He doesn't want to take any run for this stroke. The scoreboard stayed at 24 for 7. 2 balls, 17 runs. Just a formality is now remaining in this match if any miracle things will not happen. और गेंदबाज इस वक्त तैयार,
lofted, square of the wicket, and he's got a single for that stroke. In fact, they come back for the second and get it comfortably at last. 26 for the loss of 7 wickets, and the last ball of the match is now coming up. 15 required of last delivery. Absolutely impossible task in front of team Moby Hub. Here the bowler bowls. The last delivery misses. That's it. 14 runs comprehensive victory for Millennium Thunders against team Moby Hub, and with that 14 runs victory, they back the complete points. So the match number 9 of this tournament came to an end, which won by Millennium Thunder against Moby Hub by 13 runs. And now the next match is now going to play between Mahi Strikers and Matrix. And in this match, Team Matrix after won the toss, they elected to field first, and that match starts within just short while. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं अगला मैच शुरू होने तक, और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब मैच नंबर 10 की शुरुआत होगी इस श्रृंखला के अंतर्गत. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. धन्यवाद. थैंक यू. So man of the match of this match award goes to the man who performed with a bat as well as in the ball, who scored 18 runs into his credit, and he bowled an economical spell of 1 over 4. He conceded just 3 runs. Abu of Millennium Thunders adjudged the man of the match. I request Mr. Abu to please come on to the stage and receive the man of the match award from our organizer, Abu of Millennium Thunder. Please to be reported here to receive the man of the match award from our one of our organizer. Thank you. And we'll be back right after the short break. Thank you. Welcome back. Thank you very much. And now the match number 10 of this prestigious DPL Season 3. The match will be played between Mahi Strikers versus Matrix. Team Matrix.
अरे one minute umpire, just wait for a minute. Scorer. Yes. Yes, start the match. Right arm around the wicket. The first ball. This time, try to reset one, and he got the distance. Oh, what a shot! Absolutely fantastic stroke there from the batter. Unbelievable struck, isn't it? And just leaning into the drive, reaching for the delivery, and it was an outstanding cricketing stroke. And ball clearing the boundary line, unbelievable. Have a look at that one, ball just hitting the wall, and just say number 21 who got a 6. Oh. Shahik has got a hamstring injury, muscle catch, looks like. So looks like lower part of the knee, the calf, which is always going to be a injuries we can see for the cricketers when you are playing back-to-back matches. The first ball, it's an explosive start with the 6. Shamshagi. Again, bowler started to feel the pressure. This is what we are talking about. The cricket is all about. After that 6 in the first ball, the bowler Sadiq started to feel the pressure and he bowls a wide. Again, the one more wide, but this time Shaikh is not interested. In fact, he is slight a bit has got a problem with his legs, so that he is not able to run quickly. So he's denying his partner not to come for the run. But wide anyway, 2 back-to-back wides, 8 on the board. Round the wicket delivers. Sadiq again, 3rd wide of this over. Absolutely. This is not a kind of start what team matrix is required. And this is all happening when you are punished in the first ball itself. Your level of confidence suddenly is coming from up to down. And that's what Sadiq is feeling. He's changing his angle now. Coming over the wicket. This is what the need to ball. You are not good in around the wicket. Then you are changing the angle. And it really becomes handy for Sadiq to pick the wicket of Shahik. Is just try to hit the ball across the line and misses the stumps completely, and then Bales which is dislodged. So lights are on here in Urva Cricket Ground. The floodlights are switched on, and now all we can see that all the matches will be played under floodlight. Again, nicely plays it down to backward point region for a single by the batter Chamu. Is coming down in the order now as a number 3 batter. One more wicket here for Sadiq. Good comeback from the bowler's point of view. Pitched in a line. Batsman wanted to play inside-out cricketing stroke. Misses the line complete. You miss high it was Sadiq is dead. Have a look at that one. Tossed up delivery. Flighted one, and the batsman completely missed it from the bat. 2 wickets gone. It's 10 for the loss of 2 wickets.
Askar is a new batter in the number 4 position. Again, he wanted to stop the ball. Chance of run out in a non-seconds and will go into a third wicket. But wait for the umpire signal is given. The wicket number 3 is back into pavilion. Looks like the batter Chammo going back to pavilion. Have a look at the throw from the field, and looks like might be the ball bat is in the air. And while the bowlers uproots the stumps, and unfortunately wicket number 3, which is back into pavilion of team Mahi Strikers, are looking in deep trouble. It's 10 for the loss of 3 wicket. So Team Matrix has got a good start from the ball. After that, they lost their first match and they won the first match against Moby Hub, Team Matrix. Then they lost against Max Challengers. And good over. In fact, even though he conceded 10 runs, but 2 wickets in that over, 1 in the form of run out, altogether 3 wickets in that over. So completion of first over, My Strikers 10 for the loss of 3 wickets. About incoming tournaments in this UCG cricket ground, the coming 16-17 LCC Cup 2023, Legends Cricket Cup, and opportunity for above 40, above 45, and 50 above players to come and perform. Opportunity which is given, and Legends Wizards Group organizing this cricket tournament. And after that, immediately after that, 4 days of Festival of Cricket. Kudla Premier League will go into commence from Monday to Thursday, and 3 day night and 1 day match. The Monday will be the day match, and after that 3 day night match in the KPL, Kudla Premier League. White call by umpire, and just now has got one more information, big news for cricket lovers. King Sports will go into present one more big tournament. The venue and the date will go into announced too soon. And big cash prize of 2,22,000 in that tournament. This time lovely looking drive over the head of the infield, the square of the wicket, beautifully played there by the batter, and they will go into complete 3 valuable runs. Nisar Askar has got a very good placement. They played that one just over the head of the infield. There's a leg by call by umpire. Chammo is on strike. Oh, big wide. Not a wide, it's no ball called by umpire. Umpire called it no ball, but umpire, square leg umpire, just walking towards free delivery, and I think the umpire is maybe asking the bowler to correct their bowling action, suspicious bowling action. Nawaz this time lofted that one, and 1 bounce collected by the fielder. They're coming back for the second. In comes the throw, and they completed a 2. This time Nisar got that one over the infield, and scoreboard moves on to 19 on the board for the loss of 3 wicket. Looking for the improvisation. It's ball time. Oh my goodness, he drags the ball into the stumps after the ball hitting his hand, and unfortunately, it's really very interesting dismissal I want to see.
It never looks like the ball going to hit the stumps. Have a look at that one, a replay. What really happened? The batsman wanted to play the reverse sweep. Have a look at that one. Oh, ball after hitting his hand and drags the ball into the stumps. Absolutely unusual. Unusual dismissal, isn't it? At once it looks like a naked eye. Looks like the wicketkeeper has got a ball into his hand, then fell into the stump. No, it's never. It's a ball hits the stumps. It's 19 for the loss of 4 wickets. Oh, one more good delivery indeed. Almost targeting the stumps. Opportunity of run out by call by umpire. One more addition. 20 on the board. Things are becoming slide a bit harder when the lights are on. It's not an easy condition for the batter. This time drives a straight. Oh, Sadiq fails to catch the ball. Ball defeating his trying hands. Ball into the fence for 4 runs. Down to deep extra cover region. The width is offered there by the batter and Chamu and just lofting that one. Have a look at that one. Placement is so good in again, but the fielder Sadiq is charging in from the deep extra cover region. Try to catch the ball. Misses it completely. A ball hits the wall. The boundary comes up here for the team My Strikers and for Asgar. Let's look at Chamu. It's 24. It's a 24 for the loss of 4 wickets and bowler will go into ball from the far end, third over Mukhtar. Again, nothing much to do with the delivery. Going outside the line of leg stump and white called by umpire. One more addition to that. Total score numbers on to 25 for the loss of 4 wickets. Mukhtar. One more white. One more extra. The score numbers on to 26 for the loss of 4 wickets. Mukhtar again. Right arm over the wicket. Bowls. Yes, I missed it completely. Going for the big swing of the bat and dotted delivery again. For the loss of 4 wickets. One more single in the form of bye. Mukhtar again. Right arm over the wicket bows. Chamo going for the big swing of the bat. Little bit across the line. Nisar, little bit correction. Leg by call by umpire. One more addition and the scoreboard moves on to 28 for the loss of 4 wickets. Taha is on strike. Drives that one nicely down to deep long on region for a walkable single. So with that single, score moves on to 29 now for the loss of 4 wickets. Mukhtar again bowls. Oh, what a shot! Driven that one. It's little better. Once it looks like he's played that one very fine. No. Towards the mid wicket. Oh, mix up and costing a wicket here. And the batter Taha is really looking for the second run. Have a look at that fielder throwing the ball right in the direction of a wicket keeper, the right end throw just over the base. And the Taha wanted to get a second run, but he ended up with the run out there. It's 30 for the loss of 5 wickets. Rashid, the new batter in. Mukhtar. Bowling with a short run off. Right up over the wicket bounce. Improvisation. Down to square leg region. They're running hard. Coming back for the second.
In comes a throw from the deep. The batter need to settle for the couple of runs. One more over completed after completion of over number 3. And the scoreboard is 32 for the loss of 5 wickets. A good score on the board for my strikers. They're going exactly 10.33 runs per over. 30 correction. Yes. .66 runs per over. Asrar is a new bowler. Will go into bowl the 4th over the innings of my strikers. Across the line, one of your favorite shot of Nisar, but he missed it completely. The line is so good in the occasion, almost pitched in a middle stump and leg cutter. Oh, one more good delivery. This time batsman lucky. Ball hitting his leg by call by umpire. One more addition. With the addition of that single, score moves on to 33 for the loss of 5 wickets. Coming down the track, misses the line completely. Excellent display of the leg spin bowling performance from Asrar. Absolutely perfect, isn't it? Look at the turn of the delivery, which came along the carpet. The big turn of that ball. Oh my goodness. That ball hit in the middle stump. It's 33 for the loss of 6 wickets. Farooq is a new batter in, jersey number 10, Farooq. This time improvisation just for a single. With that single covered, Namozan to 34 for the loss of 6 wickets in the over number 4 is in progress. My strikers, they needed to get some good score against the team matrix again. They're going for a quick single. Even then might be looking for second, but there is no chance at all for a second run. If Farooq will going to hit a 6 and he will going to get 1,000 rupees from Farooq mobile point. Leg by call by umpire. The announcement for Farooq. The batter Farooq, if he able to get a 6, he will go to get 1,000 rupees from Farooq of mobile point. Opportunity of Farooq to grab that 1,000 rupees money here. .36 for the loss of 6 wicket, last over remaining. Saddam, one more leg spinner is in action, perfect one. Wicket keeper missed it, and by call by umpire, one more addition. So far after that 3 expensive over, it looks like a slight bit of comeback here by the bowlers of team matrix. Again looking for the expansive drive. Nisar not quite getting hold of that stroke properly. Just a single there with that single scope and moves on to 38 for the loss of 6 wicket. It's a wide ball. Ball just missing the line, not really getting that much of turn what bowler is looking for. And the scoreboard now moves on to 40 for the loss of 6 wicket. This time he lofted in the sense he will go into catch by the D fielder. Farooq is looking for 1,000 rupees, but unfortunately he is just finding little bit shorter. And have a look at that one. Almost hit the ball right from the middle of the bat. The fielder from mid wicket takes a comfortable catch in the end. It's 40 for the loss of 7 wicket.
Mukhtar, 39, let me correction, 39, not 40, 39. Thank you. Oh, what a delivery. What a fantastic delivery there from the leg spinner. Always under floodlight, a leg spinner always becomes very handy if they bowl well. The good line length, difficult for the batter to hit the ball. Again, one more fantastic delivery. Chance of run out, under-arm throw, misses the stumps, and batsman crossover single in the form of leg bye. So with that single, Skubana moves on to 40 for the loss of 7 wickets. The last delivery of the innings of Mahi strikers. Last and final delivery. Nisar is on strike. Missed it completely. What a fantastic over. It's bowled out. Thank you. It's a bowled out. Absolutely perfect one. Very good last over ball there by Saddam. Fantastic bowling display. So after completion of 5 overs, my strikers finished with the 40 for loss of 7 wickets. And they set a target of 41 to win the match for Team Matrix. And wait and see how well Team Matrix will go to get this. The similar total, I want to say, the previous match, the 41 target. And now the run rate required is just above 8 runs per over for Team Matrix to win this match. And a very interesting match, and we'll take a short break. And after the short break, my friend Mr. Gopi will go and take over the microphone. And just talking about the next match, Mobi Hub will take Max Challengers. So that I request both the teams, please get ready. That's 11th match of DPL Season 3. Thank you. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಸೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜರ್ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ದುಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜರ್, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತಗಳು. धन्यवाद सतीश. So the target is 41 for Matrix, Team Matrix, and the innings now going to start. First ball और नवाज और अफरीदी इस वक्त आरंभिक बल्लेबाज, जबकि हबीब गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और उनकी पारी की पहली गेंद लेकर इस वक्त हबीब तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद इस बार गेंद को स्कूप कर दिया खूबसूरती के साथ एनफील्ड क्लियर करते हुए. गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता और थ्रो किया जाता स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का. और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है टीम मैट्रिक्स के लिए. 2 रन बिना किसी नुकसान के. फिर से एक बार हबीब गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. नवाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं. मिड ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. और इससे 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. हबीब फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ
राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अफरीद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए गेंद को ऑन साइड पर मोड़ दिया और आखिरकार गेंद जब तक शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्ड हो 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 4 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत है टीम मैट्रिक्स को। अगर उन्हें 41 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो निर्धारित 5 ओवर में। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार चिप किया, अनफील्ड क्लियर, जी नहीं, जी हाँ क्लियर कर चुके हैं। मौका जरूर था वहां पर कैच आउट का, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंच जरूर गए थे, लेकिन गेंद को लपकने में असफल। और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता मिड ऑफ पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रन बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार हवे में, लेकिन आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंद को लपक नहीं पाए और गेंद उनके आगे टिप्पा खाते हुए और बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर, पहला और एकमात्र पावर प्ले का ओवर इस वक्त प्रगति पर। 7 खिलाड़ी पावर प्ले के अंतर्गत इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट। और ये गेंद स्वीप किया इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में और गेंद को वहां पर रोका गया 20 गज के दायरे के अंदर और इस बीच 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। 8 रनों पर पहले ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति हो चुकी है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 8 रन्स ऑन द बोर्ड, येट टू लूज एनी विकेट। टीम मैट्रिक्स चेसिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 41 in 5 overs. They made a steady start. In fact, they managed to score 8 runs on the board, yet to lose any wicket after completion of the first over. इस मैच के बाद नंबर 11 मैच खेला जाएगा टीम मोबी हब और मैक्स चैलेंजर्स के बीच में। तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि अगले मैच के लिए कृपया तैयार रहे। दूसरा ओवर शुरू होता हुआ हमसे दूर वाले छोर से शाहिक इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और इस बीच सामना करने के लिए तैयार अफरीद। तो फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और इस बीच गेंदबाज ताहिक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। पहली गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन के लिए दौड़ पड़े और आसानी के साथ 1 रन यहां पर प्राप्त करते हुए लेग बाय के रूप में और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 9 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर फॉर टीम मैट्रिक्स। और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज शाहिक का गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए नवाज सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद को ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। हालांकि वाइड की मांग जरूर की बल्लेबाज ने, लेकिन अंपायर ने इशारों से कहा कि जी नहीं, गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही है। अंपायर जो कि अरशद इस वक्त तैनात है और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 9 रनों के ऊपर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। फील्डिंग में एक बार फिर से कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज शाहिक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद ड्राइव किया ऑफ द टोज, हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पर लॉन्ग ऑन पर 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 2 अंकों पर। स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू डबल फिगर्स नाउ, दैट मींस ऑन 10 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। और इस बीच शाहिक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार टॉप एज, लेकिन गेंद इस वक्त फील्डर जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए। जी तोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की, बेहतरीन प्रयत्न उन्होंने जरूर किया था, लेकिन आखिरकार गेंद को लपकने में असफल। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। टॉप एज पर गेंद टकराई थी, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद फील्डर के पहुंच से बाहर डीप मिड विकेट पर और स्कोर बढ़कर इन 2 रनों के साथ अब पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार शाहिक का। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा अंपायर का
और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। मैच नंबर 10 का द्वितीयार्ध इस दुबई मार्केट प्रीमियर लीग 2023 मेगा श्रृंखला के अंतर्गत इस वक्त प्रगति पर। रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बाउल्ड आउट, लेग स्टंप उखड़कर गिरता हुआ और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 का यहां पर गिर चुका है। अफरीद की पारी समाप्त। He just wanted to play that one with a reverse shot, twisted bat at the last moment, not succeeded. Extra quicker from the bowler, and after beating the bat, it stuck to his leg stump. Bills are disturbed, and that is the wicket number first. और अफरीद की पारी समाप्त। 13 रनों पर पहला विकेट खो चुका है यहाँ पर टीम मैट्रिक्स। It's 13 for 1. And it's time for the new batsman who is now coming out to the middle. और इस बीच स्ट्राइकर इनकी ओर वो कदम बढ़ाते हुए मुख्तार नए बल्लेबाज के रूप में और शाहिक की गेंदों का सामना करने के लिए इस वक्त तो तैयार। शाहिक इस ओवर में आखिरी बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज मुख्तार के लिए ये गेंद लेकर तैयार। स्वीप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, पैनल स्वीप और गेंद इस वक्त डीप फाइन लेग सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई और गेंद को जब तक सीमा रेखा के अंदर दौड़ लगाकर रोका जाता, बल्लेबाज के पास मौका तीसरा रन प्राप्त करने का। और थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेट कीपर ने यह मुनासिब नहीं समझा कि गेंद को नॉन स्ट्राइक लाइन पर थ्रो किया जाए, क्योंकि वहां पर ठीक तरह से कोई बैकअप नहीं था। और 3 रन इस बीच बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर। 16 runs on the board and 1 wickets down and 2 overs had been bowled. 2 overs completed, so 3 overs left. 25 runs more now they have to score for victory. 18 balls and 25 runs exactly. The required run rate is 8.33 runs per over. DPL सीजन 3 2023 की शानदार प्रगति होती हुई इस ढलते हुए शाम में, हालांकि दिन इस वक्त रात की ओर प्रवेश करता हुआ और फ्लडलाइट्स की झगमगाती हुई रोशनी इस वक्त मैदान पर गिरती हुई इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है। और इस बीच ओवर की पहली गेंद, ये गेंद स्टीयर किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। एकमात्र रन मिलेगा, स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। चिम्मू गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं। यह गेंद उछाला मिड विकेट पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। नवाज के बल्ले से लगता हुआ यह स्ट्रोक देखिए किस तरीके से जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। देखिए टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया था और डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर गेंद को क्लियर करने में सफल छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ समीकरण इक्वेशन कुछ हद तक आसान होता हुआ टीम मैट्रिक्स के लिए। अगली गेंद के लिए तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पर ऑफसाइड पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। आफ्टर फर्स्ट बॉल पहले टिप्पे के बाद गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच 1 रन का इजाफा। 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 17 टू गेट, 15 बॉल्स टू गो। और इस बीच स्ट्राइक पर आ चुके हैं मुख्तार जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज चिम्मो इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज मुख्तार। यह गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहा, चूंकि और गेंद के धीमेपन को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 24 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ा, कोई फील्डर वहां पर नहीं, स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़ कर आए, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और सफलतम दूसरा रन यहां पर पूर्ण करते हुए और इस बार ओवर थ्रो लेकिन बैकअप होता हुआ वहां पर। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। गुड सेकंड विकेट पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप फॉर टीम मैट्रिक्स। और ये दोनों बल्लेबाज पारी की भागदौड़ को यहां पर संभाले हुए और दाहिने हाथ इस बार रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ मकड़ा थर्ड मैन पर। इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन यहां पर गेंद शायद थ्रो करते समय फील्डर के हाथों से फिसल गई थी और फलस्वरूप बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। तो 2 रन उनके खाते में जुड़ेंगे और
इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। अब समीकरण आसान, 12 रन स्कोर फ्रॉम द लास्ट ओवर, 12 balls remaining, 13 runs required. ಮೋಬಿ ಹಬ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಮೋಬಿ ಹಬ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ is just waiting for you for toss. तो 12 गेंदे 13 रन चाहिए विजय के लिए. और यहाँ पर देखिए चील जो कि पंछियाँ इस वक्त लहराते हुए मैदान के ऊपर, शाम का वक्त जो इन पक्षियाँ जो कि अपने घोंसले की ओर, अपने घर की ओर यहाँ पर पधारते हुए, और निस्संदेह इस बात का संकेत देते हुए कि दिन धीरे धीरे रात की ओर इस वक्त बढ़ रहा है. काफ़ी चील पंछियाँ यहाँ पर लहराते हुए मैदान के ऊपर, और इस शाम को और भी रंगीन यहाँ पर बनाते हुए फ्लडलाइट्स की रोशनी तले. और इस बीच नया ओवर प्रारंभ होता हुआ. गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. इस बीच नवाज के लिए यह गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर कर दिया. सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हुए पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता. 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 29 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 12 रन चाहिए, 11 गेंदें बाकी. और इस बीच डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त माही स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को इस मैच में वापसी करने के लिए. दाहिने हाथ राउंड द विकेट स्वीप किया, लेकिन ठीक तरह से नहीं. 1 रन उन्हें जरूर मिला. फॉरवर्ड शॉट लेग पर जब तक विकेट कीपर जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 30 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 30 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. गेंदबाज इस बीच तैयार, ये गेंद सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल. और इस बार मिसफील्ड, लेकिन बल्लेबाज को मौका नहीं था दूसरा रन यहाँ पर चुराने का. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 31 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड 10 रन मोर. नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 9 बॉल्स. अगली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार टॉप एज, मौका और आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया गया डीप स्क्वायर लेग पर. स्वीप करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए टॉप एज पर टकराई. और डीप स्क्वायर लेग पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने आखिरकार कोई गलती नहीं की. देखिए किस तरीके से हुआ था. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. हवे में उछली और आसान सा कैच डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर द्वारा लपक लिया गया. तो मुख्तार की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है. 9 रन उन्होंने बनाए, लेकिन एक अच्छा सपोर्टिंग का किरदार उन्होंने अदा किया नवाज का. और इस बीच आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ. असरार नए बल्लेबाज के रूप में. 8 गेंदें बाकी, रन से चाहिए इस वक्त 10. 10 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 8 बॉल्स. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. मुनीर गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए. यह गेंद इस बार गेंद को मोड़ना चाहा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद, लेकिन तब तक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर. 7 गेंदें बाकी और 9 रन चाहिए. 9 runs to get from 7 deliveries. इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज मुनीर गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए. नवाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. इस बार ड्राइव किया, कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में अपने पैर के जरिए गेंद को जब तक रोका जाता, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. तीसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा. और 2 रन इस बीच 2 रन में संतुष्ट दोनों बल्लेबाज. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इन 2 रनों के साथ 34 रनों पर. 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. 4th over has been came to an end. Last over remaining, 7 runs to get. 7 of 6 balls they have to score for victory.
रशीद गेंदबाजी शुरू करते हुए मैच निर्धारित ओवर यहां पर शुरू होता हुआ सामना करने के लिए तैयार इस बार असरार। नवाज जो कि एक बेहतर बल्लेबाजी यहां पर करते हुए नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद और 6 गेंदों में चाहिए 7 रन विजय के लिए। 6 for tie, 7 for win and the first ball of the last over of the innings is now coming up। और पहली गेंद इस वक्त रशीद असरार के लिए। रिवर्स शॉट, इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन बेहतर फील्डिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग। द बॉल स्ट्रेट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ फील्डर but he collected the ball cleanly and prevent the more possibility of any run। 5 balls, 6 runs and नवाज back on strike। इस वक्त नवाज सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, रनों की सख्त जरूरत इस वक्त टीम मैट्रिक्स को, जबकि डॉट गेंदे और विकेटों के सख्त दरकार माही स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को। और गेंदबाज रशीद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नवाज के लिए। यह गेंद हल्के से सेंसिबल, गेंद को खेल दिया इस वक्त मिड विकेट, फील्डर काफी पीछे, 1 रन मिलेगा। क्लीन कलेक्शन, थ्रो पहुंचा नॉन स्ट्राइक रन पर, लेकिन थ्रो थोड़ा सा वाइड और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहां पर अपनाई थी नवाज ने। गेंद को हल्के से पुश कर दिया था डीप मिड विकेट पर। देखिए किस तरीके से जब तक फील्डर दौड़ कर आकर गेंद को फील्ड करे, क्लीन पिकअप करने के बाद बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। 37, 4 runs to get and the ball is remaining is also 4। 4 गेंदे 4 रन। और इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद हल्के से स्टीयर किया, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। और बल्लेबाज नवाज की नजरें जो कि गेंद पर जम चुके हैं, और यहाँ पर किस तरीके की बल्लेबाजी अपनानी चाहिए इन हालातों में वो बेहतर जानते हैं। और इस बार 1 रन के साथ गेंद को हल्के से पुश करने के बाद स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं। 3 गेंदे 3 रन। अगली गेंद स्वीप करना चाहा, विकेट कीपर के पहुंच से बाहर, 1 रन का इजाफा। अब 2 गेंदे 2 रन, लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। 2 balls and 2 runs। और नवाज इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। एक बेहतरीन पारी इस वक्त खेलते हुए अपनी टीम के लिए नवाज शीट एंकर्स रोल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मुख्य सूत्रधार की भूमिका यहां पर अदा करते हुए। और अब विकेट कीपर खुद अपने आप को हटाकर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर उन्होंने खुद को तैनात किया है, जबकि शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर इस वक्त विकेट कीपर के तौर पर आ चुके हैं। विकेटों के पीछे इस वक्त तैयार। और रशीद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नवाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन मिला। दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े और आखिरकार यह विकेट यहां पर गिर चुका है। तो अंतिम गेंद बाकी, और खुशी की बात यह है कि टीम मैट्रिक्स के लिए नवाज इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं। और अंतिम गेंद पर देखना यह है कि वो अपने टीम की नैया को सही तट तक, सही मंजिल तक, सही किनारे तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। तो 1 गेंद 1 रन। व्हाट अ मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है फिलहाल वो नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद। सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त नवाज के लिए, और देखना यह है कि वो इस सराउंडिंग फील्डिंग के व्यू को किस तरह भेजते हैं। और मैच निर्धारित गेंद लेकर रशीद इस वक्त तैयार। 1 रन चाहिए टीम मैट्रिक्स को और माही स्ट्राइकर्स को चाहिए डॉट गेंद मैच को टाई में अंत करने के लिए। और लगभग सारे खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर मौजूद। और मैच निर्धारित गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। हियर वी गो, द लास्ट बॉल इज नाउ कमिंग अप। और इस बार बैक टू द बॉलर की दिशा में हल्के से पुश किया, और इसी के साथ आखिरकार नवाज अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी की मदद से अपनी टीम जो कि टीम मैट्रिक्स को यहां पर विजय दिलाने में सफल। पारी के अंतिम गेंद पर निस्संदेह बेहतरीन बल्लेबाजी अंडर प्रेशर नवाज ने दिखाई, और उनकी इस बेहतरीन बल्लेबाजी के बदौलत टीम मैट्रिक्स पारी के अंतिम गेंद पर, मैच के अंतिम गेंद पर विजय दर्ज कर चुका है 6 विकेटों से माही स्ट्राइकर्स के खिलाफ। और इस विजय के साथ अपने प्ले ऑफ पहुंचने के आशाओं को वो बरकरार जीवंत रख चुका है। तो एक बेहतरीन मैच समाप्त हुआ। अगला मैच नंबर 11 मैच शुरू होगा टीम मोबी हब और मैक्स चैलेंजर्स के बीच में, और वो मैच शुरू होगा चंद लम्हों बाद। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने हाजिर होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत यहां पर होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
So let's announce the name of the man of the match of the previous match. And man who is leading from the front came as opener, and they finished the match with a fantastic responsible knock. It's none other than Nawaz of Team Matrix, who judged as the man of the match. I request Nawaz, please go and collect your man of the match award from our chief guest in the main stage. Welcome back, and it's going to be our 11th match of DPL Season 3. Moby Hub captain won the toss. And elected to field first, so that Max Challengers, the opening batters, are walking towards the middle. I request each and every team, the fielding team, I kindly request you to make it past. Don't waste your time. Still, it's a long way to go for this tournament. Still one more match in the league stages. And afterwards, we are into the knockout stages. Playoff round. So Aziz to start here from the commentary box end. So both the teams are playing their last match of their league stages. And Max, with correction, team Moby Hub, they knows that how important game this is going to be for Moby Hub. They desperately wanted to win the match. And they're definitely going to try hard against team Max Challengers. First ball, right up over the wicket. It's going to be a wide. Aziz starts with a wide delivery outside the line of off stump too much. So Max Challengers, they got their first run in the form of extra. One without loss of any wicket. So under floodlight, absolutely this is going to be a fantastic, beautiful cricket ground. The UCG cricket ground, the absolutely good scenario. And one more extra, this time from the bye, wicketkeeper misses the ball completely from his hand. There are two on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. The power play is on. A different field set for two batters because it's a left and right combination. And cover point fielder coming inside the ring. There is a long off and one fielder at a deep square leg. Correction, yes, deep square leg, one at short fine leg. Mid wicket and mid on. Mid off, short cover point, backward point, short third man and short fine leg. Again, that ball is missing a line. And this is a perfect line for the right-hander batsman. But left-hand batsman is on strike, so that it's going to be a wide. So 3 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Aziz. Right arm over the wicket. Again, they wanted to play that one on the onside region. This time well with the reach of the batter. Just ball just passing around the legs of the batter. Quicker one there from Aziz. It's a perfect condition to bowl some quicker delivery in this under floodlight. We've all got line with the pace. It's very difficult for a batter to judge. And here is again bowler Aziz bowls. This time again went for the big swing of the bat. The man Mustaq. Leg by call by umpire. Mustaq is the one who played a very good innings in the previous match with some excellent hittings.
Again now bowler bowling away from us. Right arm over the wicket. Delhi was. Oh, one more huge wide. And they're going for the extra run. This is a really unnecessary and no excuse, isn't it? It's a big match for team Moby Hub. And you can't do that mistake of bowling extra deliveries, extra runs. Conceding means providing opportunity for the opposition team to settle down for a big total. 5 on the board, 6 on the board without loss of any wicket. This time hit that one. Ball is in the air, but ball will going to land it safely between the square leg and deep square leg. And they got a couple of runs and scored moves on to 7, 8 on the board. They went for a couple of runs and scored moves on to 8. And it's not a good attempt by the fielder. Maybe the bowler is frustrated because the deep square leg fielder is not really coming hard for that catch. Because ball is in there for a while and plenty of time for the fielder to run front and attempt for the catch. And without attempting, he's just waiting for one bounce. And batsman survives. And Mustaq once again is on strike. Aziz. Listen, Mustaq again looking for a big swing of the bat. There is a similarity when watching Mustaq is batting there in the middle, just like, of course, umpire, the one of the destructive left-hand batter, Arshad Bajal, is really same typical kind of technique of hitting the ball on the onside. Again, improvisation, but not more than a single. With that single, Skobana moves on to double figure 10 quickly. They are into the 10 now, double figure. First over completed, and Max Challengers defending champion, 10 without loss of any wicket. Ayub and Mustaq, they got a very good start from the bat. So second over going to start from the commentary box end. For the latecomers, you are watching match number 11 of this prestigious Dubai Market Premier League 2023, which is proudly organized by Dubai Market Friends, Mangalore, in this historical UCG cricket ground. And after that power play, we can see that so many bodies out there in the deep, and straight away I want to pick the fielders in the deep. One at deep square leg and one mid wicket and long on. The long off is there, one fielder has deep cover point. There is short third man, short extra cover. Off onside, short fine leg and short mid wicket. Oh, that ball just hitting the leg of the batter. They're going for the second and in comes a throw. Wow, fantastic work, but not good enough. Not good enough to make that run out. Again, frustration for the fielding team because 2 runs in the form of leg by. It's really not acceptable in this situation. The leg by 2 runs always frustrates the fielding team. 12 without loss of any wicket in the over number second is in progress. Round the wicket. Went for the reverse sweep. And I think gone. Yes, ball misses everything and not misses everything, only misses the bat. Then ball hits the stumps. Have a look at that one in the replay. Oh, that ball absolutely right on the middle stump. And batter wanted to go for the reverse stroke. Misses the line completely. Hits the stump. It's 12 for the loss of 1 wicket. Ayub departs and replacing him is jersey number 29. Akram is a new batter in, and name itself suggests is a very, very explosive batter who loves to hit the ball, and especially is very strong on the onside region, and that's why there a lot of protection is given for him in the onside region. Fine leg inside the ring, but deep square leg is there, mid wicket and long on is there. Right arm down the wicket bounce. This time edging it down quite deliberately by Akram. He's a busy customer, quickly picked up a single there. One more addition to total addition of that single score, but now moves on to 13 for the loss of 1 wicket.
The over number second is in progress. Nawaz Junior now arranging the field. Left and right combination. Need to change the line. Need to change the field set. I request fielding team to please make it fast. We are already having a shortage of time. I request you to make it fast. It's 13 for the loss of 1 wicket. Over number second is in progress. Nawaz Junior round the wicket to Mustaq. This time Mustaq going for the big drive, lofted drive, but not controlled it. Mistimed stroke and ended with the catch down at deep long on. That's the end of Mustaq's. The danger man departs. Have a look at that one in replay. Little bit extra bounce while he was going for the drive, but he went with the stroke. Not really timed that one properly. Mistimed the lofted drive. And long on fielder making no mistake at all. Big wicket is back into pavilion. It's 13 for the loss of 2 wicket in the over number second is in progress. The new batter in is the previous match hero, Shaif. He got a man of the match for his outstanding innings under pressure. Now again, he need to perform from his bat. His team wanted one good innings again in this last match of the league, of their league stage matches in fact. Right arm round the wicket. Starts with the reverse stroke, but ball misses everything. Misses his bat and then hitting his leg. One more single in the form of leg by 14 for the loss of 2 wicket. In the over number second is in progress. Akram is on strike. Ooh, that was very close to the leg stump. Chance of run out. They managed to complete that quick single and risky one. Leg by call by umpire. Once again that ball which is targeting the leg stump. Slight a bit of that ball misses the stumps. It's very close to the leg stump. 2 overs gone. And it's 15 for the loss of 2 wicket. Team Max Challengers. For the next match, the last match of the league stages, Sporting World takes on Millennium. So I request both the teams, players please get ready. And request 2 teams captain please get ready here for the tossing ceremony. League ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೀಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಮಿಲೇನಿಯಂ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ. This time first delivered outside the line of off-stamp. Batsman going for the drive, misses the line. Come on, my goodness. Something is happening here with the wicketkeeper. We can see that he's just waiting that when the batsman will go into lost the balance so that I can make the stump out. But at last batsman managed to hold his nerve. Have a look at that one. And keeping his back leg still inside the crease. And so slight a bit of fun which has happened in the middle, but no damage done. In fact, it's 15 for the loss of 2 wicket. Nawaz bowls. Again, they're going for the single in the form of leg by. With the addition of that leg by scored Namuzan to 16 for the loss of 2 wicket. In the over number 3 is in progress.
Nawaz Senior. Right arm over the wicket to Shahif. Again that ball almost target in mid-lane leg stump. Frustration for the bowler. He's got a bat onto that last moment. Shahif. It's 17 for the loss of 2 wicket in the over. Number 3 is in progress. Nawaz. To Akram. Again. This time chance of run out. And Shahif need to sacrifice his wicket because Nawaz is not responding. The reason that he doesn't know where the ball is. But Saif knows that ball is in there. Can get a single for that. Have a look at it on a replay. Going for across the line. Going for the stroke across the line. Ball is in there for a while. Wicketkeeper catches it. And quickly he knows that it's an easy opportunity for run out in the non-strikers. And no response coming from Akram. Now Saif, unfortunately, the hero of the previous match, is back into pavilion. Irfan is a new batter. Again, punishable from umpire, not from the batter. White call by umpire. One more addition. The addition of that single scoop at Namuzan to 18 for the loss of 3 wickets. This time top edge, but certainly in under floodlight, ball will not going to travel. And fielder in the mid-wicket region making no mistake at all. Aziz, the fielder in the mid-wicket, completes a catch. The wicket number 4, which is back into pavilion. The wickets are tumbling here of team Max Challengers. They are deep in trouble. 18 for the loss of 4 wicket in the over. Number 3 is in progress. Looking for the big swing of the bat and not really got that one from the middle of the bat. Top edge. And the ball landed safely to the hands of the fielder. Rabiz is the new batter in. Facing Nawaz, opportunity of run out. Will it go into be one more wicket? No. Leg by call by umpire. So good over. One more good over in favor of team Moby Hub. Very good toss to win, and they put some pressure onto the batters of their team Max Challengers. 19 for the loss of 4 wicket after completion of over number 3. The last 2 overs remaining in their innings, and Faiz brought into attack. Ramiz is on strike. Starts with a wide. One more single. 20. After they control the situation very well, and Moby Hub have to restrict the extras. This is a line. This is a line you need to ball. So good in that off cutter. Again, one more fantastic delivery indeed. Chance of run out. Wicket keeper fails to collect the ball. By call by umpire. Again, outside the line of leg stump, going to be a white. One more addition. So Juni is the batter. He got an announcement of ₹1,000 for 6 by Farooq of My Mobiles. Driven, but Juni knows that it's not a time to hit the 6, but just need to consolidate to get some partnership going here for team Max Challengers. One more single, 23 for the loss of 4 wicket. So Farooq of My Challengers announcing that ₹1,000. Again, one more single. Runs are coming in the form of singles.
And after that, they lost a huge wicket of Mustaq Akram. Everything we can see that the runs are slowing down. This time half-hearted chip, but it was in the gap so that they completed a single here. One more single. With that single, Skobana moves on to 25 for the loss of 4 wicket in the over number 4 is in progress. 5 balls. This time going for the drive. Not more than a single. Fives will not going to bother about that singles. You know exactly, need to restrict the boundaries. And so far it's a tidy over. 26 for the loss of 4 wicket. Over number 4 completed. Last over remaining in the innings of team Max Challengers. It's a good performance so far. From Moby Hub, last over remaining, last opportunity. I request the fielding team to make it fast. The time is exactly 5:07. Altaf got a ball in his hand to bowl the last over. And Junni, it's not Junni, driven firmly. Rami is driven that one down to deep long on, and wide throw coming from the fielder, and couple of runs taken there. And with that couple of runs, Kobana moves on to 28. 28 for the loss of 4 wicket in over number 5 in progress. This time, wicket keeper fails to collect the ball, chance of run out, non-strikers, and slight a bit of collision between the two batters. Ended up with the run out in the non-strikers end. This is a look at that ball, full toss, slow full toss, and batsman thought it might be a easy one to hit the ball, but he missed it completely. Then run out taken place. 28 for the loss of 5 wicket. One more single, extras coming here, one more leg by. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ದುಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದರ ರೈಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇರ್ಫಾನ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಇರ್ಫಾನ್, ದ ರೈಟರ್ ಆಫ್ ದುಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ದುಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023. Thank you. So time which is consumed by the fielding team, which is exceeds, so that umpire called the one fielder need to bring inside the ring. They're going for the second. In comes the throw, but the good work by the wicketkeeper beyond the stump, but not good enough, I think so, from wicketkeeper Aziz. But this is a clever thinking by Aziz in that occasion. Quickly makes that turn. I will look at that one. The fielder catches the ball, fields the ball, returns the ball, and batsman just looks like warming up in the middle, and good work by the wicketkeeper behind the stump, but umpire saw it's not good enough. So a couple of runs, 31 for the loss of 5 wicket in the over number last is in progress. Altaf continues, 31 on the board. Coming down the track using his feet. Misfielded! What really going on here? This is not a really a good thing, good piece of fielding there by the fielder in this situation. It's absolutely a sloppy piece of fielding there by the fielder. Have a look at that one. Driven firmly, of course, that was rocketing towards the pins. And the fielder in the mid long on, not really able to bend down in the right time. And ball, yes, he missed it completely, that ball. Now, it's really going to be very interesting. The batsman going for the single, they coming back for the second. In comes the throw from the deep,
but umpire will not going to give that run because it's a deliberate padding. And last delivery, no run. So that's it, 35 for the loss of 5 wicket. And 36, which is the target. And 36, which is the target for team Moby Hub to win this match. It's very important for Moby Hub to win the match, even for Max Challengers to get the place in the qualifier of the playoff round of this prestigious DPL season 3 in fact, and it's going to be more interesting when Moby Hub will go into chase these runs. They will take a short break here, and after a short break my friend Gopi will going to take over the microphone. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर तो इस तरह से 36 रनों का लक्ष्य निर्धारित 5 ओवर में मोबी हब के लिए रखा है मैक्स चैलेंजर्स ने, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होते हुए एग्जैक्टली 7.20 द प्रेजेंट रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम एट दिस सिचुएशन। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त मुश्ताक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, नवाज सामना करने के लिए तैयार, फैज नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और ये गेंद इस बार उछाला लंगोन की दिशा में, कोई फील्डर वहां पर नहीं, और लंगोन सीमा रेखा के बाहर गेंद हो चुकी है 4 रनों के लिए। एब्सोल्युटली पॉजिटिव स्टार्ट फ्रॉम नवाज। और नवाज का जहां तक सवाल है, पिछले मैच में भी बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था, और यहां पर पहली गेंद को डिस्पैच करते हुए लंगोन सीमा रेखा से बाहर भेज दिया, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए चौके के लिए। और इस चौके के साथ नवाज और टीम का खाता खुल चुका है मोबी हब का। 4 रन बिना किसी नुकसान के। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए मुश्ताक का गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज नवाज के लिए अगली गेंद लेकर, ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट टू फाइन लेग पर, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 5 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर सिर्फ 2 गेंदें अब तक फेंके जा चुके हैं। और
5 रन बन चुके हैं और इस बीच सामना करने के लिए तैयार फैज मुश्ताक अपनी ओर के अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेला इस वक्त कवर पॉइंट की दिशा में। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड की जा चुकी है। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल एंड द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 8 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। 8 रन बिना किसी नुकसान के जोड़ चुका है इस वक्त टीम मोबी हब। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर 3 गेंदे यहाँ पर फेंके जा चुके हैं और मुश्ताक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद सही गेंद हालांकि इनसाइड आउट क्रिकेट खेलना चाहा था अंतिम क्षण में गेंद को छोड़ दिया। अंतिम क्षण में देखते हुए कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए यह गेंद बल्ले का भीतरी किनारा इनसाइड एज ऑन दैट गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 9 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस और केवल 2 मात्र फील्डर इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप किया नॉट क्वाइट मिडलिंग इट इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया गया और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू डबल फिगर्स नाउ दैट मींस ऑन 10 without loss in the first over of their innings has been came straight and Moby have made a pretty good start chasing the victory target of 36 in 5 overs. They are now 10 without loss after first over, 26 to get in remaining 4 overs. और जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है दुबई मार्केट प्रीमियर लीग 2023 ये मेगा श्रृंखला DPL सीजन 3 2023 एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए अंडर फ्लड लाइट्स मैच नंबर 11 इस श्रृंखला का खेला जाता हुआ और एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर किया जा रहा है किंग स्पोर्ट्स द्वारा। जनाब बदरुद्दीन इनके सारथ्य में किंग स्पोर्ट्स मेकिंग एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ मिस्टर बदरुद्दीन और जहाँ तक सवाल है किंग स्पोर्ट्स का तो निस्संदेह एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट के लिए ये चैनल जो कि जानी जाती है और यहाँ पर क्रिकेट का हर पहलू हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस चैनल के जरिए यूट्यूब पर। इस बीच रिवर्स शॉट गेंद को खेला और गेंद पहुंची गली की दिशा में लेग बाय का इशारा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और इस बीच रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 11 रनों के ऊपर। तो अंपायर विकेटों को सही करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। अगला मैच जो कि लीग का अंतिम दौर का मैच खेला जाएगा मिलेनियम और स्पोर्ट्स वर्ल्ड के बीच। द लास्ट match of the league stage will be played right after this match between Sports World versus Millennium. And because of that, I request captain of these two teams to please report to the stage immediately for the toss procedure. और इस बीच अगली गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर खूबसूरती के साथ। गेंद इस वक्त सीमा रेखा के अंदर जब तक फील्ड बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 3 रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 3 रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं यशस्वी तम्मा। और इस बीच 3 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और इस बीच दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर एक बेहतर प्रगति यहाँ पर करता हुआ टीम मोबी हब और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त रमीश गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद फ्लाइट एंड ऑफ द टोस गेंद को खेल दिया इस वक्त मिड विकेट पर फील्डर काफी पीछे। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। 2 रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े। सेंसिबल एब्सोल्युटली सेंसिबल ऑफ द टोस हल्के से गेंद को इस वक्त टर्न कर दिया था मोड़ दिया था। ये भागते हुए के फील्डर जो है डीप मिड विकेट पर काफी पीछे है और तेजी के साथ 2 रन यहाँ पर चुरा चुके हैं। तो ऐसा क्रिकेट है यहाँ पर अपनाना
चाहिए बल्लेबाजों को अगर उन्हें रन्स बटोरने हैं। तो सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर इस गेंद पर बल्लेबाज ने अपनाई और 2 रन इस बेहतर क्रिकेट की बदौलत वो प्राप्त कर चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रन। कुल मिलाकर बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। रमीज फ्लाइटेड, एक बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, लेकिन विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाया। बाई के रूप में 1 रन मिला। 18 रन, 18 विदाउट लॉस। This is now absolutely a good going on here for Moby Hub. 18 runs scored in the first 2 overs. 18 more to get in remaining 3 overs. That means 18 deliveries. And the required run rate is now coming down to exactly 6 runs per over. King Sports Channel जो कि एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त करता है। और जहाँ तक किंग्स को स्पोर्ट्स के स्टाफ पैनल का सवाल है तो मालिक जो है नौफल किंग स्पोर्ट्स के, जो कि ऑपरेटर बेहतरीन ऑपरेटिंग इस वक्त करते हुए एजाज मानी, जबकि बेहतरीन कैमरामैन बेहतरीन तरीके से अपना कैमरा वर्क करते हुए अजीम, और एक और कैमरामैन तमीम चम्मू, जबकि स्कोरर के तौर पर बेहतरीन स्कोरिंग का कार्यभार यहाँ पर तकनीकी तौर पर टेक्निकली निभाते हुए इरफान। तो कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा बेहतरीन स्टाफ पैनल किंग स्पोर्ट्स का। और जनाब बदरुद्दीन जो कि यहाँ पर एक कैप्टन की नाती, एक नायक की भांति यहाँ पर किंग स्पोर्ट्स के स्टाफ को इस वक्त मार्गदर्शन यहाँ पर देते हुए, और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर करता हुआ किंग स्पोर्ट्स, जो कि आज के दिनों में काफ़ी नामी यूट्यूब चैनल जो कि बन चुका है। तो यहाँ पर जो कोई भी यूट्यूब में मुआयना कर रहे हो इस श्रृंखला का, तो अगले मैच से लिंक जो कि बदल दिया जाएगा, कृपया उस नए लिंक का इंतजार करें। सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ जो यूट्यूब पर इस मैच का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, कृपया ध्यान दें, अगले मैच से लिंक जो कि बदल दिया जाएगा इस श्रृंखला का, इस मैच का, तो नए लिंक का इंतजार करें कृपया। इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंचे एक्स्ट्रा कवर पर, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइक रन पर खतरा, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा रेस्पॉन्स इस वक्त दूसरे छोड़ के बल्लेबाज से मिलता हुआ। वो जानते थे डेंजर एंड पर वो दौड़ रहे हैं, लेकिन जब तक थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज वहां पर पहुंच चुके थे, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 20 रनों पर बिना किसी नुकसान के। नवाज और फैज पारी की भागदौड़ को संभाले हुए एक बेहतरीन आरंभिक शुरुआत दे चुके हैं अब तक। सिर्फ 16 रन अपने विजय से दूर, जबकि गेंदें बाकी हैं 17, और गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अल्फाज, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार फैज सामना करते हुए। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अल्फाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, खूबसूरती के साथ गेंद को स्कूप किया, इस वक्त एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती है, फील्डर वहां पर मौजूद, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट। हालांकि क्लीन कलेक्शन जरूर था एक्स्ट्रा कवर पर स्वीपर द्वारा, लेकिन जब तक वो फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज ने तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा दूसरा रन प्राप्त कर लिया। ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे, और आखिरकार दोनों बल्लेबाजों को कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई दूसरा रन पूर्ण करने में। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर बिना किसी नुकसान के। जबकि तीसरा ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और सेंसिबल क्रिकेट क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज अपनाते हुए धीरे धीरे अपनी टीम को मंजिल की ओर अग्रसर यहाँ पर करते हुए। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया, एक बार फिर से शॉर्ट कवर पर, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद, कवर पॉइंट पर एकमात्र रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 23 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 23 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। ये दोनों बल्लेबाज जान चुके हैं सेंसिबल क्रिकेट अपना लेते हैं, स्ट्राइक रोटेट हर गेंद पर करने से फील्डरों पर दबाव पड़ता है और फील्डिंग ऑटोमेटिकली स्पॉइल हो जाती है। तो यहाँ पर उसी तरीके की रणनीति यहाँ पर वो अपनाते हुए, और इस बीच ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, फिर से 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा। खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त स्वीप कर दिया था, थोड़े से स्टंप्स को कवर करने के बाद घुटनों के बल बैठते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और 2 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल। 25 विदाउट लॉस। सो फैंटास्टिक टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर इन द नेम ऑफ दुबई मार्केट प्रीमियर लीग 2023 DPL सीजन 3 2023, which proudly organized by Dubai Market Friends, Market Road, Mangalore,
तो यहाँ पर दूसरा अंतिम लीग का मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, नॉट क्वाइट मिडल गेट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, विकेट कीपर आफ्टर इट, इस बार निशाना और ओवर थ्रो। ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन प्राप्त कर चुके। जैसे ही निशाने पर गेंद लगकर सिली मिड ऑन की ओर गई, कोई बैकअप वहां पर नहीं था और इसे देखते हुए बल्लेबाज ने दूसरा रन तेजी के साथ चुरा लिया। 27, सिर्फ 9 रन और चाहिए विजय के लिए और गेंदे इस वक्त बाकी हैं 13 और समीकरण बिल्कुल आसान इस वक्त दिखाई देता है। और जहां तक सवाल है इस वक्त मैक्स चैलेंजर्स के गेंदबाजों का, तो इस वक्त उन्हें कमबैक करना है, तो निस्संदेह एक ऐसी गेंदबाजी करनी होगी जो बल्लेबाजों पर भारी पड़ सके। और नवाज और फैज कुछ हद तक थके मांदे नजर आते हुए दोनों घुटनों के बल मैदान पर बैठे हुए हैं। अब स्ट्राइक रन के बल्लेबाज उठकर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है और अल्फाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं। 28 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। मोबी हब, टीम मोबी हब इन फैक्ट लुकिंग इन अ कमांडिंग सिचुएशन। तो अगला मैच लीग स्टेज का अंतिम मैच खेला जाएगा स्पोर्ट्स वर्ल्ड और मिलेनियम के बीच में और इस मैच में ताजा समाचार यह है कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और यहां पर 8 रन चाहिए, 12 गेंदें बाकी, 8 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 12 balls and the things getting much easier now for team Mobi Hub. तो यहां पर गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज नया ओवर प्रारंभ होता हुआ कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से अंपायर इस वक्त कुछ कहते हुए मैक्स चैलेंजर के खिलाड़ी से इस श्रृंखला के नियम के बारे में, खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है यहां पर और यहां पर गेंदबाज को बदल दिया गया है और शायद नहीं, वही गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, 8 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 12 balls और पहली गेंद लेकर गेंदबाज सैफ इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और ओवर की पहली गेंद लेकर सैफ इस वक्त तैयार, flighted swings and this time he's got the distance. Yes it does. It's a biggie. छक्के के लिए गेंद को उछाल दिया शफल होते हुए, एक टिप्पा खाने के बाद गेंद आई थी, बल्लेबाज के पास काफी वक्त था कि खुलकर स्ट्रोक्स खेल सके। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला, लॉन्ग ऑफ पर, लेग स्टंप पर गेंद थी और गेंद को खूबसूरती के साथ डिस्पैच कर दिया इस वक्त थोड़ी सी सफल होते हुए छक्के के लिए, बेहतरीन स्ट्रोक। इस बार गेंद को खेलना चाहा और गेंद इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज और दूसरा रन यहां पर नहीं मिलेगा। जोखिम भरा रन चुराने के प्रयास में अपना विकेट खो बैठे, लेकिन यहां पर रनों की बराबरी हो चुकी है। द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। तो यहां पर लिंक बदल दिया जा रहा है, कृपया जो कोई भी दर्शक YouTube पर इस मैच का मुआयना कर रहे हो कृपया ध्यान दें, यहां पर लिंक जो कि बदल दिया जा रहा है। तो यहां पर सिर्फ 1 रन अब चाहिए विजय के लिए और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ, अजीज का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में अब बाकी रह गए, ओनली फॉर्मेलिटीज इज नाउ रिमेनिंग इन दिस मैच। सो अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, 10 गेंदें 1 रन चाहिए विजय के लिए। ये गेंद बिल्कुल जमीन के सहारे रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। तो 1 रन चाहिए और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि बल्लेबाज इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, जबकि यहां पर काफी गेंदें बाकी पड़े हुए हैं और 2 विकेटें फालतू में वो गंवा चुके हैं अंतिम 2 गेंद पर और 9 गेंदें बाकी है। अब 1 रन चाहिए और यहां पर इंतजार है इस वक्त नए बल्लेबाज का। तो ऐसा कहना पड़ेगा टीम मोबी हब अपने
अपने विजय के द्वार पर आकर इस वक्त रुक चुका है। और यहां पर नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ नंबर 4 बल्लेबाज नवाज का आगमन यहां पर हो चुका है और नवाज का विकेट गिर चुका है। 20 रन बनाए नवाज ने, जबकि फैज ने अच्छा साथी का किरदार उन्होंने अदा किया, 10 रन उन्होंने बनाए। और इन दोनों आरंभकार के बेहतरीन प्रदर्शन की ओर से विजय के द्वार पर इस वक्त आकर खड़ा हो चुका है टीम मोबी अब। और इस बार गेंद को पुल किया मिड विकेट पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ यहां पर मैच का समापन कर चुके हैं बल्लेबाज और टीम मोबी हब ऐसा कहना पड़ेगा 8 गेंदें बाकी रहते हुए 8 विकेटों से इस मैच को जीत चुका है मैक्स चैलेंजर्स के खिलाफ और इस विजय के साथ अपने प्लेऑफ पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रख चुका है। तो बेहतरीन मैच यहां पर समाप्त हो चुका है और अब मैच नंबर 12 यानी लीग स्टेज का अंतिम मैच, लीग स्टेज का आखिरी मैच खेला जाएगा स्पोर्ट्स वर्ल्ड और मिलेनियम थंडर्स के बीच और वो मैच शुरू होगा चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ जब अगले मैच की शुरुआत यहां पर होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू। Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates.